Hello everyone, welcome to this video. So in this video we are going to do Python, and we will be covering the basics of Python. And what is going to be different in this video? In this video we are going to use AI to learn Python, okay? Because earlier coding meant memorizing syntax and writing long code manually and spending a lot of time in debugging. But today things have changed, right? Now we can use powerful tools like Gemini, ChatGPT, Copilot, and which can do the code generation for us. So the important question is, if AI can write code, what do we actually need to learn? Okay, do we still need to memorize everything? The answer is not exactly. Today coding is less about the typing syntax and it's more about understanding and thinking. Okay, so in this video our goal is to not just learn the Python syntax, but to learn how to understand the AI generated code. We'll not be doing the memorizing part, but we should know, if some code is written, we should know what line means what. Okay, we should be able to understand the logic of that code. Okay, that is the main goal, right? So okay, in the AI world, right, today coding is knowing more about the programming logic, right? How programs are working, the flow. Now we should be having problem solving skills, right? Like if it's mentioned that we have to calculate, write a program to calculate, say suppose, average of numbers, right? So you should be knowing how average is calculated, right? So that kind of skill you must be having to write any code or to understand any code, right? Then we have to understand the code structure, right? We must be able to read the code, and we must be able to understand the data structures that are present inside the code and when to use what. And we must be knowing how to modify the code, how to debug the code. Most importantly, we must be having the skill to write good prompts, knowing AI, knowing how to guide the AI, right? We must also be having a good understanding of the libraries and tools. Okay, and we need to develop a whole system level thinking to connect each of the components, right? And then understanding basics of at least one language is must, right? If you want to start your programming journey, you should have basics of at least one language, right? Now why we are going with Python? Because Python is the most widely used language in AI, machine learning and deep learning, right? So in this video we are going to cover Python basics, and these are the topics that we are going to be covering: variables, data types, comments, print function, taking input from user, Boolean logic, operators, control flow, loops, data structures, functions, string operations, list operations, indexing, slicing, list comprehension, typecasting, range function, importing libraries, error handling, and basic file handling. So I'll make a complete one video for all these topics, and last also we'll do some projects. Okay, because we whatever we are learning, we'll just see ki, are we going whatever we have learned, that is helpful for us or not. So we'll use AI to generate some small Python projects, and then we'll read the generated code together. Okay, understand how it works. So we'll not be writing the code. Okay, we'll just be developing the understanding in this video. Okay, and that is the real skill today that matters, right? So at the end of this video, you will understand basic Python structure. You will understand how AI generated code works. You will feel comfortable reading Python code. Okay, and what we'll be doing, we will not be doing any manual installation. We'll be using Google Colab. Okay, so you don't need to install anything, and we'll use Gemini to generate code examples. Okay, now I'll be speaking both in English and Hindi. I'm comfortable in English, you can say. So it's not a complete English oriented video. Somewhere in between, I'll also speak in Hindi. Okay, so beech beech mein Hindi, eventually it will come. And uh, if you don't want to see the entire video, if you want to go to some specific topics, तो आप skip भी कर सकते हो कोई part. Okay, and then you can directly go to some topics. I'll try if I can add the timelines in the video description. But okay, let's start.
Okay, you can search Google Colab, right? And Google Colab में if you open, you'll have something like this interface. Then you will click New Notebook and Drive. If you click New Notebook and Drive, you'll get this. Okay, so this is where we'll be doing all the learning. And okay, यहाँ पे चलो अब हम फाइल का नाम दे देते हैं. Let's begin. Python basics. ठीक है. And let's write a prompt to Gemini. Okay, I want to learn Python basics, one topic at a time. Okay, for each topic please explain me the theory, syntax, and give me examples that are very important, right? Examples. And let's begin with our first topic, which is variables, right? Which is variable. Let's begin with variables. Okay, I have given the prompt to Gemini. Let's see हमें क्या आउटपुट मिलता है. जो आउटपुट हमें मिल रहा है हम उसी से पढ़ेंगे. ओके, let's read this. Variables in Python. Okay, so what is a variable? Variable is a name storage location that holds data. ठीक है, variable is a storage location जो हमारा जो डेटा है उसको होल्ड करता है, राइट? इन पाइथन वेरिएबल्स आर यूज्ड टू स्टोर इन्फॉर्मेशन, ओके, टू बी रेफरेंस्ड एंड मैनिपुलेटेड इन अ कंप्यूटर प्रोग्राम. दे एक्ट एज अ प्लेस होल्डर्स फॉर वैल्यू. सो दिस इज वेरी सिंपल. ठीक है, विल नॉट गो इन टू मच डेप्थ. लेट्स सी द सिंटैक्स. सिंटैक्स क्या? विल जस्ट राइट द वेरिएबल नेम एंड देन इक्वल टू वैल्यू. Okay, so there are some rules for writing the variable name. Variable name must start with a letter, underscore. They cannot start with a number. They can only contain alphanumeric characters. Okay, वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव. ओके, अगर देर इज अ सेम नेम बट कोई कैपिटल में लिखा है, कोई स्मॉल में लिखा है, सो दिस विल बी ऑल काउंटेड एज डिफरेंट वेरिएबल्स. सो दिस रूल्स माइट चेंज ना डिपेंडिंग अपॉन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. फॉर पाइथन दीज आर द रूल्स. फॉर अनदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वन और मोर रूल्स कैन चेंज. ओके, सो यू शुड नो द बेसिक व्हाट आर वेरिएबल्स. जो वेरिएबल है वो सब लैंग्वेज में सेम ही रहेगा. वेरिएबल विल मीन द सेम थिंग बट द रूल्स और द सिंटैक्स माइट चेंज डिपेंडिंग अपॉन द लैंग्वेज. ओके, सो इसमें हमारा जो कोर मतलब इस वाले वीडियो में व्हाट विल डू, आपको जो कोर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है ना, वो आपको ये कॉन्सेप्ट्स की करनी है. व्हाट इज वेरिएबल. यू डोंट नीड टू गो इनटू द रूल्स एंड ऑल दैट फॉर दिस. ओके, जनरल रूल्स थोड़े बहुत पता हैं तो ठीक है, बट डोंट गो, इसके लिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं. सो व्हाट आर वेरिएबल्स? वेरिएबल्स सिंपली दे आर द लोकेशंस वेयर वी स्टोर आर डेटा, राइट? सो बेस्ट प्रैक्टिस इज टू ऑलवेज यूज अ डिस्क्रिप्टिव नेम. हम वो जो वेरिएबल जिस पर्पज के लिए यूज कर रहे हैं ऑलवेज ट्राई टू गिव दैट नेम. इफ वी आर वांट टू स्टोर यूजर नेम, सो राइट द वेरिएबल नेम एज यूजर अंडरस्कोर नेम. इफ यू वांट टू स्टोर प्राइस, टोटल प्राइस, गिव द नेम एज टोटल प्राइस. सो एटलीस्ट विल नो कि हम ये जो वेरिएबल है ये टोटल प्राइस होल्ड कर रहा है किसी चीज का, ये जो वेरिएबल है ये यूजर नेम होल्ड कर रहा है, राइट? सो दैट नीड्स टू बी डिस्क्रिप्टिव. ओके, नाउ it's saying also follow snake case, lowercase separated by underscore for variable name. So that's a good practice to write in this manner. And if we are appending different words underscore देके तो इसको snake case बोलते हैं. एक camel case भी होता है. अगर आप ये underscore हटा के एक जो first letter है इसका capital कर दोगे, that's called camel case. तो different तरीके भी होते हैं लिखने का. So it's a good practice. It's saying to write a snake case. Okay. सो यहाँ पे सी दे आर डिफरेंट एग्जाम्पल्स है, जैसे एज इक्वल टू 30, सो इट्स स्टोरिंग अ नंबर इंटीजर वैल्यू, राइट? असाइनिंग अ स्ट्रिंग वैल्यू, सो दिस इज अ स्ट्रिंग. एनीथिंग रिटन इन डबल कोट्स इज अ स्ट्रिंग, सो वी आर असाइनिंग दैट टू दिस, टू द नेम इज द वेरिएबल. दिस इज अ फ्लोट वैल्यू, डेसिमल वैल्यू इज कॉल्ड फ्लोट वैल्यू. ओके, देन बुलियन वैल्यू, ट्रू और फॉल्स इज अ बुलियन वैल्यू, इट्स असाइनिंग हियर. देन रीअसाइनिंग अ वेरिएबल, ओके, चेंजिंग इट्स वैल्यू एंड पोटेंशियली इट्स टाइप. सो पहले हम लोग ने स्कोर में
100 रखा था, देन व्हाट वी डिड, वी चेंज दिस टू एक्सीलेंट. तो पहले हमने इसमें नंबर स्टोर किया था 100, नाउ वी स्टोर्ड एक्सीलेंट इन दिस कोड. सो वी कैन डू दिस, वी कैन चेंज द डेटा टाइप इन द वेरिएबल नेम, राइट. यू कैन असाइन मल्टीपल वेरिएबल्स इन वन लाइन. सो मल्टीपल हम ऐसे असाइन कर सकते हैं एक लाइन में. इंस्टेड ऑफ राइटिंग x इक्वल टू 10, y इक्वल टू 20 एंड z इक्वल टू 13 डिफरेंट लाइन, एक ही लाइन में कॉमा देके लिख सकते हैं, राइट. एंड देन असाइनिंग द सेम वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल्स ऑल्सो पॉसिबल. अगर हम इसको ऐसे लिख रहे हैं abc इक्वल टू हेलो, मतलब कि ये हेलो तीनों वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा एक साथ. ओके, सो वी कैन एक्सेप्ट दिस एंड रन. इसका एक बार जल्दी से आउटपुट देख लेते हैं एंड विल प्रोसीड अहेड. सो दिस इज वेरी प्रिटी, दिस इज क्वाइट सिंपल, राइट. This might take few seconds. ओके, सो ये जस्ट हमें आउटपुट दे दिया. सी यहाँ पे ए बी सी इक्वल टू हेलो, सो ए हेलो, बी हेलो, सी हेलो. अभी ये प्रिंट फंक्शन के मतलब सिंटैक्स को मत देखो, ये अब आगे देख लेंगे. जस्ट फोकस ऑन द वेरिएबल्स ना, इसमें जस्ट फोकस ऑन द वेरिएबल्स. यहाँ पे x 10, y 10 और z 30 अलग अलग असाइन हो गया, राइट. ठीक है, नाउ लेट्स प्रोसीड टू डेटा टाइप्स. ओके, सो व्हाट इज द नेक्स्ट पाइथन टॉपिक आई शुड लर्न? Next topic, data types. डेटा टाइप्स बेसिकली क्या है, जो हमने स्टोर किया ना, सो दीज आर द वैल्यूज, मतलब ये जो हम वैल्यू रख रहे हैं वो किस टाइप का वैल्यू है. सो 30 इज एन इंटीजर वैल्यू. किसी को भी हम डबल कोट्स में रख रहे हैं, सो दैट इज अ स्ट्रिंग वैल्यू. कोई डेसिमल में तो दैट इज अ फ्लोट वैल्यू. ट्रू और फॉल्स इज अ बूलियन वैल्यू. सो डेटा टाइप टेल्स अबाउट द टाइप वैल्यू. हम जो वैल्यू रखे उसका क्या डेटा टाइप है. तो एवरी वैल्यू इन पाइथन एज अ डेटा टाइप. सो डेटा टाइप क्लासिफाइज द काइंड्स ऑफ वैल्यू दैट अ वेरिएबल कैन होल्ड and operations that can be performed on them, right. So kind of value जो वो variable hold कर सकता है. So understanding data type is fundamental to writing effective and error free Python code. Okay, so numeric types जो हैं वो integer होते हैं, normal 1 2 3 4 that is integer. Floating point numbers float, complex numbers can be complex. So 3 numeric types. Sequence type we have string is a kind of a sequence. ठीक है, double quotes. Then we have a list type, tuple type and range. So list, tuple, range इसको थोड़ा डिटेल में आगे पढ़ेंगे. As of now these are what, ये आपका sequence of numbers है, right. So it's a list of numbers, list of different numbers. Then mapping type is dictionary. Dictionary is like a key value pair. Okay, then we have set is something also एक sequence kind of a type होता है, but it contains unique numbers. So ये list, tuple, range, dictionary, set ये सब हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे. just इसको अभी आप जान लो कि these are the data types. And then boolean type, true or false. And then none type. None represents the absence of a value, means there is no value, right. सो इसका एग्जांपल्स देख लेते हैं. जैसे 42 हो गया, -100 हो गया इंटीजर, फ्लोटिंग 3.14. ओके, देन स्ट्रिंग हो गया, डबल कोट्स में वॉट एवर वी राइट इन डबल कोट्स और सिंगल कोट्स दैट इज अ स्ट्रिंग. ओके, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स एनक्लोज्ड इन सिंगल कोट और डबल कोट. देन बूलियन रिप्रेजेंट्स ट्रू और फॉल्स वैल्यू. दिस आर यूज्ड इन लॉजिकल ऑपरेशंस. ओके, लिस्ट है आपका, दिस आर ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ आइटम्स. म्यूटेबल मीन्स चेंजेबल सीक्वेंस ऑफ आइटम्स. ठीक है, एंड दीज आर एनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट्स एंड दीज आर सेपरेटेड बाय कॉमर्स. सो इफ यू आर राइटिंग समथिंग लाइक दिस, सो दिस इज लिस्ट. देन टपल, डिक्शनरी, सेट, आई थिंक इसको भी छोड़ते हैं, इसको आगे देखेंगे. ठीक है, लेट्स नॉट सी दिस हियर. एंड नन इज अ स्पेशल डेटा टाइप दैट रिप्रेजेंट्स एब्सेंस ऑफ अ वैल्यू और अ नल वैल्यू. ओके, मीन्स देयर इज नो वैल्यू. सो सी कुछ भी नहीं है यहाँ पे, वेरिएबल डिफाइन किया, उसमें डेटा टाइप स्टोर कर रहे हैं एंड देन वी आर प्रिंटिंग इट. सो इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, बूलियन, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, सेट एंड नन टाइप. ओके, टपल, डिक्शनरी, सेट. अच्छा ठीक है, एक बार इसको देख लेते हैं. व्हाट आर दिस? सो लिस्ट क्या था? लिस्ट हमारा ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ आइटम्स था दैट कैन बी चेंज्ड. टपल्स क्या है? ऑर्डर्ड बट अनचेंजेबल सीक्वेंस ऑफ आइटम्स है. एंड इसको लिखने का तरीका, इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखते हैं, टपल को हमेशा राउंड ब्रैकेट में लिखते हैं, सिंपल पैरेंथेसिस में लिखते हैं. एंड
ये चेंजेबल है. ओके, दिस इज द सीक्वेंस ऑफ दिस आइटम्स इज चेंजेबल बट दिस इज अनचेंजेबल. इसको एक बार डिफाइन कर दिया, वी कैन नॉट चेंज द सीक्वेंस, दैट इज अ टपल. डिक्शनरी इज अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर. सो यहाँ पे की वैल्यू पेयर होता है, जैसे नेम इज एज इज 30. सो दिस इज, इसको आप ना जैसे इफ यू आर डीलिंग विथ, चलो ठीक है, लेट इट बी. मैं कॉम्प्लेक्स मतलब मैं आई एम आई विल नॉट से एनीथिंग जो कि आप, आई एम अज्यूमिंग कि आप एक बेसिक, आपको कुछ नहीं पता, सो यू आर अ बेसिक लर्नर. सो आई विल नॉट गिव यू रेफरेंस ऑफ थिंग्स जो आपको अभी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगे. ओके, सो कीज मस्ट बी यूनिक एंड इम्यूटेबल. ओके, यहाँ पे जो कीज है, ये जो कीज है ये यूनिक होने चाहिए. डिक्शनरी को हम कर्ली ब्रैकेट्स में लिखते हैं एंड इसके जो कीज है ये यूनिक होने चाहिए. लाइक you cannot write two keys with same name. आप name Alice फिर name Bob, you cannot write like this. Okay, तो ये unique होते हैं. Then sets are unordered collection of unique items enclosed in curly braces. So curly braces if we are using, and these are unordered collection but of unique items. Okay, so अगर आप इसको ऐसे लिख रहे हो and if you are printing in this, then जो इसका जो redundant items है ना वो remove हो जाएगा. So it will only give the unique items directly. Okay, so that is it. Now let's not accept and run this, just accept, and then we'll move to the comments. Okay, let's explain how to convert between different data types. Typecasting हमारे में it's there, converting data type. Let's see this here, difference between mutable and immutable. What can be changed, what cannot be changed. Okay, ठीक है, एक बार आप let's see this difference between mutable और immutable क्या होता है. बिकॉज म्यूटेबल इम्यूटेबल हमने यहाँ पे देख लिया, राइट. तो जो अभी देख रहे हैं उसको यहीं कंप्लीट करते हैं. लेट्स नॉट कैरी द बैकलॉग फॉरवर्ड. ठीक है, तो व्हाट इज दिस. सी, म्यूटेबल डेटा टाइप्स क्या है. दीज आर ऑब्जेक्ट्स whose state can be modified after they are created. This means you can change their contents or elements without creating a new object. So हम इसका कंटेंट चेंज कर सकते हैं. लिस्ट सेट एंड डिक्शनरी, these are it's saying म्यूटेबल डेटा टाइप्स. यू कैन चेंज द कंटेंट. एक बार आपने कुछ लिख दिया, सपोज आपने लिस्ट बना दी 1 2 3 4 5, सो उसको आप बाद में मॉडिफाई कर सकते हो. यू कैन मेक इट 1 2 3 4 और यू कैन मेक इट 1 2 3 4 5 6, राइट. सो दैट इज दैट. एंड इम्यूटेबल मीन्स objects whose state cannot be modified after they are created. So once a immutable object is created, their contents cannot be changed. Okay, so you have to create a new object. अगर जैसे आपने एक टपल बना दिया 1 2 3 4 वैल्यूज के साथ, अगर आप पे उसको कुछ ऐड करना है तो आप ना उसमें नहीं कर सकते. you have to now create a new object to do that. Okay, so these are some examples like integer, float, string, tuple, boolean. Okay, now show me some code examples. ठीक है, so कुछ examples देख लेते हैं mutable immutable behavior का. Okay, see, list A is 1 2 3. List B में list A को we have stored. Okay, and now what we are doing this, we are modifying the list A. List A में हम append कर रहे हैं 4, and then what we are doing, we are printing both the list, right. Wait. ओके, ये तो हमने देख लिया था. अच्छा, ये ओके, ठीक है, तो इसको एक बार रन करते हैं. लेट्स एक्सेप्ट एंड रन. सी, इनिशियल लिस्ट 1 2 3 था, इनिशियल लिस्ट बी भी 1 2 3 था. आफ्टर मॉडिफाइंग लिस्ट ए अपेंडिंग 4, व्हाट वी हैव डन, हमने लिस्ट ए में 4 को ऐड किया. ठीक है, लिस्ट ए में 4 को ऐड किया, बट देन लिस्ट बी now references the same list. लिस्ट बी में हम सेम लिस्ट को स्टोर कर रहे हैं, राइट. तो हम लिस्ट ए में जो चेंज करेंगे वो सेम चेंजेस लिस्ट ए में होंगे, राइट. तो जब हम
इसको मॉडिफाई कर रहे हैं, अपेंड बी, अपेंड फंक्शन क्या करता है, अपेंड मीन्स ऐड, तो वो लास्ट में ऐड करता है, 4 को लिस्ट के लास्ट में ऐड कर देगा। एंड व्हेन वी आर प्रिंटिंग दिस बोथ वी आर सी 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। एंड द मेमोरी एड्रेस ऑफ बोथ द लिस्ट, अगर मेमोरी एड्रेस हमें चाहिए कि किस मेमोरी में स्टोर है कंप्यूटर की, वी कैन गेट दिस बाय राइटिंग आईडी। तो आईडी के साथ अगर हम फेच कर रहे हैं तो ये दोनों सेम मेमोरी लिस्ट हमें सेम दे रहा है, मतलब दिस इज नथिंग बट द सेम लिस्ट, क्योंकि हमने इसको असाइन किया लिस्ट इक्वल टू लिस्ट ए। सो ठीक है, ये आपको समझ आया। एंड देन कमिंग टू इम्यूटेबल टाइप, जैसे कि इंटीजर इन स्ट्रिंग था, राइट। जैसे अब इफ वी आर डूइंग इंट ए इक्वल टू 10, ठीक है, अभी हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया जिसमें हम एक इंटीजर रख रहे हैं, फिर हम एक और वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं, उस वेरिएबल में हम इस इंटीजर को स्टोर कर रहे हैं 10 को, सेम वेरिएबल को, इन बी ने हाउ सेम वैल्यू 10। नाउ हम इनिशियल इसको प्रिंट कर रहे हैं, इसका मेमोरी एड्रेस देख रहे हैं। नाउ मॉडिफाई इंट ए, हम इंट ए को इंक्रीज कर रहे हैं, इंट ए प्लस 5, दिस इंक्रीजेस न्यू इंटीजर ऑब्जेक्ट फॉर इंट ए, ठीक है। नाउ इसको एक बार हम अच्छा ठीक है, देखो यहाँ पे इनिशियल इंट ए 10 था, इनिशियल इंट बी भी 10 था, दोनों का मेमोरी एड्रेस सेम था। अब हमने क्या किया, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सी यहाँ पे हम इंट ए प्लस 5 कर रहे हैं, इंट ए प्लस 5 कर रहे हैं, मतलब इंट ए हैज बिकम व्हाट 15, ठीक है। इंट ए प्लस 5 कर रहे हैं और उसको इंट ए में स्टोर कर रहे हैं, तो दैट विल ऑटोमेटिकली बिकम 15, राइट, ठीक है। बट अब हम जब इंट बी को प्रिंट कर रहे हैं तो इंट बी इज नॉट चेंजिंग, राइट, इंट बी इज नॉट चेंजिंग, इंट बी सेम है, 10 का 10 है, इंट बी रिमेन्स 10, इट्स अ डिफरेंट ऑब्जेक्ट नाउ। तो अगर हम मेमोरी एड्रेस दोनों का चेक कर रहे हैं तो इंट बी तो वही रहा, लेकिन इंट ए न्यू मेमोरी लोकेशन में चले गया। इसका मतलब आप समझ रहे हो, इसका मतलब जब हमने ये किया तो ये इसी वैल्यू को चेंज नहीं किया, इसने एक नया ऑब्जेक्ट बनाया, ओके, इसने एक नया ऑब्जेक्ट बनाया एंड उसका मेमोरी लोकेशन उसने चेंज किया, राइट। सो दिस इज अ न्यू ऑब्जेक्ट विच इज स्टोर्ड इन अ न्यू मेमोरी लोकेशन, ठीक है। ये दैट हैज चेंज्ड, ये चेंज हो गया है, सेम, दिस इज नॉट द सेम, राइट। सो सिमिलरली विथ स्ट्रिंग, इफ वी आर डूइंग हेलो एंड इसको हम सेम स्टोर कर रहे हैं एंड देन उसमें हम अगर हेलो वर्ल्ड लिख रहे हैं तो यू कैन सी हेलो हेलो सेम लोकेशन। अब जब वी आर कॉन्कैटिनेटिंग वर्ड तो स्ट्रिंग ए में हेलो वर्ल्ड आ रहा है, स्ट्रिंग बी एज इट इज है, राइट। सो दिस इज व्हाट इम्यूटेबल एंड म्यूटेबल मीन्स, ठीक है। ओके, नाउ टपल लिस्ट में नहीं जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक कंट्रोल फ्लो एंड लूप्स, नो। नेक्स्ट टॉपिक विल सी कमेंट्स। कमेंट्स आर बेसिकली नेक्स्ट टॉपिक कमेंट्स। सो कमेंट्स क्या करता है हमें, जैसे दीज आर द कमेंट्स, राइट। ये जो अगर हम कुछ भी चीज ऐसे हैश डाल के लिख रहे हैं ना, सो ये दिस विल नॉट एग्जीक्यूट, ये जस्ट हमें ना, दिस आर द हेल्पर टेक्स्ट। जब हम प्रोग्राम लिखते हैं ये हेल्पर टेक्स्ट रहता है, ये बताता है कि जो कोड लिखा हुआ है व्हाट डज दैट सिग्निफाई। जैसे यहाँ पे लिखा है, ये बता रहा है कि ये जो लाइन ऑफ कोड है ये इंटीजर के लिए, इम्यूटेबल टाइप इंटीजर। सो दिस बाय रीडिंग दिस हमारा जो कोड का अंडरस्टैंडिंग है ना वो ज्यादा ईजी हो जाता है। तो आप जहाँ पे भी ऐसे कमेंट्स देखोगे ना, हैश लिखा होगा, पाइथन में एक बार चेक कर लेते हैं। पाइथन में दिस इज द 2 टाइप ऑफ कमेंट्स हो सकते हैं, या तो आप एक कमेंट सिंगल लाइन में लिख सकते हो या आप मल्टी लाइन कमेंट्स भी लिख सकते हो। सो आई थिंक ये जो यहाँ पे ये जनरेट करके दे रहा है ना हमें, ये मल्टी लाइन कमेंट के फॉर्म पे ही है। लेट्स सी, अच्छा नहीं, ये इसका इंटरफेस ही अलग है, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं सिंगल लाइन कमेंट और मल्टीपल लाइन कमेंट का। सिंगल लाइन कमेंट तो दिस इज हैश, ठीक है, कहाँ पे जनरेट हुआ, ओके, हाँ, सिंगल लाइन कमेंट्स दिस इज हैश, ठीक है। हैश से अगर कुछ स्टार्ट हो रहा है तो सिंगल लाइन कमेंट। एंड मल्टी लाइन कमेंट्स आर इधर ट्रिपल कोट्स डबल वाला या सिंगल वाला ट्रिपल कोट्स, ओके। सो अगर हम ट्रिपल कोट्स के अंदर मल्टी लाइन कमेंट मतलब एक से ज्यादा लाइन पे आप कुछ भी लिख रहे हो,
ठीक है, सो दैट विल नॉट बी गेटिंग एग्जीक्यूटेड, दैट विल रिमेन एज इट इज। तो दिस ट्रिपल लाइन कमेंट, दीज आर सिंगल लाइन कमेंट, तो ऐसे कर सकते हो। तो इसको आप एक बार पढ़ लेते हैं। कमेंट्स आर एक्सप्लेनेटरी नोट्स रिटन विद इन अ प्रोग्राम सोर्स कोड। तो ये एक्सप्लेनेटरी नोट्स रहते हैं, ठीक है, सोर्स कोड में लिखा रहता है। दे आर इग्नोर्ड बाय द पाइथन इंटरप्रेटर ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन एंड दे विल नॉट अफेक्ट हाउ द कोड विल रन, ठीक है। प्राइमरी पर्पज इज टू मेक द कोड मोर रीडेबल एंड अंडरस्टैंडेबल फॉर ह्यूमंस। ओके, राइट। Okay, now let's accept this and let's proceed ahead with the print function and taking input from user. Let's first see this print function. ओके, अभी हमने काफ़ी सारे प्रिंट फंक्शंस देखे, बट एक बार फिर से देख लेते हैं। प्रिंट फंक्शन बिल्ट इन पाइथन फंक्शन है, राइट। ये हमें दे आर यूज टू आउटपुट मैसेजेस टू द कंसोल और अदर स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट प्रिंट करने के लिए हेल्प करता है हमें, एंड इट्स बिल्ट इन, यू डोंट नीड टू इम्पोर्ट एनी मॉड्यूल्स। हमें कोई मॉड्यूल नहीं इम्पोर्ट करने की ज़रूरत है। वर्सेटाइल है, इट कैन प्रिंट स्ट्रिंग, नंबर, वेरिएबल, ऑब्जेक्ट्स, सब कुछ प्रिंट कर सकता है। एंड इट्स यूज फॉर डिबगिंग, वी कैन यूज इट फॉर डिबगिंग और वी कैन यूज इट टू शो सम आउटपुट, राइट। सो दैट इज देयर। सिंटैक्स प्रिंट स्टेटमेंट का कुछ ऐसा है, बेसिक सिंटैक्स ऐसा है, बट दिस इज ओनली इंपॉर्टेंट। जो ये प्रिंट में ये जो ऑब्जेक्ट्स लिखा है ना, दीज आर द वन और मोर ऑब्जेक्ट्स दैट वी वांट टू प्रिंट, ओके। इसके बाद जो ये है पैरामीटर्स दैट आर ऑप्शनल, ठीक है। अगर हम ये दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। सो जैसे कि अगर आप ये देखो सेप इक्वल टू, ये ऐसे लिखा है। सो व्हाट इज दिस? दिस इज एन ऑप्शनल कमांड दैट वी कैन गिव एंड दिस इज अ सेपरेटर स्ट्रिंग प्लेस्ड बिटवीन मल्टीपल ऑब्जेक्ट, बाय डिफॉल्ट इट्स अ सिंगल स्पेस, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे आप देखिए, अगर हम ये सेपरेटर नहीं देते हैं और इसको प्रिंट करते हैं तो क्या प्रिंट होगा? एप्पल, बनाना, चेरी, राइट। अगर हम सेपरेटर ऐसे दे देते हैं ना, सो लेट्स एक्सेप्ट एंड रन, तो क्या होता है, ये जो भी हम प्रिंट कर रहे हैं ना, तीनों स्ट्रिंग, इसके बीच में ही सेपरेटर ऐड हो जाएगा। सो एप्पल, फिर स्लैश बनाना स्लैश चेरी, यहाँ पे देखो ऐसे एप्पल्स, फिर है हाइफन बनाना हाइफन चेरी, ठीक है। सो ये हो गया सेपरेटर। नाउ इसमें एक और है, जैसे एंड इक्वल टू, अगर हम एंड नहीं दे रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट न्यू लाइन, मतलब जब भी हम प्रिंट स्टेटमेंट लिख रहे हैं ना, उसके बाद हमेशा एक लाइन बाद ही कुछ दूसरा एग्जीक्यूट होता है। तो हमेशा एक लाइन का गैप आता है एंड दैट इज बिकॉज ऑफ दिस। डिफॉल्ट जो है दैट इज न्यू लाइन दैट इज रिटन बाय \n, ठीक है। और अगर हम चाहें तो एंड अपना चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए एंड ट्रिपल स्टार है, तो यहाँ पे क्या होगा, लाइन 1 के बाद ट्रिपल स्टार प्रिंट होगा, फिर लाइन 2 प्रिंट होगा, ठीक है। ये न्यू लाइन में नहीं जाएगा। तो ये चेक करते हैं, देखो ये है लाइन 1 ट्रिपल लाइन लाइन 2, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्पेस प्रिंट हुआ है, तो ये फर्स्ट पार्ट प्रिंट होगा, फिर ये सेकंड वाला भी सेम लाइन में आ जाएगा, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट ऑन द सेम लाइन, राइट, ठीक है। एंड अच्छा ये देखो, दिस इज गुड, यूजिंग एफ स्ट्रिंग फॉर्मेटेड स्ट्रिंग लिटरल्स फॉर मोर पावरफुल फॉर्मेटिंग। जैसे कि देखो, अभी हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमने वेरिएबल डिफाइन किया, माई नेम एलिस, तो हम डायरेक्टली वेरिएबल अगर प्रिंट करेंगे तो हमें उसका वैल्यू मिल जाएगा, एलिस प्रिंट हो जाएगा। अगर इसको हमें एक सेंटेंस में करना है तो हम ऐसे कर सकते हैं, जैसे माई नेम इज, यू वॉन्ट टू प्रिंट माई नेम, जो ये जो वेरिएबल है ना, जो वेरिएबल अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं तो वेरिएबल का वैल्यू, जस्ट रिमेंबर कि वेरिएबल अगर आपको प्रिंट करना है ना, वो कोड्स में नहीं आएगा, अदरवाइज वो उसको स्ट्रिंग के जैसे ट्रीट करेगा, माई अंडरस्कोर नेम प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो माई नेम इज, यहाँ पे एलिस आ जाएगा एंड आई एम, एज के जगह यहाँ पे 30 years old आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, हाँ, माई नेम इज एलिस, आई एम 30 years old। तो इसमें नोट करो, इसमें क्या हुआ है, माई नेम इसको कोट में लिखा है, फिर कॉमा दे के वेरिएबल नेम, फिर एंड आई एम को कोट में लिखा है, कॉमा दे के वेरिएबल नेम, फिर ईयर ओल्ड को कोट में लिखा है, राइट। अगर आपको ऐसा नहीं करना है, बार बार कोट्स नहीं देने, कॉमा नहीं देना है, तो आप ये फॉर्मेटेड स्ट्रिंग लिटरल एफ यूज कर सकते हो। अगर हम लिख रहे हैं एफ लिखने के बाद आप जो भी लिख रहे हो ना, उसके अंदर आपको बाद में कोट नहीं देना है। तो इसमें कैसे रहता है, जैसे आपने एफ लिखा, डबल कोट्स के अंदर आपको ऐसे प्रिंट कराना है, यू बॉट, आपके पास 3 वेरिएबल है, प्रोडक्ट, प्राइस, क्वांटिटी, तो यू बॉट, यहाँ पे क्वांटिटी आपको कर्ली ब्रैकेट्स में 2
लैपटॉप्स यहाँ पे ऐसा आ जाएगा फॉर द टोटल प्राइस ऑफ प्राइस इंटू क्वांटिटी यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा, दैट इज ये जो प्राइस इंटू क्वांटिटी यहाँ पे आ गया। एंड .2f मतलब कि इसको 2 डेसिमल वैल्यू तक आप वैल्यू शो करो। सो यहाँ पे देखो यू ब्रॉट 2 लैपटॉप्स फॉर अ टोटल ऑफ जो वैल्यू है इसको यहाँ पे .2f मतलब यहाँ पे डेसिमल के बाद एग्जैक्टली 2 वैल्यू आएगा कंप्यूटेशन करने के बाद, राइट। सो वी कैन डू लाइक दिस। तो जो वेरिएबल है यहाँ पे आपको उसको कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर शो करना है, ठीक है। सो ये समझ आ गया, राइट। इट्स प्रीटी सिंपल। नाउ लेट्स मूव अहेड, शो मी एग्जाम्पल ऑफ टू डायरेक्ट, ठीक है। ये सब छोड़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज टेकिंग इनपुट फ्रॉम यूजर। लेट्स स्टॉप दिस, ठीक है। Taking input from user, next topic. Okay. Taking input from user में it has shown us the operators or understanding precaution for performing cancel. Taking input from input command. Okay, explain how to use the input function. Let's wait for some seconds. Usually Gemini आप अलग से यूज करो, रेस्पॉन्स इतना टाइम नहीं लगता है, इसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है। ओके, इनपुट फंक्शन। ओके, थ्योरी क्या है? इन प्रोग्रामिंग इट्स ऑफन नेसेसरी टू इंटरेक्ट विद द यूजर एंड गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम देम, राइट। तो इनपुट फंक्शन क्या करता है? इट्स एक्जैक्टली फॉर दिस पर्पस। इट अलाउज योर प्रोग्राम टू पॉज इट्स एक्सिक्यूशन, डिस्प्ले अ मैसेज, इट विल डिस्प्ले अ प्रॉम्प्ट टू द यूजर, वेट फॉर द यूजर टू राइट समथिंग एंड प्रेस एंटर एंड कैप्चर द टाइप्ड इन्फॉर्मेशन। तो हम यूजर से कुछ प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट हो रहा है उस टाइम से यूजर से हम कुछ वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है। तो दैट इज द इनपुट स्टेटमेंट। तो इसका सिंटैक्स बेसिकली सिंपल है, जस्ट राइट इनपुट एंड द प्रॉम्प्ट, मतलब यहाँ के जो स्ट्रिंग है दैट इज ऑप्शनल, व्हाट स्ट्रिंग दैट इज डिस्प्लेस्ड टू द यूजर बिफोर दे आर एक्सपेक्टेड टू एंटर द इनपुट। तो यहाँ पे आप इनपुट और अपना प्रॉम्प्ट दोगे, जैसे कि यहाँ पे देखिए इनपुट व्हाट इज योर नेम। अगर हम ऐसे लिख रहे हैं तो ओके, तो यहाँ पे यूजर को एक प्रॉम्प्ट आएगा कि आप अपना नाम इनपुट करो, एंड देन वो जो भी नाम इनपुट कर रहे हैं वो इस नेम वेरिएबल में स्टोर हो रहा है, एंड देन वी आर प्रिंटिंग द नेम अगेन बैक ऑन टू द स्क्रीन। ओके, सो इसको हम एग्जीक्यूट कर लेते हैं। चलो सी, इट विल हैपन वन बाय वन। अभी क्या हुआ? इनपुट व्हाट इज योर नेम, हमें अपना नेम पूछ रहा है। सो आई विल राइट अपूर्वा, ओके, and I'll press enter. So hello Apurva, it's saying hello Apurva. Now यहाँ पे second है input how old are you. Okay, it's asking how old are you and it's storing it in age. हम जो भी input करते हैं ना, just remember वो string में जाता है। तो मैं जब अपना एज डालूंगी, दो आई विल एंटर माई एज एज अ नंबर, दैट विल बी स्टोर्ड एज अ स्ट्रिंग। सो उस स्ट्रिंग इनपुट को अगर आपको इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो आपको उसको स्पेसिफिकली टाइपकास्ट करना पड़ेगा, मतलब आपको बोलना पड़ेगा कि इसको आप इंटीजर में कन्वर्ट करो। सो यू विल गिव अ इंट एंड देन यू विल एनक्लोज दैट वेरिएबल इनटू दिस इंटीजर वाला क्या बोलते हैं इसको, इंटीजर डेटा टाइप, राइट। सो ये कमांड है, आप ऐसे, दिस इज टाइप कास्टिंग बेसिकली। सो लेट मी गिव माई एज एंड देन यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले मेरा इंटीजर में एज कन्वर्ट होगा, देन क्योंकि हम इसको इंटीजर में क्यों करें, बिकॉज यहाँ पे इन्होंने क्या किया, यहाँ पे इसमें कुछ एडिशन किया। अगर आपको एडिशन करना है कुछ उसमें, तो मेरे एज में अगर एक नंबर ऐड करना है तो आप स्ट्रिंग में नहीं कर पाओगे। इफ यू आर डूइंग 32 इन स्ट्रिंग प्लस 1 तो दैट विल गिव अनदर टोटली डिफरेंट आउटपुट, राइट। तो आपको अगर ऐड करना है तो नंबर में एडिशन हो सकता है। सो दैट इज वाई इसको इंटीजर में कन्वर्ट करके यहाँ पे 1 ऐड कर रहे हैं। देन टाइप, इसमें टाइप ऑफ एज स्ट्रिंग, अच्छा ये जो एज स्ट्रिंग था दैट इज, इसका टाइप जानने के लिए क्या डेटा टाइप है, तो उसके लिए हम टाइप फंक्शन यूज कर सकते हैं। अगर हम टाइप लिख रहे हैं तो टाइप बता देता है, और एजेंट, तो हम यहाँ पे अपना एज डालते हैं, माई एज इज 32, एज आई राइट 32। ये बोल रहा है हाउ ओल्ड आर यू, आई टोल्ड 32, सो यू विल बी 33 नेक्स्ट ईयर। ओके, तो फर्स्ट जो था, जो हमने इनपुट दिया दैट वाज इन स्ट्रिंग, एंड बाद में जब हम उनको उसने टाइप कास्ट किया दैट इज एन इंट। नाउ इट्स आस्किंग व्हाट इज योर हाइट इन मीटर्स। ओके,
सो जो भी मैं हाइट दूंगी दैट इज कन्वर्टिंग इट टू फ्लोट. फ्लोट में इसने टाइप कास्ट कन्वर्ट कर रहा है एंड देन इट इज टेलिंग माई हाइट इन 0.2f. ओके, सो लेट्स गिव माई हाइट इन मीटर्स. माई हाइट इन मीटर्स, मुझे तो अपना हाइट चलो कुछ भी रैंडम दे देते हैं यार. लेट्स गिव 10.1. ओके ठीक है, तो यहाँ पे 10.1, तो हाइट यहाँ पे क्या, इसको इसने 2 डेसिमल पॉइंट में एग्जैक्टली दिया है. ठीक है, सो हमने एग्जांपल पहले देखा था 0.2f मतलब डेसिमल के बाद यहाँ पे 2 वैल्यूज. ओके, मतलब पॉइंट के बाद यहाँ पे 2 वैल्यूज आएगा. सो दैट इज इतने वैल्यूज में हमें प्रिंट करना है. दैट टाइप ऑफ हाइट फ्लोट, टाइप इसका क्या आ गया, फ्लोट आ गया. नाउ enter the first number, enter the second number. It asking me for some numbers. Let me enter first number 100, second number 7. So what has happened, ये सिंपल इसने कैलकुलेशन कर दिया यहाँ पे. सो दिस इज प्लस ऑपरेटर एंड ये दोनों को ऐड कर रहे हैं. वॉट एवर वी हैव given as input उसको integer में कन्वर्ट करके एंड देन इट ही हैज डन द एडिशन एंड उसका सम यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है. ठीक है, सो दिस इज व्हाट इनपुट इज. ठीक है, इसको अगर आपको अगर एक बार चेक करना है, सी ये इसको एक बार कॉपी कर लेते हैं. अगर मान लो कि इसको हम कोड में गए, इसको पेस्ट किया यहाँ पे, अगर आपको इसको हम इंटीजर में नहीं कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो ये वाला लाइन ठीक है हट गया. नाउ यहाँ पे 8 स्ट्रिंग. ठीक है, अभी ये 8 स्ट्रिंग में है, इसको हमने डायरेक्टली +1 किया. तो what you will expect कि क्या होगा. let's execute this. how old are you, say suppose I am writing 32. so अभी यहाँ पे क्या आया, टाइप एरर आ गया. ठीक है, बिकॉज यू कैन ओनली कॉन्कैटिनेट स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग. यहाँ पे आप इसमें क्या बोल रहे हैं, दिस इज अ टाइप एरर, मिस रॉन्ग सिंटेक्स. आप ऐसा नहीं कर सकते. आप स्ट्रिंग के साथ स्ट्रिंग कर सकते हो, स्ट्रिंग प्लस नंबर नहीं कर सकते हो. इट्स सेइंग राइट. सो ओके, इसको ठीक है एक्सप्लेन द एरर. ठीक है, एक्सप्लेन द एरर तो हमें पता है. इसको एक बार और चेंज करते हैं. इसको इफ वी आर डूइंग इसको, हाँ सेइंग कि इसको कैंसिल करते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते हैं. इसको हम इंटीजर में नहीं कन्वर्ट कर रहे हैं. लेट्स राइट इन डबल स्ट्रिंग. ठीक है, हम स्ट्रिंग के साथ स्ट्रिंग कर सकते हैं राइट. दिस विल नॉट मेक एनी सेंस बट इफ वी आर डूइंग दिस 32. सो सी दिस हैज अपेंडेड. तो जब हम स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन करते हैं ना, वो उसके बाद उसको जस्ट ऐड कर देता है. सो इट हैज शोन 3 2 1. ओके, सो बेसिक होप आपको ये थोड़ा समझ आ रहा है राइट, ये क्या हो रहा है. नाउ let's proceed ahead. Let's go to boolean, true false, boolean logic and then the operators. Okay, ये operators are what, जो हम अभी arithmetic addition किया. So this is operator and boolean logic is nothing but true or false. ठीक है, so if true values जैसे tell me about boolean. ठीक है, एक बार boolean देख लेते हैं, उसके बाद ऑपरेटर्स में मूव करते हैं. जितने भी ट्रू वैल्यूज है, जैसे कि 1 हो गया, पॉजिटिव वैल्यू हो गया, 0 हो गया, सो दैट विल ऑल कम इनटू 0. आई थिंक इट विल कम अंडर फॉल्स, अदरवाइज बाकियों को तो ट्रू लेगा. लेट्स सी. Defining a Boolean variable is straightforward. Boolean data type is a data type that has only 2 possible values. उसका 2 ही values हो सकते हैं, true हो सकता है, false हो सकता है. ठीक है, so it's essential for expressing truth and falsehood. ठीक है, this is the heart of the logic. Now see, you will most commonly encounter or create Boolean values as a result of comparison or logical operation. ठीक है, comparison operators written. अगर हम कोई भी दो चीज को compare कर रहे हैं ना, whether A is equal to B, so we are asking whether that is equal. So it will tell either yes or no. That is, it will give either true or false. So अगर हम comparison operator use कर रहे हैं, हम logical operators use कर रहे हैं, these are logical operators, and or not, तो ये true value को represent करता है. So ये operators अभी हम देखेंगे. अभी जस्ट ट्रू एंड फॉल्स देख लेते हैं. सो जैसे यहाँ पे इज सनी ट्रू है, हैज अम्ब्रेला फॉल्स है. सो इज इट सनी, ओके, इट विल जस्ट गिव यस इट्स ट्रू. डू आई हैव अम्ब्रेला फॉल्स. टाइप ऑफ सनी यहाँ पे बुलियन आ जाएगा. ओके, इज
ओके ओके, अब जैसे ये देखो एज यहाँ पे 25 है, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, तो इज 25 ग्रेटर देन इक्वल टू 80, दैट इज ट्रू राइट. सो यहाँ पे अगर हम इज अडल्ट चेक करेंगे दैट विल कम एज ट्रू. सो दैट इज ट्रू फॉल्स ऐसे यूज होता है, जो कंडीशनल ऑपरेटर है उसमें यूज हो जाएगा, जो लॉजिकल ऑपरेटर्स है उसमें यूज होगा. सो इट विल जस्ट गिव अस ट्रू और फॉल्स वैल्यूज. ठीक है, इसको ऑपरेटर्स के साथ देखते हैं. लेट्स नॉट गो इनटू दैट एग्जांपल, या बुलियन के एग्जांपल्स यहीं पे देख लें ऑपरेटर्स में, बिकॉज नेक्स्ट टॉपिक इज ऑपरेटर राइट, तो इसको यहीं देख लेते हैं. लेट्स एग्जीक्यूट दिस. ठीक है, इज इट सनी ट्रू, डू हैव अम्ब्रेला फॉल्स, बुलियन एडल्ट ट्रू. ठीक है, एक एक करके देख ही लेते हैं. 95 स्कोर इज ग्रेटर देन 95 इज ग्रेटर देन 90 राइट, सो दैट इज ट्रू. इज स्कोर 95 एक्सीलेंट, ट्रू. ठीक है, फिर कंडीशनल ऑपरेटर है इक्वल. इक्वल वी आर चेकिंग इज एलिस इक्वल टू बॉब, so are these names equal? These are not equal right, so it will come as false. Now see using and, so ये दो टाइप के ऑपरेटर्स यहाँ पे. कंपैरिजन ऑपरेटर कंपेयर करेगा वेदर दो चीज इक्वल है, दो चीज नॉट इक्वल है, तो वी राइट लाइक दिस, नॉट इक्वल, दिस इज ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल, लेस देन और इक्वल. सो दीज आर ऑल कंपैरिजन ऑपरेटर्स. लॉजिकल ऑपरेटर्स में क्या होता है, एंड कब ट्रू रिटर्न करता है, जैसे हम चेक कर रहे हैं 2 and 3, अगर 2 and 3 दोनों ट्रू है, मतलब A and B दोनों ट्रू है, तो दैट विल रिटर्न ट्रू. ठीक है, और विल चेक ईदर वन शुड बी ट्रू, वन ऑपरेंड शुड बी ट्रू, एंड नॉट विल रिवर्स द वैल्यू. अगर ट्रू है तो उसको फॉल्स कर देगा, फॉल्स है तो उसको ट्रू कर देगा. सो लेट्स चेक दिस. कहाँ गया, हम यहाँ पे देख रहे थे ना. ओके, is sunny and not has umbrella. So is sunny and not, is sunny is true. Okay, is sunny यहाँ पे था ना, is sunny is true and has umbrella क्या था हमारा, false था, तो is sunny is true and not false. So is sunny is true and not false. Not false means not क्या करता है, ऑपरेट, जो ऑपरेंड है उसको उल्टा करता है, फॉल्स को ट्रू एंड ट्रू को फॉल्स. सो not false will become true, then true and true will become what, true and true will become true. So this is coming as true. यहाँ पे और के साथ चेक कर लेते हैं, हैज टिकट और इज मेंबर, तो ये ट्रू है ये फॉल्स है, तो ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स विल गिव ट्रू राइट. तो यहाँ पे हम देखेंगे तो ये आ जाएगा ट्रू. अगर ये दोनों फॉल्स होता तो ये फॉल्स हो जाता. ठीक है, एंड नॉट क्या करेगा, नॉट हमने देख लिया, नॉट ऑफ फॉल्स विल बिकम ट्रू, इट विल जस्ट चेंज इट. ठीक है, एंड बुलियन हम कंडीशनल स्टेटमेंट में यूज कर सकते हैं, लाइक इफ टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 25 प्रिंट इट्स हॉट आउटसाइड, एल्स प्रिंट इट्स नॉट हॉट. तो हम इसको ऐसे यूज कर सकते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट में. सो हम ये चेक कर रहे हैं, सी यहाँ पे ये पहले टेम्परेचर का वैल्यू 28 है, दिस इज चेकिंग इफ 28 इज ग्रेटर देन 25, दिस कंडीशन इज बिकमिंग ट्रू राइट. अगर जब ये कंडीशन ट्रू होगा तो हम इसके अंदर ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे. वी आर सेइंग प्रिंट इट्स आउटसाइड, दिस कंडीशन इज नॉट ट्रू, सो इट विल गो टू द, अगर ये फॉल्स हो जाएगा तो इट विल गो टू दिस पार्ट. सो दिस हाउ इफ एल्स कंडीशन वर्क्स राइट. तो ये ऐसा है. नाउ लेट्स मूव अहेड टू ऑपरेटर्स. एक बार सारे ऑपरेटर्स देख लेते हैं एंड देन हम इफ एल्स कंडीशन में मूव करेंगे. होप पेस इज नॉट वेरी स्लो फॉर द फर्स्ट टाइम. अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो एज अ फर्स्ट टाइमर, आई थिंक द पेस इज गुड. मतलब मुझे ऐसा लग रहा है मैं फिर भी थोड़ा फास्ट ही जा रही हूँ, बट आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी. फिर अगर आपको कोई भी टॉपिक थोड़ा और डिटेल में देखना है तो यू कैन ऑलवेज गो टू दिस AIs एंड देन यू कैन चेक द थ्योरीज. बट ये थोड़ा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, जो लैंग्वेज है ना पाइथन का बहुत ईजी है. ओके, सो लेट्स प्रोसीड विथ ऑपरेटर्स. ऑपरेटर्स आर स्पेशल सिंबल्स दैट परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन वन और मोर वैल्यूज. वैल्यूज को ही हम ऑपरेंड्स बोलते हैं राइट. तो हमें कुछ भी ऑपरेशंस करने हैं ना, तो हम ऑपरेटर्स यूज करते हैं. हमारे पास बहुत सारे टाइप के ऑपरेटर्स है, लाइक एरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन. असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं असाइन करने के लिए, लाइक हम लिखते हैं ना x इक्वल टू 2, सो दैट इज
असाइनमेंट, असाइन वैल्यू टू वेरिएबल्स, ये हम देख चुके हैं. कंपैरिजन हमने देख लिया, राइट, इक्वल टू नॉट इक्वल टू. लॉजिकल ऑपरेटर्स हमने देख लिया. देन आइडेंटिटी ऑपरेटर्स यूज टू कंपेयर द मेमोरी, फिर मेंबरशिप एंड बिटवाइज. ठीक है, दीज आर सम ऑपरेटर्स. एक बार इसको एक्सेप्ट करते हैं एंड लेट्स सी द एग्जांपल्स. शो मी एग्जांपल ऑफ यूजिंग अरिथमेटिक ऑपरेटर्स. ओके, इसमें इट्स नॉट रिटन. शो मी लिस्ट ऑफ all operators with one example. ओके, एक बार सारे ऑपरेटर्स देख लेते हैं एक एग्जाम्पल के साथ. सो दैट विल बी इनफ एक बार समझने के लिए. ओके, सी यहाँ पे देखते हैं. एडिशन x प्लस वाई, सब्सट्रैक्शन x माइनस वाई, मल्टीप्लीकेशन x इंटू वाई, डिविजन x बाय वाई, मॉड्यूलस रिमाइंडर निकालने के लिए. ओके, x परसेंटेज सिंबल y, एक्सपोनेंशियल 2:3, सो दैट इज एक्सपोनेंशियल, सो दैट इज डबल स्टार. ठीक है, फ्लोर डिविजन करना है, फ्लोर डिविजन के लिए डबल बैक स्लैश. ओके, दिस इज डिविजन, रिटर्न्स ऑलवेज फ्लोट, मतलब जब हम डिवाइड करेंगे ना तो हमें फ्लोट वैल्यू आएगा, डेसिमल में आएगा. अगर हमें राउंड ऑफ वैल्यू चाहिए, डेसिमल पार्ट नहीं चाहिए, तो हम इसको डबल स्लैश यूज कर सकते हैं. नाउ वी हैव असाइनमेंट ऑपरेटर. असाइनमेंट इज x इक्वल टू 10. अच्छा, ओके, इफ यू आर राइटिंग x प्लस इक्वल टू 5, दिस मीन्स ये शॉर्ट हैंड नोटेशंस होते हैं. ठीक है, शॉर्ट हैंड नोटेशंस मीन्स इसको, ये जो पूरा लिखा हुआ है ना x इक्वल टू x प्लस 5, यू कैन ऑल्सो राइट दिस एज x प्लस इक्वल टू 5. ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली सिस्टम विल अंडरस्टैंड you mean that you want to add x to x and then assign it to again x. मतलब you want to add 5 to x and assign again to x. Okay, तो ये शॉर्ट हैंड नोटेशंस है. जैसे if you want to write x equal to x minus 5, तो आप x minus equal to 5 या x minus equal to 3 ऐसे. so x into equal to 2, ये multiply, divide, so जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेटर है उसका ये शॉर्ट हैंड नोटेशंस है. कंपैरिजन वी हैव सीन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर, लेस, ग्रेटर देन, इक्वल, लेस देन इक्वल. लॉजिकल ऑपरेटर्स हमने देख लिया, एंड और नॉट. आइडेंटिटी ऑपरेटर्स कंपेयर मेमोरी लोकेशंस ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स, एक्स इज वाई, एक्स इज नॉट वाई. हमें चेक करना है कि दोनों जो ऑब्जेक्ट्स है या वेरिएबल्स है वो सेम है कि नहीं. जो हमने मेमोरी लोकेशन वाला देखा था ना इनिशियली, अगर हम x इक्वल टू 5 लिख रहे हैं देन वी आर राइटिंग y इक्वल टू x, तो वो दोनों सेम लोकेशन को बिलोंग कर रहा है. तो अगर हम उसको शॉर्ट हैंड में चेक करना चाहते हैं, वी कैन जस्ट चेक दिस बाय राइटिंग x इज y. इफ इट इज गिविंग ट्रू, मतलब वो दोनों एक ही मेमोरी लोकेशन, मतलब दैट मीन्स प्रैक्टिकली वो दो वेरिएबल है बट वो एक ही वैल्यू होल्ड कर रहे हैं, एक ही लोकेशन पे जो वैल्यू रखी है उसको होल्ड कर रहे हैं, राइट. सो वो था, कहाँ गया, हाँ. देन आइडेंटिटी ऑपरेटर्स हो गया. मेंबरशिप ऑपरेटर्स टेस्ट इफ अ सीक्वेंस कंटेन्स अ वैल्यू. लाइक जैसे हमें अगर चेक करना है कि ये जो लेटर है ए, ये स्ट्रिंग में है कि नहीं बनाना, सो वी कैन चेक द वेदर दिस वैल्यू इज दिस और नॉट. सो ए इन बनाना, दिस विल गिव ट्रू और फॉल्स. लाइक दिस विल गिव ट्रू. जेड नॉट इन हेलो, सो जेड इज नॉट इन हेलो, सो दिस विल गिव अस ट्रू, राइट. सो ये दिस इज ऑल्सो वेरी सिंपल. ठीक है, थोड़ा सा ये सिंपल ना लैंग्वेज बेस्ड है, मतलब आपको समझ ही आ रहा है, ए इन बनाना, जेड नॉट इन हेलो. सो दैट इज वाई पाइथन इज वेरी इजी. थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में इसका जो सिंटैक्स है वैसे ही रहता है. बिटवाइज ऑपरेटर्स के ऑपरेशंस ना इंडिविजुअल बिट्स में परफॉर्म करते हैं. लाइक दिस इज वेरी लेस कॉमन बट बिटवाइज नोटेशंस हम इतना, जब हम इसको हम छोड़ सकते हैं. ठीक है, ये आपका बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज नहीं होगा, राइट. तो लेट्स नॉट लुक इनटू दैट, लेट्स एक्सेप्ट दिस. नाउ लेट्स प्रोसीड टू, हमने वेरिएबल, डेटा टाइप, ऑपरेटर्स, हमने इतना सब कंप्लीट कर लिया है. ओके, now let's proceed to control and then loops. Okay, control flow, loops, this is where थोड़ा सा आपका प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर आपको दिखने लगेगा. ठीक है, ये सब तो अभी तक थोड़ा सा नोटेशंस में था. अभी कंट्रोल फ्लो जब हम देखेंगे, सो थोड़ा सा इफ एल्स स्टेटमेंट जब आएगा तो थोड़ा सा एक प्रोग्राम का स्ट्रक्चर कैसे डिफाइन होता है, यू विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग दैट. सो अभी वी आर प्रोसीडिंग टू दैट पार्ट. Okay, so now coming to
control flow in Python. Okay, so what is control flow? Control flow refers to the order in which the statement or instructions of a programmer executed. किस order में हम उस instruction को execute कर रहे हैं. So it will define the sequence of operation a programs perform. Okay, किस sequence में हमारे operations perform होंगे, हम we can define that sequence using control flow. Okay, now विदाउट कंट्रोल फ्लो प्रोग्राम वुड सिंपली एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस लीनियर टॉप टू बॉटम. अगर हम कुछ फ्लो नहीं डाल रहे हैं और डायरेक्टली ऐसे लिखते जा रहे हैं ना तो टॉप टू बॉटम एग्जीक्यूट होगा. लेकिन अगर हम कुछ फ्लो दे रहे हैं ना, जैसे हम इफ एल्स दे रहे हैं, सो अगर हम इफ में कुछ कंडीशन देंगे सो दैट स्टेटमेंट विल एग्जीक्यूट अगर वो इफ कंडीशन ट्रू है, अदरवाइज फॉल्स. तो वी कैन मेक द कंट्रोल जंप without executing some part, right? So that is if and else. तो इसमें दो कंट्रोल फ्लो में दो है, एक तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स आते हैं हमारे if else वाले, एक रिपीटेड एक्शंस आते हैं लूप्स वाले. ओके, सो रिपीट एक्शंस क्या होता है? लूप्स, व्हाट आर लूप्स? अगर हम किसी चीज को हमें बार बार एग्जीक्यूट ले, जैसे कि हमें मान लो हमारे पास x इक्वल टू 1 है, राइट, और हमें x इक्वल टू 1 पे 1 ऐड करना है, ठीक है, एंड देन दैट वी हैव टू डू 10 टाइम्स. सो व्हाट विल राइट x इक्वल टू 1, देन विल राइट x इक्वल टू x प्लस 1, देन विल राइट x इक्वल टू x प्लस 1, x इक्वल टू x प्लस 1, ऐसे करके हम उसको 10 बार लिखेंगे. सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दैट 10 टाइम्स वी कैन राइट दैट इन अ लूप. वी कैन राइट अ लूप और उस लूप के वो लूप उस x इक्वल टू x प्लस 1 को 10 बार एग्जीक्यूट करेगी, राइट. सो हमें उसको 10 बार नहीं लिखना पड़ेगा. दैट विल बी द जॉब ऑफ द लूप टू डू दैट. तो दैट इज लूप. ओके, एंड जम्प टू सेक्शंस, दीज आर फंक्शंस एंड एक्सेप्शंस. ओके, नाउ जम्प टू सेक्शंस. ओके, ये थर्ड पार्ट पे एक बार फिर से आते हैं. पहले हम इफ एल्स देखते हैं एंड लूप्स देखते हैं. नाउ कंडीशनल स्टेटमेंट्स, राइट. इफ, elif and else. If कंडीशन इज ट्रू देन कोड टू एग्जीक्यूट इफ कंडीशन इज ट्रू. तो हम बेसिक इफ स्टेटमेंट ऐसा रहता है, हम इफ लिखते हैं, हम एक कंडीशन डालते हैं एंड कोलोन, अगर वो कंडीशन ट्रू होगा तो क्या कोड एग्जीक्यूट होगा, दैट विल राइट हियर. नाउ इफ एल्स, हम इफ कंडीशन इज ट्रू दिस, अगर कंडीशन फॉल्स होगा एल्स देन द फॉल्स पार्ट, राइट. देन वी कैन डू अ चेन ऑफ दिस. इफ वी कैन कंपेयर मल्टीपल सिनेरियोज, राइट. तो हम बहुत सारे कंडीशंस भी दे सकते हैं. इफ कंडीशन 1, एल्स इफ अगर दूसरा कंडीशन सही हुआ, एल्स इफ अगर तीसरा कंडीशन सही हुआ, एल्स अगर कुछ भी सही नहीं हुआ तो फिर आप ये वाला कोड परफॉर्म करो. फॉर दैट शॉर्ट हैंड नोटेशन जो लिखते हैं ना, इट्स वो पूरा एल्स इफ नहीं लिखते हैं, एलिफ लिखते हैं यहाँ पे, एलिफ. ओके, सो इफ, एलिफ, एलिफ एंड देन लास्ट पे एल्स. सो ये है सिंटैक्स. ओके, एंड इसमें पाइथन कंट्रोल फ्लो स्ट्रक्चर में ना इट रिलाइज heavily on indentation to define blocks, ठीक है. Unlike in many other languages that use curly braces, Python uses white spaces. So बहुत सारे में क्या होता है, बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप देखोगे कि if के बाद जो कंडीशन है उसके बाद ये, इसके बाद जो भी लिखा हमको एग्जीक्यूट करना है ना, हम उसको सिंपल कर्ली ब्रैकेट में रख देते हैं, ठीक है. यहाँ पाइथन में ऐसा नहीं है. पाइथन में इंडेंटेशन यूज होता है. इंडेंटेशन मतलब कि आपको प्रॉपर वे में लिखना है. इफ कंडीशन कोलोन एंड देन जो कोड टू एग्जीक्यूट है वो नेक्स्ट लाइन में आएगा एंड दैट विल बी इंडेंटेड, मतलब ये इतना एक टैब स्पेस रहेगा यहाँ पे आएगा, राइट. सो दैट इज कॉल्ड इंडेंटेशन. तो दिस इज अ वे ऑफ राइटिंग पाइथन का सिंटैक्स. नाउ कमिंग टू लूप्स. फॉर लूप, वाइल लूप. सो लूप्स आर यूज टू रिपीट ब्लॉक्स ऑफ कोड, ठीक है. एक ब्लॉक ऑफ कोड को बार बार अगर एग्जीक्यूट करना है तो, जैसे फॉर लूप आइटरेट्स ओवर अ सीक्वेंस. हमने सीक्वेंस डेटा टाइप देखा था. माई लिस्ट जैसे हो गया 1 2 3. अगर आपको ये लिस्ट के सारे आइटम्स प्रिंट करने हैं एक एक करके 1 2 3, एक तरीका तो क्या है, आप प्रिंट माई लिस्ट कर दो. अगर आप प्रिंट माई लिस्ट करोगे तो इट विल गिव यू एज इट इज 1 2 3 एज इट इज दे देगा, ठीक है. जैसे कि बट इफ यू वांट टू प्रिंट इंडिविजुअल आइटम 1 2 3, सो आपको एक एक करके उस आइटम में आइटरेट करना है. फॉर दैट यू यूज द लूप. सो फॉर आइटम इन माई लिस्ट, आइटम इज जस्ट अ वेरिएबल. ये क्या करेगा, माई लिस्ट में आइटम मीन्स फॉर ईच वैल्यू that will go into the item we are printing the item. So ये एक simple language में है. The syntax in very simple language. For item in my list, print item. For every item in the list, we are the printing the item. Okay. Now iterating a fixed number of times. जैसे we can also, instead of using a list of numbers, we can also write for I in range 5. ठीक है. अगर हमें कोई loop को 5 times execute करना है, so we for that we have to use this range
function. So for I in range 5 and the loops always starts with 0. In this case हमेशा याद रखना ये 0 से start होगा. तो if we are printing I, so it will start from 0, 1, 2, 3, 4 and as this equals to 5 ये loop से बाहर आ जाएगा. मतलब 5 तक नहीं जाएगा. It will just go start from 0 and it will go from range -1. Okay, you have to remember this. Now ओके एंड वाइल लूप भी सेम है. फॉर लूप में ऑल द कंडीशंस आर इन द वन लाइन. मतलब आप एक सिंटैक्स एक ही तरह लिखते हैं. पर वाइल लूप पे क्या होता है, विल राइट द कंडीशन फर्स्ट लाइक दिस काउंट इक्वल टू 0. ठीक है, वाइल काउंट इज लेस देन 5 हम कंडीशन लिख रहे हैं यहाँ पे काउंट इज लेस देन 5. व्हाट वी नीड टू डू, वी हैव टू डू दिस एंड देन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वी हैव टू इंक्रीज द काउंटर. फॉर लूप में काउंटर अपने आप इंक्रीज होता है, पर वाइल लूप में हमें एक्सप्लिसिटली जो हमारा काउंटर है, ये जो वाइल लूप का कंडीशन है ना कि हमें ये लूप कितने टाइम तक चलानी है, जब तक काउंट 5 से कम हो. लेकिन हर लूप के बाद हमें काउंट इंक्रीज भी करना पड़ेगा, राइट. तो अपडेट द कंडीशन वेरिएबल. अगर हम ये काउंट इंक्रीज नहीं करते हैं ना तो ये हमेशा इसके अंदर फंस के रह जाएगा. दैट इज कॉल्ड एज इन्फिनाइट लूप, क्योंकि हमेशा काउंट क्या है, 0 है. तो पहले ये कंडीशन चेक किया 0 इज लेस देन 5, प्रिंट काउंट, काउंट प्रिंट हो गया. सेकंड टाइम क्या हुआ, काउंट का वैल्यू क्या 0 ही है, राइट. काउंट को हमने कुछ भी नहीं किया. तो फिर ये देखेगा 0 इज लेस देन 5, इट विल प्रिंट काउंट, इट विल प्रिंट 0. तो ये 0 0 0 प्रिंट करते ही जाएगा, कभी रुकेगा ही नहीं. सो फॉर दैट कभी रुकेगा ही नहीं, इट मीन्स दैट टिल द टाइम मेमोरी इज नॉट एग्जॉस्टेड. ओके, बट हमें हमेशा काउंटर इसलिए इंक्रीज करना. सो वाइल लूप में हमें एक्सप्लिसिटली हैंडल करना पड़ता है. फॉर लूप में वो अपने आप हैंडल होता है. तो ये हमेशा आई इन रेंज 5, तो आई को ये हमेशा स्टार्ट करेगा 0 से. ठीक है, और वो अपने आप हर बार हर लूप में हर आइट्रेशन में आई का वैल्यू इंक्रीज करेगा. दैट इज फॉर लूप फॉर यू. ठीक है, एंड देन लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स होते हैं ब्रेक, कंटिन्यू, पास. ओके, चलो ये भी देखते हैं. पहले इसको एक्सेप्ट एंड रन कर लेते हैं, फिर हम लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स में जाते हैं. सो प्रोग्रामिंग में ना दिस इज द पार्ट वेयर प्रोग्रामिंग बिकम्स इंटरेस्टिंग. थोड़ा सा आपको दिखने लगता है कि हाउ यू आर गोइंग टू डू. सो इफ एल्स एंड लूप्स, सो दिस पार्ट मेक्स एक्चुअली द प्रोग्राम वेरी इंटरेस्टिंग. ओके, चलो सी एग्जीक्यूट हो गया. ओके, कंडीशनल स्टेटमेंट्स एग्जाम्पल. ओके, दीज आर द एग्जाम्पल. ठीक है, चलो देखो ये इसमें कैसा हुआ. बेसिक इफ एल्स स्टेटमेंट, यहाँ पे वेदर हमने सनी डिफाइन किया एंड व्हाट वी आर डिफाइनिंग, वी आर चेकिंग इफ वेदर इज सनी देन वी आर प्रिंटिंग गो फॉर अ वॉक, एल्स वी आर प्रिंटिंग स्टे इनडोर्स. ओके, तो वेदर सनी है तो ये चेक करेगा इज वेदर इक्वल टू सनी, दिस इज अ कंपैरिजन ऑपरेटर. ओके, वेदर इक्वल टू, जस्ट राइटिंग वन इक्वल इज असाइनमेंट, राइटिंग डबल इक्वल इज कंपैरिजन. ओके, ये कीप इन माइंड. तो यहाँ पे हम कंपेयर कर रहे हैं, यहाँ पे हम असाइन कर रहे हैं वैल्यू. सो दीज आर डिफरेंट ऑपरेटर्स. तो वेदर इज सनी, राइट, ये वेदर इज इक्वल टू सनी, दिस विल बिकम ट्रू, तो ये एग्जीक्यूट होगा. प्रिंट गो फॉर अ वॉक, दिस विल बी प्रिंटेड, ये प्रिंट नहीं होगा, ये स्किप हो जाएगा. नाउ इफ एल्स इफ कंडीशन, स्कोर हमने 85 डिफाइन किया. दिस इज चेकिंग इफ स्कोर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 90, स्कोर 90 से ज्यादा नहीं है. अगर स्कोर 90 से ज्यादा होता तो ग्रेड ए मिलता, बट स्कोर इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 90. नाउ इट्स चेकिंग whether score is greater than equal to 80. Yes, score is greater than equal to 80, 85. It will print grade B. ठीक है, it will print grade B. Now this condition has become true. It does not need to check this condition, it will come out. Okay, no, it will check if score is greater than equal to 70. दिस इज फॉल्स, ये नहीं करेगा. एल्स दिस हैज बिकम ट्रू, तो इट विल कम आउट. ठीक है, तो दैट इज व्हाट इफ एल्स स्टेटमेंट्स डज. एक बार इसको देख लेते हैं. बट इफ एल्स इफ में ना वो एक ही कंडीशन लेता है, इट विल नॉट टेक वन और मोर कंडीशन. इसको एक बार टेस्ट कर लेते हैं. इसका आउटपुट कहाँ गया, हाँ, गो फॉर अ वॉक ग्रेड बी. ठीक है, इसका जो मैं आपको बोल रही थी, इसको एक बार चलो एक बार कोड लिख के चेक कर लेते हैं. ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 80, ये ट्रू हो गया, राइट. अभी यहाँ पे एक और कंडीशन दे देते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 82. ठीक है, तो ये कंडीशन भी ट्रू हो रहा है, ये कंडीशन भी ट्रू हो रहा है. लेट
व्हाट डू यू फील, क्या एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो ये फर्स्ट कंडीशन ही चेक करता है। तो पहला कंडीशन जहाँ पे भी ट्रू हो गया ना, वो उसके अंदर, उस ब्लॉक के अंदर जाएगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा एंड ये पूरे लूप के बाहर आ जाएगा। तो ये कंसिक्वेंट आगे चेक नहीं करेगा। अगर हम यहाँ पे इसको 86 करते एंड देन एग्जीक्यूट करते तो ये ग्रेड सी आता, बिकॉज ये कंडीशन फॉल्स हुआ, ये कंडीशन फॉल्स हुआ, फिर ये कंडीशन में गया, ये ट्रू हुआ, तो फिर ये एग्जीक्यूट हुआ। ओके, तो ये एक ही कंडीशन चेक होगा एक बार में, ठीक है। कोई भी फर्स्ट कंडीशन जो मेट हो जाएगा वो ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। तो कॉन्सिक्वेंट कंडीशंस चेक नहीं होता है। अगर आपको कॉन्सिक्वेंट कंडीशंस चेक करना है ना, तो आपको सेपरेट इफ ब्लॉक्स लिखने पड़ेंगे, ठीक है। इन दैट केस आपको सेपरेट ब्लॉक्स लिखने पड़ेंगे, जैसे कि सी, इफ स्कोर इज ग्रेटर देन 90 ग्रेड ए, इफ स्कोर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 85 ग्रेड सी, 82 ग्रेड सी, एल्स। तो ये एक इंडिपेंडेंट कंडीशन है, ये एक इंडिपेंडेंट कंडीशन है, और ये पूरा इफ एल्स का ये एक ब्लॉक है। तो अगर हम ये देख रहे हैं तो हमारे पास 2 ग्रेड आ रहा है। तो ये एग्जीक्यूट हुआ इंडिपेंडेंटली, फिर नेक्स्ट में फिर से इफ कंडीशन आया, राइट, वो कंटिन्यूएशन में नहीं है। ओके, सो दैट इज वाई। सो अगर बहुत सारे कंडीशंस को मल्टीपल चेक करना है तो हमें सेपरेट लिखना पड़ता है। हमें अगर एक ही कंडीशन मैट होगा तो हमें एक ही ब्लॉक बनाना रहेगा। तो होप ये लॉजिक समझ आया, राइट। नाउ ये हमने देख लिया, फिर लूप्स देख लिया। लूप, अच्छा ठीक है, लूप का एग्जांपल देख लेते हैं। फ्रूट का लिस्ट है। नाउ फॉर फ्रूट इन फ्रूट्स, ठीक है, तो फॉर फ्रूट इन फ्रूट्स प्रिंट माई फेवरेट, प्रिंट फ्रूट। देखो, अगर हम प्रिंट करेंगे, सी यहाँ पे क्या हो रहा है, माई फेवरेट फ्रूट्स एप्पल बनाना चेरी। अगर हम इसमें ये फ्रूट्स को प्रिंट करते हैं, ठीक है, यहाँ पे कॉमा दे के ऐसे, और इसको एक बार वापस से एग्जीक्यूट करते हैं। देखो, अगर आप ये वेरिएबल लिस्ट का प्रिंट करते हो ना डायरेक्टली, तो ये पूरा लिस्ट प्रिंट हो जाता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। तो एप्पल बनाना चेरी पूरा आ गया, बट आपको इंडिविजुअल आइटम करना है ना प्रिंट, तो आपको इसको लूप करना पड़ेगा। सो इस लिस्ट को लूप करने का बेस्ट सिंटैक्स यही है, फॉर फ्रूट इन फ्रूट्स प्रिंट फ्रूट डायरेक्टली। जरूरी नहीं है, दिस इज जस्ट अ नेम, राइट। आपको समझ आ रहा है ना, ये एक वेरिएबल नेम है, तो हम ये डिफाइन के फ्रूट्स, बिकॉज वी नो कि ये लिस्ट ऑफ फ्रूट्स है। और फॉर ईच फ्रूट आप इसको एक्स भी लिख सकते हो, फॉर एक्स इन फ्रूट्स प्रिंट एक्स, ठीक है। जस्ट द वे ऑफ सेइंग कि ये एक वेरिएबल है, बट गिविंग मीनिंगफुल नेम्स मेक्स मोर सेंस। जैसे हमने देखा, तो हमेशा मीनिंगफुल नेम्स देना चाहिए था ताकि आपको समझ आए, ठीक है। एप्पल बनाना चाहिए, बिकॉज ये एक्स क्या है, एक्स आपको नहीं समझ आ रहा है, राइट। फिर एग्जाम्पल 4 रेंज वाला था, काउंटिंग टू 3। सो फॉर आई इन रेंज 1, अगर हम ऐसे लिखते हैं ना, देखो, अगर हम रेंज फंक्शन में डायरेक्टली लिख रहे हैं फॉर आई इन रेंज 4 प्रिंट आई, जैसे हमने देखा था, इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, तो हमेशा जो रेंज है ना 0 से स्टार्ट होता है, और लेस देन जो रेंज का वैल्यू है, तो ये प्रिंट कर रहा है 0 1 2 3, ठीक है। तो ये हमेशा एंड वैल्यू लेता है, और एंड वैल्यू -1। अगर हमें इसको 10 तक प्रिंट कराना है ना, 0 to 10, तो हमें यहाँ 11 देना पड़ेगा। अगर हम 11 देंगे तो ये 0 से लेकर 10 तक आया, राइट, ठीक है। तो हमेशा ये बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट होता है, लेकिन अगर आपको कुछ स्टार्टिंग नंबर देना है ना, सपोज आपको 4 से प्रिंट कराना स्टार्ट करना है, तो आपको 4,11 देना पड़ेगा। तो अगर आप एग्जीक्यूट करते हो तो यहाँ पे देखो, काउंटिंग 4 5 7 6 7 8 9 10, ठीक है। तो ये ऐसे था। तो इसको अगर आपको काउंटिंग 1 से करना है और 1 2 3 करना है, काउंटिंग टू 3, तो इसको आप 1,4 लिखेंगे, सो इट विल कम 1 2 3। होप दिस इज क्लियर, राइट। नाउ कमिंग टू द वाइल लूप। वाइल लूप में हम पहले काउंटर का वैल्यू देते हैं, हमें 0 से स्टार्ट करना है, हमने कंडीशन दिया, कंडीशन के फिर हमें क्या प्रिंट करना है, j इज लेस देन 3, तो हम क्या कर रहे हैं, 3 माइनस j कर रहे हैं। तो पहले j का वैल्यू क्या था, 0 था, तो 3 माइनस 0 इज 3, फिर j को j प्लस 1 हमने किया, काउंटर बढ़ाया, j 1 हो गया, j 1 इज लेस देन 3, नेक्स्ट में क्या प्रिंट होगा, 3 माइनस 1 दैट इज 2। पहले 3 प्रिंट हुआ, फिर 2 प्रिंट हुआ, फिर जब j का वैल्यू इंक्रीज करके हमने क्या किया, 2, तो 2 इज लेस देन 3, 2 इज लेस देन 3, तो 3 माइनस 2, फिर लास्ट में क्या होगा, 1। फिर j का वैल्यू जैसे 3 होगा, तो 3 इज लेस देन 3, 3 इज लेस देन 3 इज फॉल्स, तो ये वाइल लूप के बाहर आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे हमने काउंट डाउन किया 3 2 1, ये हमारा उल्टा लूप चला, ठीक है। तो ये लॉजिक वो प्लीज समझ आया, राइट। दिस इज अ रिवर्स काउंट डाउन। Now reverse counter, basically countdown, okay. Now loop with break and continue। तो हमने यहाँ पे देखा था लूप कंट्रोल स्टेटमेंट। अभी लूप क्या है, लूप जब तक आपका कंडीशन यहाँ पे ट्रू है तब तक लूप करेगा, मतलब कंटिन्यू करते रहेगा इटरेशन, जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो इसके बाहर आएगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले अगर आपको
कंट्रोल को लूप के अंदर से बाहर लाना है, देयर आर सम स्टेटमेंट्स। ब्रेक, कंटिन्यू, पास। ब्रेक क्या करता है? ब्रेक टर्मिनेट्स द लूप एंटायरली। अगर कहीं पे भी ब्रेक आता है, कई आइट्रेशन के बाद अगर ब्रेक आ गया तो मतलब वो जो लूप है वो वहीं पे रुक जाएगा, वेदर और नॉट वॉट एवर द कंडीशन इज, और कंट्रोल बाहर आ जाएगा। ठीक है, दैट इज नॉट फॉर ओनली लूप कंट्रोल, ये ना इफ एल्स के लिए भी काम करता है। इफ एल्स के अंदर भी आप इफ एल्स में भी आई थिंक इफ के अंदर तो ब्रेक आप कर सकते हो। विल टेस्ट दिस विद इफ एल्स स्टेटमेंट भी एक बार चेक करके देखेंगे ब्रेक आ रहा है कि नहीं। ठीक है, फिर कंटिन्यू स्किप्स द रेस्ट ऑफ द करंट आइटरेशन एंड मूव्स टू द नेक्स्ट, एंड पास इज अ नल ऑपरेशन, नथिंग हैपेंस, कैन बी यूज्ड एज अ प्लेस होल्डर। इसको पास में कुछ भी नहीं होता, एक प्लेस होल्डर के जैसे यूज कर सकते हैं। तो एक बार इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं कैसे हो रहा है। देखो, लूप विथ ब्रेक एंड कंटिन्यू। अभी फॉर नम इन रेंज 1 to 10, ठीक है, एक हमारा जो ये लूप है ये चलेगा 1 to 10, मतलब 1 से स्टार्ट होगा 9 तक जाएगा। हम चेक कर रहे हैं नंबर इज इवन। ये जो कंडीशन नम मॉड्यूलस 2 इक्वल टू 0, मतलब नंबर का हम रिमाइंडर चेक कर रहे हैं। 2 से डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है मतलब ये नंबर क्या है? नंबर इवन है। इफ नंबर इज इवन वी आर स्किपिंग टू द वी हैव रिटन व्हाट? कंटिन्यू। अगर इवन नंबर है ना तो कंटिन्यू मतलब क्या? ये आगे चेक नहीं करेगा क्या लिखा हुआ है, ये वापस से स्टार्ट हो जाएगा, मतलब वापस से ये नम का जो वैल्यू इंक्रीमेंट करेगा एंड देन द काउंटर विल स्टार्ट अगेन। ठीक है, तो कंटिन्यू डज दैट, कंटिन्यू वापस से आपका काउंटर को स्टार्ट करता है। और अगर यहाँ पे हमने ब्रेक लिखा होता तो ब्रेक क्या करता है? ब्रेक के पूरे काउंटर के बाहर ले जाता है आपको, इट विल एग्जिट द लूप। ठीक है, तो अभी हम क्या कर रहे हैं? अगर इवन नंबर है तो हम स्किप कर दे रहे हैं, और अगर ऑड नंबर है, सपोज यहाँ पे 1 आएगा, नंबर डिवाइडेड बाय 2 इज 1, तो ये कंटिन्यू काम नहीं करेगा, ये लूप के अंदर नहीं जाएगा, कंडीशन फॉल्स है। यहाँ पे हम नंबर को प्रिंट कर दे रहे हैं। ठीक है, और फिर हम चेक कर रहे हैं नेक्स्ट में नंबर ग्रेटर देन 5। ठीक है, तो ये 1 तो प्रिंट करेगा, 2 इवन है तो कंटिन्यू हो जाएगा, फिर 3 आएगा, 3 में प्रिंट करेगा, फिर 4 इवन है तो कंटिन्यू हो जाएगा, फिर 5 आएगा, 5 प्रिंट करेगा। फिर जब चेक करेगा इफ नंबर 5 इज ग्रेटर देन 5 इज ग्रेटर देन 5 इज फॉल्स, राइट, तो वापस से कंटिन्यू होगा। 6 7 भी प्रिंट करेगा, फिर 7 देखेगा, 7 इज ग्रेटर देन 5 इज ग्रेटर देन 5, राइट, तो ये ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, अब ये 8 और 9 में नहीं जाएगा, सो इट इज गिवन 1 3 5 7, तो ये 4 वैल्यू हमें दे रहा है, राइट। सो दैट इज व्हाट ब्रेक एंड कंटिन्यू इज। सो होप लूप्स और इफ एल्स आपको क्लियर है। आई विल चेक। अच्छा ठीक है, एक ना हम एक छोटा प्रोग्राम भी देख लेते हैं, बट कैन वी राइट अ ब्रेक स्टेटमेंट इनसाइड इफ एल्स? एक बार खुद से चेक करते हैं, एक बार लिख के देख लेते हैं। ठीक है, इफ ट्रू डायरेक्ट लिख रहे हैं, मतलब कि ये ट्रू है ही, तो हम इफ के अंदर जा रहे हैं एंड वी आर राइटिंग प्रिंट हेलो। ठीक है, ओ प्रिंट, ओके वी आर डूइंग प्रिंट हेलो ही कर लेते हैं, प्रिंट हेलो, एंड देन वी आर राइटिंग ब्रेक एंड एक मिनट इसमें कोलोन देते हैं, एंड देन वी आर डूइंग प्रिंट वर्ल्ड, वी आर डूइंग प्रिंट एंड वर्ल्ड। ठीक है, पर ये ले नहीं रहा है यहाँ पे, ब्रेक कैन बी यूज्ड ओनली विद इन अ लूप। ओके, ये नहीं ले रहा है। ठीक है, ब्रेक हम यूज नहीं कर सकते इफ एल्स के साथ, लूप के साथ ही ब्रेक और कंटिन्यू यूज होता है। तो इफ ट्रू प्रिंट हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। ठीक है, इट्स ओके। सो अभी एक छोटा सा फंक्शन देखते हैं, दैट कॉल्स द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर यूजिंग अ लूप, क्रिएट अ प्रोग्राम दैट चेक्स अ यूजर प्रोवाइडेड अ नंबर इज प्राइम नंबर देखते हैं। Let's see a small program before proceeding ahead ना। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? हमने लूप और ये कर लिया, लेट्स डू फंक्शंस ऑल्सो ना। फंक्शंस के बाद वापस से लिस्ट अपर डिक्शनरी में आता है, जो हमने छोड़ दिया था उस टाइम पे, मतलब हमने देखा था बट इसको थोड़ा और अच्छे से देख लेंगे। पहले फंक्शंस करते हैं, फिर इसमें आते हैं, हम डेटा स्ट्रक्चर में आते हैं। ठीक है, एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं। व्हाट इज दिस प्रोग्राम? ये प्रोग्राम बता रहा है दिस इज चेकिंग इफ द
नंबर इज अ प्राइम नंबर और नॉट। ठीक है, तो अब देखते हैं, अब हम इफ एल्स देख लिए राइट, तो अब इसको थोड़ा सा हम देखते हैं हम इसको समझ पा रहे हैं कि नहीं। लेट्स सी, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एंटर इंटीजर चेक इनपुट से हमें क्या समझ आ रहा है, इनपुट से ये समझ आ रहा है कि हम यूजर से इनपुट मांग रहे हैं और यहाँ पे हम एक इंटीजर इनपुट करा रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि इंटीजर डालो, इंटीजर आ गया। ट्राई एंड ये जो है ट्राई एंड एक्सेप्ट क्या करता है, आप ऐसे समझो कि ट्राई में हम एक ट्राई कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू एग्जीक्यूट सम कोड सम प्रोग्राम, ओके। और अगर इफ दैट इज एग्जीक्यूटिंग सक्सेसफुली देन इट्स ओके, लेकिन अगर यहाँ पे उसको एग्जीक्यूट करने के टाइम वी आर ट्राइंग टू एग्जीक्यूट सम कोड, इफ देर इज सम एरर सो द सिस्टम विल एक्सेप्ट दैट एरर, मतलब वो हमें अलग से एरर शो नहीं करेगा एंड इट विल जस्ट से दैट वी हैव एंटर्ड एन इनवैलिड इनपुट, क्योंकि हम यहाँ पे हम एक नंबर मांग रहे हैं राइट, लेकिन व्हाट इफ आई एंटर अ स्ट्रिंग, आई विल राइट माय नेम, वो नंबर पे तो मतलब दिस इज अ प्रोग्राम टू चेक वेदर अ नंबर इज अ प्राइम और नॉट, लेकिन आप स्ट्रिंग को तो चेक नहीं कर सकते ना, अगर मैं अपना नाम डाल रही हूँ सो दैट इज रॉन्ग, तो अगर मैं यहाँ पे अपना नाम डालूंगी तो एरर आ जाएगा राइट, बिकॉज आपने स्ट्रिंग डाल दिया एंड स्ट्रिंग कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू इंटीजर, सो स्ट्रिंग नेम कैन नॉट बी कन्वर्टेड राइट। तो फॉर टू हैंडल दैट हम ट्राई एक्सेप्ट यूज करें, अगर कुछ ऐसा एरर आता है ना, इनवैलिड इनपुट होता है, सो हमारा प्रोग्राम अलग से एरर नहीं देगा, इट विल जस्ट गिव अ यूजर फ्रेंडली एरर कि यू हैव एंटर्ड अ इनवैलिड इनपुट, प्लीज एंटर एन इंटीजर, ओके। सो इसको एक बार चेक करते हैं, एक्सेप्ट एंड रन, एंटर अ नंबर, सी आई एम राइटिंग माई नेम अपूर्वा, ठीक है, इनवैलिड इनपुट प्लीज एंटर एन इंटीजर, हमने गलत इनपुट डाला तो ये पूरा ट्राई ही नहीं कर पाया उसने उस ब्लॉक ऑफ कोड को एंड इट केम टू एक्सेप्ट, सो दिस इज कॉल्ड एरर हैंडलिंग। और जो एरर यहाँ पे इसने एरर व्हाट एवर द एरर केम that was captured here but it showed us this message। अगर हम ये एरर यहाँ पे क्या आया इसको एक बार ट्राई करें, लेट मी राइट माई नेम अगेन अपूर्वा एंड सी, सो ये जो वॉट एवर द एरर, व्हाट वाज द एरर, वैल्यू एरर, जो हमने एरर मतलब हमारा जो हमने जो वैल्यू डाला वो गलत था, तो दैट इज अ वैल्यू एरर राइट, सो दिस एरर बिलोंग्स टू अ क्लास वैल्यू एरर, सो दैट इज गेटिंग हैंडल्ड हियर। सो ये सिंटैक्स है, ये लिखने का तरीका है, ठीक है। नाउ लेट्स चेक द प्रोग्राम। प्रोग्राम में क्या हो रहा है, हम अगर एक इंटीजर डाल रहे हैं वैलिड, उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं, टाइप कास्टिंग ये हमने देखा। फिर इफ एल्स स्टेटमेंट है, पहला कंडीशन क्या है देखते हैं, ये चेक कर रहा है नंबर लेस देन इक्वल टू 1 है क्या, ठीक है। अगर नंबर लेस देन इक्वल टू 1 है, ठीक है, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर राइट, सो और 1 से नीचे कुछ भी है तो प्राइम नंबर नहीं है, सो इट्स जस्ट सेइंग दैट इट इज नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक है। फिर इट्स चेकिंग नंबर इज इक्वल टू 2, नंबर 2 है तो 2 इज अ प्राइम नंबर, तो इट्स वो बता दे रहा है कि ट्रू प्राइम नंबर है। else what it is doing, what is the logic here, it is taking a variable is prime, उसमें उसने 2 assign किया। now it check for factors for from 2 up to the square root of number, so number को हम prime कब बोलते हैं, when the number is divisible by 1 and itself, मतलब वो नंबर खुद से ही divisible होगा तो ही वो प्राइम नंबर है राइट। जैसे कि 7 है, 7 ईदर 1 से डिवाइड होगा या 7 खुद से ही डिवाइड होगा राइट, तो 7 और किसी से डिवाइड नहीं होगा। से सपोज हमें चेक करना है कि 12 प्राइम नंबर है कि नहीं, तो 12 इज डिविजिबल बाय 2 राइट, 12 is divisible by 4, 12 is divisible by 6, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो नंबर है वो कहाँ तक डिविजिबल हो पाएगा, उसके हाफ तक राइट। जैसे कि 12 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हम क्या आ रहा है, 6 आ रहा है राइट। तो आई थिंक इसने वो जो रेंज है वो 2 से स्टार्ट कर रहा है, वो चेक कर रहा है कि हम 2 से लेके नंबर तक भी लेके जा सकते हैं, बट इट विल इंक्रीज द आइट्रेशन। सो ये फैक्टर्स चेक कर रहे हैं 2 एंड स्क्वायर रूट ऑफ नम, मतलब उसके आधे तक चेक कर रहा है। सपोज अगर 100 है, 100 का स्क्वायर रूट क्या है, स्क्वायर रूट है 10, ओके। तो स्क्वायर रूट ऑफ नंबर मतलब वो अच्छा उसके स्क्वायर रूट तक ही चेक कर रहा है, वहां तक डिविजिबल है, मतलब ये दिस इज अ वेरी गुड लॉजिक विच इट हैज रिटन। तो नंबर ऑफ आइट्रेशंस कम करने के लिए तो इसने रेंज लिया है 2 एंड इंटीजर ऑफ नम, इसका स्क्वायर रूट लिया है नंबर एक्सपोनेंशियल ऑफ 0.5, मतलब नंबर टू द पावर 1/2 एंड इट्स एडिंग +1, मतलब +1 क्यों किया पता है ना, क्योंकि
अगर हम यहाँ पे 4 लिखते हैं तो वो 3 तक ही जाता है रेंज, तो अगर हमें 4 तक करना है तो हमें 4 + 1 5 करना पड़ेगा बेसिकली, सो दैट इज व्हाई इट हैज डन +1। एंड इफ इट इज चेकिंग द रिमाइंडर, तो नंबर डिवाइडेड बाय आई, अगर वो 0 आ रहा है तो इस प्राइम को आप फॉल्स करके ब्रेक कर दो, ठीक है। किसी भी पॉइंट पे अगर नंबर डिवाइड हो जा रहा है तो उसका मतलब वो प्राइम नंबर नहीं है। उसी टाइम पे ये जो फ्लैग हमने बनाया था इस प्राइम ट्रू, उसको हम फॉल्स करके हम लूप के बाहर आ रहे हैं ब्रेक करके। एंड हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं इफ इस प्राइम, मतलब अगर वो ट्रू है, इफ इस प्राइम मतलब इफ ट्रू, तो हम प्रिंट कर दे रहे हैं इट्स अ प्राइम नंबर। एंड इफ इस प्राइम इज फॉल्स, वी आर प्रिंटिंग इट्स नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक है। सो इट्स अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड इट्स लेट्स ट्राई, इट्स अ गुड लॉजिक। सो अगर हम 10 के लिए चेक कर रहे हैं, हम एंटर करते हैं 10 इज नॉट अ प्राइम नंबर। लेट्स अगेन चेक, लेट्स एंटर 13, लेट्स अगेन एंटर 13 और एंटर, सो 13 इज अ प्राइम नंबर। ओके, सो इसको हम किसी भी नंबर के लिए चेक कर सकते हैं। अगर हम 100 के लिए कर रहे हैं तो 100 इज नॉट अ प्राइम नंबर। ओके, सो समझ आया, राइट? सो नाउ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द ब्लॉक ऑफ कोड इफ यू आर अ बिगनर। और अब आप ये कोड देख रहे हैं तो आपको समझ आ रहा है कि क्या लिखी हुई चीजें। ओके, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि कैसे ये क्यों लिखा हुआ है। ये फॉर्मेटर स्ट्रिंग है, ये जो नंबर है, हम यहाँ पे नंबर इज अ प्राइम नंबर, जो नंबर हम यहाँ पे एंटर कर रहे हैं, हमें वो नंबर डिस्प्ले कराना है कि दैट नंबर इज अ प्राइम नंबर। जैसे हमने यहाँ पे 99 करके एंटर किया, सो हमें डिस्प्ले कराना है 99 इज नॉट अ प्राइम नंबर और वॉट एवर नंबर। तो इसके लिए हमने यहाँ पे ये कर्ली ब्रेसेस। सो दैट इज वाई अंडरस्टैंडिंग कोड का जो बेसिक्स है थोड़ा आपको आइडिया होना जरूरी है। यू विल नॉट हैव टू राइट दिस, बट अगेन जब अगर आप फ्यूचर में ये कोड देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये क्यों हुआ है, तो इट विल बिकम ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड इट इवन मोर। ओके, सो दैट इज वाई एक बार बेसिक्स जानना जरूरी है। नाउ लेट्स प्रोसीड टू फंक्शन। ओके, लेट्स proceed to functions। अगर कुछ थोड़ा सा गड़बड़ होता है टाइपिंग करने में तो दिस AI अंडरस्टैंड्स इट वेरी वेल। बहुत बार टाइपिंग में बहुत स्पेलिंग गलत हो जाती है, कई बार टाइप करने में ना आगे पीछे हो जाता है कीज, तो AI अंडरस्टैंड it very well. Now let's see function. Okay, what are functions? Function is basically a block of organized reusable code. Okay, it's a block of organized reusable code that is used to perform a single related action। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए हमें कोई एक ऑपरेशन करना है, हमें 2 नंबर हमें दिए हुए हैं, हमें उसको ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे, हमेशा जब भी वो 2 नंबर आएगा विल राइट x प्लस वाई एवरी टाइम। कहीं पे भी हमारे फंक्शन में एडिशन हो रहा है हम हमेशा x प्लस वाई करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम एक जगह एक लॉजिक लिख दिए, एक फंक्शन बना दिए, वो एक समेशन फंक्शन है, वो फंक्शन का काम ही यही है कि अगर हम उसको 2 नंबर देंगे वो 2 नंबर को ऐड करके उसका रिजल्ट हमें देगा, राइट। तो हमें बार बार वो लॉजिक लिखने की जरूरत नहीं है। तो जो समेशन लॉजिक इट्स अ वेरी स्मॉल लॉजिक है, आई एम सेइंग। तो प्रोग्राम में क्या होता है, बड़े बड़े लॉजिक होते हैं और अगर वो लॉजिक हमें वापस से लिखना होगा तो दैट इज रिडंडेंट। तो मान लीजिए हमें कुछ प्रॉब्लम हुआ उस लॉजिक में, तो उस लॉजिक में अगर कुछ चेंज करना है ना, अगर वो लॉजिक आपने 10 जगह प्रोग्राम में लिखी तो आपको 10 बार जाके चेंज करना पड़ेगा एक छोटा सा चीज। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट हम क्या चाहते हैं, हमेशा प्रोग्रामिंग जब हम करते हैं कि हम जो भी हम लॉजिक लिख रहे हैं उसको एक जगह डिफाइन करें एक बार में, तो ताकि आगे कभी कुछ प्रॉब्लम आए वी डोंट हैव टू लुक इनटू द एंटायर प्रोग्राम, ठीक है। एंड क्योंकि थाउजेंड्स ऑफ लाइंस ऑफ कोड होते हैं रियल प्रोग्रामिंग में, तो आप बार बार उसको चेक नहीं कर सकते। आप उसको एक जगह लिखो, कुछ भी चेंज होगा यू विल जस्ट गो टू दैट ब्लॉक, यू विल चेंज दैट एंड इट विल अप्लाई टू द एंटायर प्रोग्राम, राइट। तो दैट इज एन एफिशिएंट वे ऑफ डूइंग एंड फंक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन प्रोग्राम्स। ओके, तो फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ ए रीयूजेबल कोड, ठीक है, एंड इट परफॉर्म्स अ सिंगल रिलेटेड एक्शंस, सो इट हेल्प्स टू अचीव मॉड्यूलैरिटी। ओके, सो अ फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ ऑर्गेनाइज्ड रीयूजेबल कोड that provides better modularity for our application and high degree of code reusing, right? So Python has many built-in functions. हमने बहुत सारे built-in functions देखे, जैसे हमने print देखा, print करने के लिए, ठीक है।
इनपुट देगा। तो ये फंक्शन है, इसका लॉजिक एक जगह डिफाइन हुआ है। अब हमें जब भी यूज करना है वी आर कॉलिंग इट एंड वी आर पासिंग द पैरामीटर्स, राइट। हम उसमें आर्ग्यूमेंट्स पास कर दे रहे हैं। लेंथ फंक्शन है, लेंथ फंक्शन व्हाट इज डज, इट विल टेल द लेंथ ऑफ जो डेटा है हमारा वेरिएबल है उसका ये लेंथ बताता है। टाइप फंक्शन इट विल चेक द डेटा टाइप कि जो वैल्यू है उसका क्या डेटा टाइप है, ये हमने देखा है, राइट। सो फंक्शंस आर यूज्ड फॉर मॉड्यूलरिटी, रीयूजेबिलिटी, रीडेबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी, ऑल दैट। ओके, लेट्स सी द सिंटैक्स। सो पाइथन में डिफाइनिंग फंक्शन यूजिंग द डेफ कीवर्ड, तो फंक्शन डिफाइन करने के लिए वी राइट डेफ। इन मेनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यू विल सी फंक्शन डिफाइन करने के लिए हम फंक्शन ही लिखते हैं, FUNCTION, ठीक है। पर पाइथन में वी आर यूजिंग डेफ। ओके, सो सिंटैक्स कैन चेंज बट द लॉजिक रिमेन सेम, राइट, द लॉजिक विल रिमेन सेम। नाउ सो यहाँ पे डेफ, देन वी राइट अ फंक्शन नेम, हम कोई भी फंक्शन का नाम दे देंगे। जैसे अगर हमें समेशन करना है, जैसे हम दो वैल्यू पास कर रहे हैं उसका सम कैलकुलेट करके हमें रिटर्न करना है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सम फंक्शन। वी कैन राइट सम, समेशन, जो भी हमारा मन करे। सो विल राइट द फंक्शन नेम, विल द पास द पैरामीटर्स। पैरामीटर्स वो वैल्यू है जिस पे ऑपरेशंस परफॉर्म होगा, जो वैल्यू पे हम कुछ करना चाहते हैं। सो विल एक्सेप्ट दिस पैरामीटर्स, विल यूज इट टू परफॉर्म सम ऑपरेशन, विल whatever the result will get will return the result। रिटर्न रिजल्ट मतलब ये फंक्शन अपना काम करने के बाद जो भी इसका आउटपुट है वो ये रिटर्न कर देगा। ओके, सो दैट इज द फंक्शन डेफिनेशन। नाउ लेट्स लुक इनटू सम एग्जांपल्स। सी यहाँ पे हमने सिंपल फंक्शन विद नो आर्ग्यूमेंट्स एंड नो रिटर्न वैल्यू। इट्स जस्ट अ ग्रीटिंग फंक्शन, इसमें कोई रिटर्न वैल्यू नहीं है, इसमें हम कोई पैरामीटर पास नहीं कर रहे हैं। जब भी ये फंक्शन कॉल, ये दो चीज होता है फंक्शन में, एक फंक्शन डेफिनेशन होता है, एक फंक्शन कॉलिंग होता है, ठीक है। एक जगह हम फंक्शन डिफाइन करते हैं, फंक्शन डिफाइनिंग मतलब हमने फंक्शन का स्ट्रक्चर डिफाइन कर दिया, राइट। फिर हमें वो फंक्शन को कॉल भी करना पड़ेगा, राइट। अगर हम इस फंक्शन को यूज करना चाहते हैं कहीं भी तो हमें उस फंक्शन को बुलाना पड़ेगा। तो फंक्शन को बुलाने के लिए हम सिंपली फंक्शन का नाम लिखते हैं एंड देन वी राइट दिस पैरेंथेसिस, ओके, दिस ब्रैकेट्स। नाउ अगर हम सिंपली ऐसे ब्रैकेट्स लिख रहे हैं तो ये फंक्शन को कॉल करेगा एंड इसमें हम कोई पैरामीटर पास नहीं किया, राइट। तो इट विल जस्ट कॉल द फंक्शन एंड इस फंक्शन में क्या हो रहा है, दिस फंक्शन प्रिंट्स अ सिंपल ग्रीटिंग। ये तो कमेंट हो गया, सो दिस विल नॉट गेट एग्जीक्यूटेड एंड देन प्रिंट हेलो देयर, तो हेलो देयर प्रिंट हो जाएगा। फिर सेकंड, यहाँ पे फंक्शन विद वन आर्ग्यूमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सी यहाँ पे हमने फंक्शन में एक आर्ग्यूमेंट लिया और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, दिस फंक्शन ग्रीट्स द पर्सन पास्ड इज एन आर्ग्यूमेंट। हम फंक्शन जो पर्सन है उसका नाम पास कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे ग्रीट नेम एलिस, हम अगर यहाँ पे एलिस लिख रहे हैं तो यहाँ एलिस पास होगा, ठीक है। एंड ये जो एलिस है ये नेम यहाँ पे आ गया, इस फंक्शन के अंदर ये नेम आ गया, तो ये फंक्शन हेलो जब हम नेम बोलेंगे तो ये दिस नोस ये नेम यहाँ से ये ले लेगा एंड इट विल प्रिंट हेलो एलिस। फिर हम वापस से वही फंक्शन को अगर हम बॉब के नाम से बुलाना चाहते हैं वी कैन डू दैट। तो फंक्शन का रीयूजेबिलिटी देख रहे हैं आप, एक बार आपने लिख दिया, आपको बस अलग अलग नाम देने, हर बार ये सेम एग्जीक्यूट करेगा। नाउ एडिंग अ नंबर, एडिंग अ नंबर हम दो नंबर कर सकते हैं, a कॉमा b। तो यहाँ पे हम सम रिजल्ट कैलकुलेट करके a प्लस b रिटर्न रिजल्ट, तो हमें जब ऐड करना है नंबर्स हम कॉल करेंगे ऐड नंबर्स 5 3, तो हमें 5 3 8 हमें मिलेगा। सो इट विल रिटर्न अ रिजल्ट 8। फिर हम वो 8 को हम ये रिजल्ट वन वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं और हम यहाँ पे इसको प्रिंट कर रहे हैं, रिजल्ट ऑफ 5 3 इज 8। ओके, हम एड नंबर्स 10 -2 पे बुला सकते हैं, उसका जो रिजल्ट आएगा उसको हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। सो हम किसी भी नंबर्स पे इसको बार बार बुला सकते हैं, ठीक है, दैट इज द पावर। नाउ function with default arguments, okay, what is this, let's see। This calculates based to the power of exponent, default exponent is 2। okay, default arguments भी हो सकता है, जैसे हमें स्क्वायर कैलकुलेट, तो बेस टू द पावर ऑफ एक्सपोनेंट एंड एक्सपोनेंट 2 लिए, एक्सपोनेंट 2 लिए मतलब 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर, तो हमें स्क्वायर करना है, नंबर का स्क्वायरिंग करना है। तो हमारा एक्सपोनेंट हमने फिक्स कर दिया, एक्सपोनेंट इज 2, ठीक है। तो अभी यहाँ पे दो
पैरामीटर्स है, बेस और एक्सपोनेंट, पर अगर हम यहाँ पे उसको फिक्स करते हैं ना इक्वल टू 2, तो इट्स नॉट मैंडेटरी कि अब हमें 2 ही पैरामीटर यहाँ पे 2 आर्ग्यूमेंट पास करना है इस फंक्शन में। तो अगर हम यहाँ पे 3 लिख रहे हैं ना, तो यहाँ पे एक्सपोनेंट डिफॉल्ट 2 है, तो इट विल यूज द डिफॉल्ट वैल्यू, सो इट विल कैलकुलेट 3 to the power 2 एंड इट विल गिव अस 9। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पे डिफॉल्ट के अलावा अगर हमें कुछ अपना देना है, वी कैन डू दैट, एंड इफ वी आर डूइंग दैट, तो वो जो डिफॉल्ट वाला आर्ग्यूमेंट है ना वो ओवरराइड हो जाता है। तो अगर हम यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू कर दिया, बट स्टिल इफ वी आर पासिंग इट 3, तो अब इसका एक्सपोनेंट का वैल्यू 3 हो जाएगा एंड इट विल कैलकुलेट 2 to the power 3, इट विल ओवरराइड द डिफॉल्ट एक्सपोनेंट। ठीक है, तो हम ऐसे डिफॉल्ट्स भी बना सकते हैं और देन डिफॉल्ट बनाने के बाद हम उसको ओवरराइड भी कर सकते हैं। बिकॉज द थिंग इज फंक्शन में ना जितने यहाँ पे जो हम फंक्शन में फंक्शन डेफिनेशन में जो ये ए एंड बी है ना, दीज आर सिंपली कॉल्ड द पैरामीटर। ठीक है, इसको पैरामीटर बोलते हैं, लेकिन जब हम इसको बुलाते हैं यहाँ पे, जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं ना, एड नंबर्स 5 3, सो दीज आर नथिंग बट द आर्ग्यूमेंट्स। तो ये बोलने का तरीका है, तो यहाँ पे जितने पैरामीटर्स होंगे फंक्शन कॉलिंग के टाइम उतने आर्ग्यूमेंट्स होने चाहिए, राइट। तो दिस शुड मैच, यहाँ पे 2 है तो यहाँ भी 2 होने चाहिए, बट अगर हम यहाँ पे डिफॉल्ट कर देते हैं ना, तो इन दैट केस इट डज नॉट नीड टू मैच, राइट। देन फंक्शन विथ कीबोर्ड आर्ग्यूमेंट्स, ओके, फंक्शन विथ कीबोर्ड आर्ग्यूमेंट्स, इसको चलो 6 7 8 एग्जाम्पल एक बार देखते हैं, इसको एक्सेप्ट एंड रन, ये जो 5 है ना वो देख लेते हैं। देखो, हेलो एलिस बॉब 8 स्क्वायर क्यूब, ठीक है, ये हमने देखा। अब एक बार ये चेक कर लेते हैं, जैसे जो मैंने आप लोगों को बोला था ना, एक बार इसको टेस्ट कर लेते हैं कि आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर्स को मैच करना चाहिए। अब जैसे हमने यहाँ पे 2 ऐड नंबर्स ए बी किया, एंड अब हम इसको सिर्फ 5 से कॉल कर रहे हैं एंड वी आर एग्जीक्यूटिंग इट, तो दिस विल गिव अस एरर। सी व्हाट इज गिविंग, मिसिंग 1 रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट बी, मतलब हमारा एक आर्ग्यूमेंट मिसिंग है। फंक्शन डेफिनेशन में 2 पैरामीटर्स थे, बट हमने एक ही आर्ग्यूमेंट पास किया। अगर हम यहाँ पे b इक्वल टू 2 डिफॉल्ट करके अब हम रन करेंगे, इट विल गिव अस अ रिजल्ट 5 + 3 = 7। दिस इज रॉन्ग आइडियली, बिकॉज हम यहाँ पे 5 प्लस कर रहे हैं और यहाँ b का वैल्यू हमने 2 किया है। सो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, सम इज, ओके, तो सम इज 7। ओके, नाउ आपको समझ आ रहा है, राइट। डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट अगर होगा तो आप चाहें तो यहाँ पे 1 पास कर सकते हैं, और अगर अब हम यहाँ पे 5 + 10 पास करके एग्जीक्यूट करेंगे तो सम वी आर गेटिंग इज 15। ओके, नाउ कमिंग टू द 5th एग्जाम्पल। ठीक है, अभी इसका 5th एग्जाम्पल देखते हैं। ये क्या है, फंक्शन विद कीबोर्ड आर्ग्यूमेंट्स। नो डिस्क्राइब अ पेट विद इट्स टाइप एंड नेम। सो आई हैव अ एनिमल टाइप, नेम दिस। ओके, तो कॉलिंग विद पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स। अब यहाँ पे एनिमल टाइप पेट नेम दिया है, तो डिस्क्राइब पेट। अब हम डिस्क्राइब पेट फंक्शन में हम डॉग और बडी कॉल कर रहे हैं, तो आई हैव अ डॉग नेम्ड बडी, तो हमारा ये प्रिंट होगा, राइट, आई हैव अ डॉग नेम बडी, दिस इज ओके। सेकेंड हम कैसे कर रहे हैं, डिस्क्राइब pet name whiskers, animal type cat। okay, calling with keyboard arguments, order does not। okay, तो अब क्या हो रहा है, जब आप बाय डिफॉल्ट पास करते हो ना, अब जब आप फंक्शन को कॉल करते हो और आप जब यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स पास करते हो, तो बाय डिफॉल्ट डॉग जो है, जो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है, वो फर्स्ट पैरामीटर से ही मैच करेगा। सो डॉग एनिमल टाइप को असाइन होगा, बडी पेट नेम को असाइन होगा। ठीक है, वो पोजीशन, वो ऑर्डर वैसे ही मेंटेन रहेगा। लेकिन अगर आपको एक्सप्लिसिटली लिखना है ना, तो पेट नेम आप इसको एक्सप्लिसिटली लिख सकते हो। तो सेम नेम पेट नेम, यहाँ भी आपने पेट नेम लिखा इक्वल टू विस्कर्स, और एनिमल टाइप इक्वल टू कैट। तो ये ऑर्डर फिर आप चेंज कर सकते हो। तो ये यही बोल रहा है। तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, आई हैव अ कैट नेम्ड विस्कर्स। सो आई हैव अ कैट नेम्ड विस्कर्स। ओके, सो ये ठीक है, दिस इज सिंपल। नाउ कमिंग टू 6th एग्जाम्पल, फंक्शन विथ वेरिएबल लेंथ पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स। ओके, वेरिएबल लेंथ पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स मतलब अब इसने क्या किया, यहाँ पे स्टार आर्ग्स लिख दिया, एंड सम ऑफ ऑल नंबर्स। सम ऑफ ऑल नंबर क्या होगा, सम एन आर्बिट्री नंबर ऑफ पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम सम ऑफ 1 2 3 कर रहे हैं, सम ऑफ ऑल नंबर 1 2 3 पास कर रहे हैं, और हम यहाँ पे स्टार आर्ग्स लिखे हैं। ठीक है, तो अब हम इसको ऐसे कर सकते हैं, इफ वी आर नॉट राइटिंग, अब यहाँ पे 1 2 3 पास कर रहे हैं, यहाँ
हम ABC लिख के ABC प्लस कर सकते थे, लेकिन अगर हम एक ही वैल्यू में सब कुछ लेना चाह रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट अगर हम ऐसे लिखते हैं इट विल बिकम अ टपल। सी इट्स, इस पे हम क्लिक जब कर्सर ले जा रहे हैं तो इट इज शोइंग अ टपल। और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सम ऑफ ऑल नंबर्स में 1 2 3 पास कर रहे हैं, तो ये जो 1 2 3 है ये आर्क्स में चले गया। अब यहाँ पे हम लूप कर रहे हैं फॉर नम इन आर्क्स। नम इन आर्क्स मतलब पहला वाला क्या आ जाएगा 1, टोटल इक्वल टू, टोटल पहले क्या था 0, तो टोटल प्लस नम, तो पहला क्या हो गया 1 हो गया। फिर नम इन आर्क्स 2, टोटल इज इक्वल टू, टोटल कितना हो गया था 1 था, 1 प्लस नम अभी क्या है 2 3, टोटल क्या हो गया 3। फॉर नम इन आर्क्स नम क्या है 3, टोटल क्या था 3, 3 प्लस नम इज 3, दैट इज गिवन 6। सो ये जो टोटल हमारा आ जाएगा रिटर्न टोटल दैट विल बिकम 6। यहाँ पे हम 10 20 30 40, तो वेरिएबल लेंथ पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। सो अगर आपको वेरिएबल लेंथ आपको पता नहीं है कि कितना जाएगा तो आप इसको ऐसे भी स्टार आर्ग्स कर सकते हो। तो अगर आपको पता है कितना है, आपको अगर पता है 4 नंबर का एडिशन करना है तो आप 1 2 3 4 कर सकते हो, लेकिन आपको नहीं पता कि हर बार कितना आएगा तो यू कैन जस्ट राइट स्टार एंड देन 1 वेरिएबल नेम, तो सारे आर्ग्यूमेंट्स को एक ही में ले लेगा, राइट। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहला 6 आ गया एंड लास्ट का 10 20 30 40 100, ठीक है। सो दिस इज वन वेरिएशन। नाउ कमिंग टू द 7th एग्जाम्पल। सो let's see next example, example 7, ठीक है। फंक्शन विथ वेरिएबल लेंथ कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स इसमें लिखा है, ओके। ये मैंने भी नहीं देखा है पहले ये वाला सिंटैक्स, इसको देखते हैं। इसमें प्रिंट इन्फो, यहाँ पे डबल स्टार कोऑक्स के, यहाँ पे सिंगल स्टार था आर्बिट्ररी आर्ग्यूमेंट्स के लिए। ये तो आई न्यू, दिस डबल स्टार आई डोंट नो। लेट्स सी फॉर की वैल्यू इन कोऑर्ग आइटम्स प्रिंट इन्फो, ओके। अच्छा ठीक है, इसका अभी इसका प्रिंट ये कैसे हो रहा है, लेट्स सी। अगर हम इसको नेम चार्ली 87 सिटी न्यूयॉर्क दे रहे हैं तो ये कैसे आ रहा है, नेम चार्ली 87 सिटी न्यूयॉर्क, ओके। इसका मतलब ये की वैल्यू पेयर में आ रहा है, ठीक है, लाइक अ डिक्शनरी, ओके। तो ये इसको एज अ की, इसको एज अ वैल्यू ले रहा है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको करते हैं कॉपी, कोड में जाते हैं, इसको करते हैं पेस्ट, ठीक है। इसको करते हैं प्रिंट। अभी हमें मिल रहा है नेम चार्ली 87 सिटी न्यूयॉर्क। तो अभी लेट्स सी फॉर की वैल्यू इन कोऑर्ग आइटम्स, इट मीन्स इट्स टेकिंग इट एज अ डिक्शनरी। सो इफ वी आर पासिंग इट एज अ की वैल्यू पेयर, तो ये यहाँ पे क्या कर रहा है, इसको लेट्स प्रिंट, यहाँ पे की है ना, की में हम कुछ रिप्लेस कर रहे हैं, लेट्स नॉट रिप्लेस, पहले की वैल्यू प्रिंट करते हैं नॉर्मल। तो की वैल्यू प्रिंट किया तो भी हमें यही मिला। तो ये जस्ट क्या कर रहा है, समझ आ रहा है ना, ये की वैल्यू के हिसाब से ले रहा है। जैसे अगर आपको नहीं पता कि आपको कितने सारे कितने आर्ग्यूमेंट्स आप यहाँ पे पास कर रहे हैं, तो उस केस में इफ यू आर पासिंग इट एज अ डबल स्टार, मतलब ये की वैल्यू के लिए आप इसको एज अ 2 स्टार कर सकते हैं, तो ये इसको एज अ की वैल्यू रीड करेगा, ठीक है। ये तो समझ आ रहा है, ये की वैल्यू एज इट इज, ठीक है। इसको देखते हैं, पहले यहाँ पे क्या लिखा था, ये की डॉट रिप्लेस, की में अगर अंडरस्कोर है उसको ब्लैंक से रिप्लेस करके एंड देन टाइटल, टाइटल फंक्शन उसमें लगा रहा है। तो आई थिंक टाइटल फंक्शन तो नेम चेक चार्ली एंड लेट्स प्रिंट टाइटल फर्स्ट केस के लिए, ओके। व्हाट इज डूइंग, अगर यहाँ पे की में अगर अंडरस्कोर है ना, तो वो अंडरस्कोर को थोड़ा सा ये आउटपुट को प्रेजेंटेबल बनाने के लिए, अगर अंडरस्कोर आ रहा है तो उसको वो ब्लैंक स्पेस में कन्वर्ट कर रहा है। एंड टाइटल डॉट टाइटल, मतलब ये जो हर वर्ड है ना, हर वर्ड का टाइटल मतलब क्या, आपका जो फर्स्ट लेटर है ना उसको वो कैपिटल कर देगा। तो थोड़ा सा इसको प्रेजेंटेबल फॉर्मेट में लाने के लिए, जैसे कि हम कई बार जब हमने देखा था ना, जैसे अगर हम मान लीजिए फर्स्ट नेम लास्ट नेम हम ऐसे लिखते हैं, तो थोड़ा सा उसको थोड़ा प्रेजेंटेबल फॉर्मेट में, यू डोंट नो ना कि आप क्या वैल्यू पास कर रहे हो, राइट। तो दिस इज फॉर दैट। एक बार इसको एक बार और देख लेंगे, कॉग्स ऊपर मेंशन्ड नहीं है,
ठीक है, एक बार इसको एक बार चेक करते हैं, पहले एक बार लास्ट वाला कंप्लीट करते हैं फिर इसको चेक करते हैं। फंक्शन विद डॉग स्ट्रिंग बेस्ट प्रैक्टिस, जो ये ट्रिपल कोट्स में इसका यहाँ पे दिया है कि क्या ये फंक्शन क्या कर रहा है, कैलकुलेट कर रहा है एरिया, ये आर्ग्यूमेंट्स है, ये क्या रिटर्न करता है। तो ये जस्ट एक सपोर्ट स्टेटमेंट है, बता रहा है फंक्शन क्या कर रहा है, इट्स अ कमेंट, ठीक है, मल्टीपल लाइन कमेंट एंड दिस इज सिंपल। ये फंक्शन रिटर्न सिंपल क्या कर रहा है, लेंथ इनटू बिट रिटर्न कर रहा है। अब हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं एक्सेसिंग द डॉग स्ट्रिंग कैलकुलेट एरिया डॉट डॉग और कैलकुलेट एरिया 5 10, ये तो सिंपल है, 5 10 पे कैलकुलेट करें मतलब 5 यहाँ जाएगा 10 यहाँ जाएगा, 5 इंटू 10 हमें 50 आ जाएगा। यहाँ पे कैलकुलेट एरिया डॉट डॉग कर रहे हैं एंड यहाँ पे मैंने डॉग देखा था, व्हाट इज डॉग हियर, सी डॉग स्ट्रिंग इज ऑप्शनल बट रिकमेंडेड, इट्स अ स्ट्रिंग लिटरल यूज्ड टू एक्सप्लेन द फंक्शंस पर्पस। ये फंक्शन का पर्पस बताता है, ठीक है, इट्स एनक्लोज्ड इन ट्रिपल कोट्स एंड इट्स प्लेस्ड इमीडिएटली आफ्टर द फंक्शन हेडर। तो फंक्शन हेडर के बाद अगर हमें फंक्शन का पर्पस डिफाइन करना है तो हम ट्रिपल कोट्स में एज अ मल्टी लाइन कमेंट इसको जस्ट फंक्शन के बाद यहाँ डिफाइन कर सकते हैं एंड इफ वी सी द आउटपुट इट इज यूज्ड टू ओके। अगर हमें फिर बाद में उसके फंक्शन का पर्पस हमें एक्सेस करना है सो वी कैन एक्सेस इट यूजिंग दिस डॉग स्ट्रिंग, ठीक है, इट्स नथिंग बट दैट। तो अगर हम फंक्शन का पर्पस डिफाइन करते हैं और बाद में हमें जानना है फंक्शन किस पर्पस के लिए, सो वी कैन कॉल द फंक्शन नेम डॉट डबल अंडरस्कोर डॉग डबल अंडरस्कोर, सी ये उसको इट इज यूज टू कॉल दिस। ये जो फंक्शन का डेफिनेशन है पूरा इसको कॉल करने के लिए, तो हमने पहले फंक्शन का डेफिनेशन जाना एंड देन वी कॉल द फंक्शन विद दिस टू वैल्यूज। सो दिस इज सिंपल, ओके। सो होप आपको फंक्शंस समझ आया, राइट। सो फंक्शंस का यूज केस समझ आया, हम फंक्शंस क्यों करते हैं, फंक्शंस का थोड़ा सा आपको वेरिएशन समझ आया, जैसे डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स ले सकते हैं हम एंड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स ले सकते हैं एंड मल्टीपल वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट्स के लिए हम ऐसे कर सकते हैं। एंड एक बार ये क्वॉक्स चेक कर लेते हैं, फंक्शन विथ वेरिएबल लेंथ कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स explain me the purpose of, okay, एक बार ये चेक कर लेते हैं बिफोर मूविंग अहेड। लेट्स सी, Cogs is short for keyword arguments. Feature in function Pythons allow you to pass a variable name of keyboard arguments to a function. Okay, when you use Cogs as a parameter, it collects all keyword arguments that are not explicitly defined as parameters and function into a dictionary. Okay, ये तो हमने देख लिया, ये as a it taking it as a dictionary. Keys of this dictionary are the argument name and the values are the corresponding values. Okay. Create a function जो call to update a user profile dictionary combining cogs in one function। एक बार ये वाला एग्जांपल चेक कर लेते हैं and then we'll move ahead, okay। okay so ठीक है, तो आप इट्स वेरी प्रिटी क्लियर ना, जैसे इसको हम यूजर प्रोफाइल अगर हम बना रहे हैं उस केसेस में हम इसको यूज कर सकते हैं। सी तो अगर हम किसी यूजर का प्रोफाइल बना रहे हैं तो देयर कैन बी मल्टीपल की वैल्यूज, राइट। किसी यूजर का नेम, एज, सिटी, ईमेल, कोई अपना फोन नंबर देगा, सो वी डोंट नो एंड यूजर प्रोफाइल कम्स इन की वैल्यू पेयर। सो की वैल्यू पेयर के लिए हम एक यूजर प्रोफाइल का हमने प्रोफाइल एंड कॉग्स कर लिया। सो इनिशियल प्रोफाइल एंड अपडेटिंग प्रोफाइल विद इनिशियल प्रोफाइल है मल्टीपल, आगे जाके जब ये इनिशियल यूजर प्रोफाइल था एग्जिस्टिंग प्रोफाइल, अपडेट यूजर प्रोफाइल में हम एज ऐड कर रहे हैं, ऑक्यूपेशन, फोन ऐड कर रहे हैं, सो दैट वी कैन हैंडल इट विथ क्वॉग्स, हमें पता नहीं। सो फॉर की वैल्यू इन क्वॉग आइटम्स इट्स अ डिक्शनरी, तो हर आइटम को कॉल करने के लिए वी आर कॉलिंग इट एज आइटम्स एंड क्वॉग्स बेसिकली दिस इज अ वेरिएबल नेम, ओके। आपको ये समझ आ रहा है ना, इट कैन बी एनीथिंग, वी आर राइटिंग इट एज अ क्वॉग्स क्योंकि ये तरीका है, मतलब इट्स अ कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स का शॉर्ट फॉर्म है। इसको आप एक्स भी कर सकते हो, राइट, इसको एक्स वाई जेड कुछ भी कर सकते हो, इट्स अ कीवर्ड, इट्स जस्ट अ नेम, ठीक है। एंड प्रिंट कर रहे हैं हम की वैल्यू एंड प्रोफाइल ऑफ की इट्स इक्वल टू वैल्यू अनदर प्रोफाइल। इसको अपडेट करके रन करके देख लेते हैं। इनिशियल प्रोफाइल देखो, नेम, एज, सिटी, ईमेल आ गया। अपडेटिंग प्रोफाइल विद एज, ऑक्यूपेशन, फोन, तो हम यहाँ पे अपडेटिंग प्रोफाइल विथ
कहीं पे कर रहे थे, अपडेटिंग प्रोफाइल विथ फॉर अ की वैल्यू पेयर, हम इस सब से अपडेट कर रहे हैं। एंड अपडेट करने के बाद हमने अपडेट कैसे किया, प्रोफाइल में हमने ऐड करते गए ना, हम अपना जो पहला इनिशियल प्रोफाइल था, प्रोफाइल में की ऐड किया, उसके अगेंस्ट हमने वैल्यू डाल दिया और अपडेटेड प्रोफाइल से हमने एग्जीक्यूट कर दिया। ओके, तो थोड़ा सा सिंपल है, इसके लिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बट एक बार देखने से समझ आएगा। आप अभी जैसे जैसे आगे बढ़ोगे ना, और कॉन्सेप्ट्स हम देखेंगे, जब हम डिक्शनरीज देखेंगे तो आपको थोड़ा सा और रिलेट होगा। एक बार मैं आपको बता देती हूँ कि इट्स नॉट मैंडेटरी टू राइट कॉक्स, जैसे आपने पहले देखा। तो अगर हम यहाँ पे एक्स करें और यहाँ पे भी एक्स करें, इट्स जस्ट अ वेरिएबल नेम, राइट, तो इट्स कमिंग, राइट, ठीक है। तो ये वेरिएबल नेम है, इट्स शॉर्ट फॉर्म फॉर कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। सो let's proceed ahead. Hope functions are also clear. So we have completed till functions, but 10 topic हमने कर लिया है, 10 topic हमें और करना है। Now we'll do data structures. Let's set tuple dictionary. Okay, so let's proceed with list और list operations एक साथ देख लेते हैं, ठीक है। list देखते हैं, list का operations भी देख लेते हैं, उसके बाद we'll go with set tuple dictionary, ठीक है। तो थोड़ा easy पड़ेगा। लिस्ट ऑपरेशंस, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन भी देख सकते हैं। लेट्स सी, लेट्स स्टार्ट लिस्ट एंड लिस्ट ऑपरेशंस। ओके, it's taking some time. I hope it's recording. 1 hour से ऊपर हो गया, ठीक है। We'll wrap it up soon in next 30-40 minutes. Let's see, ठीक है। Now list in Python. Okay, list is the one of the most versatile and commonly used data structures in Python. It's a ordered of collection items, meaning the items have a defined order, right, and the order will not change. But the lists are mutable, which means you can change their content after they have been created. After creation you can change the content. Mutable means we saw, right, we can add, remove or modify items, right. What are ordered? Ordered means the items in a list have a defined order and the order will not change. New items are typically added to the end of the list. Okay, it has a defined order. So suppose अगर हमारा list है 1 2 3 4 and if but the lists are allowed to change. If we are adding something to the list, so that will be added to the end of the list by default. Okay, अगर हम उसमें कुछ add कर रहे हैं तो एक ordered में आता है, वो random कहीं भी नहीं जाएगा. So it's a ordered data structure. ठीक है. You can modify a list after it's created. This includes adding a new items. List can contain item with same value. List allows duplicate. So we can have, like if we have list of numbers, so we can have 1 1 2 2 3 3 4 4 like that. Okay, and lists are heterogeneous, meaning a single list can contain different data types. So हम सब कुछ रख सकते हैं. We can have 1 2 3 4. We can have ABCD. We can have 1.2 1.3. We can have a list inside one list. So we can have list of 1 2. We can have list of 3 4 5 6 like that. So हम कुछ भी रख सकते हैं. Lists are heterogeneous. Lists are indexed means each list in a item has an index. So lists are indexed. Okay, तो हमारे पास list में जो items हैं, if we have a list of numbers 1 2 3 4 5, it is starting from the position 0. So अगर 1 2 3 4 5 है तो 1 का position 0 है, 2 का position 1 है, and likewise, right. And list has a dynamic size, it can grow and shrink as needed. Okay, so lists are fundamental for storing collections of data, iterations, and performing various sequence based operations. So list is one of the most popular data structure you will encounter. Okay, so हम list में बहुत काम करेंगे. So let's see some examples. और list हम create करते हैं ना square brackets use करके, and they are separated by commas, right. So my list of item 1 2 3, we can create a list like this. We can create an empty list. Okay, list of mixed types we can create. ठीक है. Now accessing the items, we saw that list starts from index 0. तो अगर हमें apple चाहिए, only apple, so first item is my list of 0. If we are writing my list of 0, it gives apple. वो apple को वो as a first item. First item is the variable name. First item में store कर रहा है. My list of -1. Okay, अभी see इसमें क्या रहता है, can I write क्या, क्लोज मार्कडाउन एडिटर. ओके, अच्छा ठीक है, उसके लिए नहीं है.
आई थिंक इसमें राइटिंग के लिए तो कुछ नहीं होगा. ओके ठीक है. आई एम नॉट इन अ टैब बट ओके आई विल टेल. लिस्ट में क्या रहता है ना, इंडेक्सिंग कैसे होती है. जैसे आप अगर फॉरवर्ड इंडेक्सिंग देखोगे, इट स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो. सो दिस इज जीरो, दिस इज इंडेक्स वन, दिस इज इंडेक्स टू. ठीक है. एंड बैकवर्ड इंडेक्सिंग स्टार्ट्स फ्रॉम माइनस वन, नेगेटिव इंडेक्सिंग. तो इफ यू आर डूइंग माइनस वन ना, तो नेगेटिव इंडेक्सिंग पीछे से आती है. अगर हम पीछे से पोजिशन देख रहे हैं, दिस इज माइनस वन, दिस इज माइनस टू, दिस इज माइनस थ्री. ओके. सो इसको इसका देख लेंगे. और नाउ द थर्ड इज स्लाइसिंग लिस्ट. ओके, स्लाइसिंग लिस्ट क्या होता है, जैसे एक्सट्रैक्ट अ पोजीशन. अगर आपको लिस्ट में से सबसेट निकालना है, एक वैल्यू निकालना है, तो आप उसका इंडेक्स दे दोगे. लेकिन आपको उसमें से दो तीन वैल्यू एक साथ निकालनी है, तो यू कैन गिव अ रेंज, राइट. जैसे हमने लूप में देखा था, वी हैव अ रेंज, तो वैसे ही वी कैन गिव अ रेंज. अगर हम 1:4 दे रहे हैं ना, तो ये है 0, ये है 1. तो 1 से स्टार्ट होगा, 1 देन 2 देन 3, बट 4 तक नहीं जाएगा. 4 - 1, जैसे लूप का लॉजिक चलता था ना, वैसे यहाँ पे भी लॉजिक है. तो वी विल गेट 20 30 40. ठीक है. अगर हम स्टार्टिंग इंडेक्स नहीं दे रहे हैं, तो वो 0 से ही लेगा. तो दिस विल गिव 10 20 30. तो इट विल गिव 0 1 2. ठीक है. हम एंड इंडेक्स नहीं दे रहे हैं, तो लास्ट तक लेगा. तो अगर हम 2:2 ये लिख रहे हैं, तो 0 1 2 30 से 40 50 60 सब देगा. लिस्ट का जो ये स्लाइसिंग का है ना, इसमें 3 रहता है, स्टार्ट, एंड और स्टेप. तो अगर हम स्टेप नहीं दे रहे हैं, बाय डिफॉल्ट 1, मतलब एक ही पोजीशन हमें काउंट करना है, 1 1 का स्टेप ले रहे हैं. यहाँ पे देखो, हमने स्टार्टिंग नहीं दिया, एंडिंग नहीं दिया, मतलब स्टार्ट 0 से होगा, एंडिंग नहीं दिया मतलब पूरा लास्ट तक जाएगा. लेकिन हमने स्टेप काउंट दिया है 2, मतलब हमें हर दूसरा एलिमेंट चाहिए. मतलब 10 आएगा, उसके बाद एक स्किप हो जाएगा. हम एक स्किप कर रहे हैं, हम 2 स्टेप ले रहे हैं. ठीक है. तो बाय डिफॉल्ट एक स्टेप होता है, हम 2 स्टेप ले रहे हैं. 10 के बाद 30 आएगा, 30 के बाद 50 आएगा, 50 के बाद एवरी सेकेंड आइटम. ठीक है. और रिवर्स लिस्ट अगर लेना है, अगर हमें लिस्ट रिवर्स करनी है, तो हमने स्टार्ट डिफाइन नहीं किया, एंड डिफाइन नहीं किया. लेकिन अगर हम -1 दे रहे हैं, मतलब हम रिवर्सिंग चाह रहे हैं, हम बैक साइड से एक एक वैल्यू चाह रहे हैं. सो दैट इज 60 50 40 30 20 10. ओके. सो दिस इज -1, मतलब बैक से कैलकुलेट करेगा रिवर्स लिस्ट. सो दिस इज अ सिंटेक्स फॉर रिवर्सिंग द लिस्ट. सिंपली इसको आप लिख सकते हो कोलन कोलन एंड -1. ओके. नाउ आप समझे ना -1 क्यों हुआ. बिकॉज देखो, हम स्टार्ट 0 से कर रहे हैं. ठीक है. हमें एंड तक जाना है. बट अब हम अगर स्टेप 2 लेंगे, तो पॉजिटिव स्टेप पीछे जाएगा ना. स्टेप 1, अगर यहाँ पे हम 1 लेते हैं, तो क्या आता है, 10 20 30 40 60. 2 आता तो 10 30 50. 3 लेते तो 10 40, दो स्किप होता है. हम -1 लिए, मतलब हम लिस्ट को पीछे जा रहे हैं. -1 मतलब हम एक पीछे जा रहे हैं. तो हमारा पहला वैल्यू क्या आ जाएगा, 60, फिर -1 50, फिर 40, फिर 30, फिर 20, फिर 10. ठीक है. अगर हम -2 लेते तो 50 30 10. समझे ना. मतलब माइनस में हम बैक साइड जाते हैं, प्लस में हम आगे जाते हैं. ठीक है. नाउ मॉडिफाइंग लिस्ट. सिंस लिस्ट आर म्यूटेबल, यू कैन चेंज इंडिविजुअल आइटम. सो अभी जैसे यहाँ पे एप्पल बनाना चेरी था, तो 0 1 फर्स्ट पोजीशन में क्या था, बनाना था. लेकिन अगर हम करते हैं माई लिस्ट ऑफ 1 इक्वल टू ऑरेंज, तो हमने चेंज कर दिया. हमने फर्स्ट पोजीशन को बनाना से अब ऑरेंज कर दिया. तो अभी जो हमारा नया लिस्ट है, दैट इज एप्पल, ऑरेंज एंड चेरी. ओके. एंड कॉमन लिस्ट मेथड्स. कॉमन लिस्ट मेथड्स, ठीक है. तो ये तो था कि हम कैसे क्रिएट कर रहे हैं, कैसे एक्सेस कर रहे हैं, कैसे स्लाइस कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं. एंड हमारे पास ना कुछ मेथड्स होते हैं, बाय प्री बिल्ट, मतलब प्री डिफाइंड मेथड्स हैं, हम यूज कर सकते हैं. सो एक बार जस्ट रीड कर लेते हैं, बाद में आप कभी भी एनकाउंटर करोगे तो बहुत easy to understand है. append मतलब adding an item to the end of the list. insert means inserting at a particular position. will give the index and leave the item. so it inserts an item at the specific index. remove item, remove the first occurrence of a specified item. so if I अगर हमारे लिस्ट में एप्पल, बनाना, चेरी, एप्पल है, आई एम सेइंग रिमूव एप्पल, तो जो पहला एप्पल है वो उसको हटा देगा, तो हमारे लिस्ट में बचेगा बनाना, चेरी, एप्पल. ठीक है. pop index removes and turns the index at a specified index or the last item if no index is given. so if we are doing pop, push and pop, okay, so push
जो होता है ना, जैसे पुश एंड पॉप डेटा स्ट्रक्चर में मेथड्स होते हैं, इसमें नहीं है, लिस्ट में पुश मेथड नहीं है, लेकिन पुश क्या करता है, इट विल पुश, जैसे इंसर्ट और अपेंड है ना, वैसे पुश भी रहता है जो पुश कर देता है, इसमें नहीं है। एंड पॉप क्या करता है, पॉप आइटम निकालता है एंड यूजुअली लास्ट आइटम निकालता है लिस्ट से। तो अगर हम इंडेक्स नहीं देंगे तो ये लास्ट आइटम निकाल देगा। तो एप्पल बनाना चेरी में इफ वी आर डूइंग पॉप, इट विल रिमूव चेरी, इट विल गिव एप्पल बनाना। पर अगर हम इंडेक्स देते हैं ना, अगर हम पॉप 0 देंगे तो ये इट विल रिमूव एप्पल फ्रॉम दिस लिस्ट। ओके, क्लियर, सारे आइटम रिमूव कर देगा। कॉपी विल रिटर्न अ कॉपी ऑफ द लिस्ट। काउंट रिटर्न्स अ नंबर ऑफ आइटम्स स्पेसिफाइड, नंबर ऑफ टाइम्स स्पेसिफाइड आइटम्स अपीयर्स। तो हम काउंट ऑफ एंड ये भी दे सकते हैं, जैसे हम काउंट ऑफ एप्पल देंगे तो इट विल कम 1, एक ही बार एप्पल आ रहा है, ठीक है। एक्सटेंड आइटरेबल एड्स द एलिमेंट्स ऑफ एन आइटरेबल टू द एंड ऑफ द करेंट लिस्ट। ओके, लाइक अनदर लिस्ट। तो हम लिस्ट को एक्सटेंड कर सकते हैं, जैसे हमारे पास 2 लिस्ट है 1 2 3 4 5 6। तो अगर हमें 1 2 3 में ही 4 5 6 ऐड करना है तो विल डू 1 2 3 एक्सटेंड 3 5 6, तो वो एक ही लिस्ट बन जाएगा, ठीक है। तो एड्स द एलिमेंट्स ऑफ एन आइटरेबल टू द एंड ऑफ द करेंट लिस्ट, ठीक है। तो इट्स दैट, एंड इट्स नॉट दैट कि आप खाली एक लिस्ट को लिस्ट में आइटरेबल लिखा है ना, आइटरेबल मतलब कोई भी सीक्वेंस ले सकते हो। नाउ इंडेक्स रिटर्न्स द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट ऑकरेंस। इंडेक्स रिवर्स, डायरेक्टली रिवर्स कर देगा। सॉर्ट द लिस्ट अल्फाबेटिकली और न्यूमेरिकली। लेंथ रिटर्न्स द नंबर ऑफ आइटम्स। तो ये बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शंस हैं, जब हम लिस्ट में काम करेंगे ये फंक्शंस हमें बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है। हमें ओके, इसको एक्सेप्ट एंड रन कर लेते हैं, एग्जांपल्स देख लेते हैं, फटाफट देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसमें ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, वेरी सिंपल। क्रिएटिंग लिस्ट हमने देखा, नंबर, स्ट्रिंग, मिक्स स्ट्रिंग, एम्प्टी लिस्ट, ठीक है। अब हम लिस्ट, सारे लिस्ट को प्रिंट कर रहे हैं। नाउ लेंथ ऑफ लिस्ट 1, लेंथ ऑफ लिस्ट 1 कितना होगा, 1 2 3 4 5 5, राइट। तो यहाँ पे देख लेते हैं, लेंथ ऑफ लिस्ट 1 इज 5। लेंथ फंक्शन हमें लिस्ट का लेंथ दे देगा। नाउ एक्सेसिंग एन एलिमेंट 0, लिस्ट 1 का 0, लिस्ट 1 का 0 तो 1 हो गया। लिस्ट 2 का -1, लिस्ट 2 का -1 ब्लू हो गया। लिस्ट 3 का 1, लिस्ट 3 का 1 इज एप्पल, ठीक है। स्लाइसिंग लिस्ट, लिस्ट ऑफ 1:4, ये तो हमने सारे एग्जांपल देख लिए, ठीक है। ये -1 विल गिव द लिस्ट रिवर्स, ठीक है। मॉडिफाइंग द लिस्ट, मॉडिफाइंग द लिस्ट मतलब कलर्स ये था, नाउ कलर्स ऑफ 1 को येलो कर देंगे तो इट विल चेंज, रेड ग्रीन ब्लू को रेड येलो ब्लू हो जाएगा। नाउ एडिंग एलिमेंट्स भी हमने देखा, अपेंड, अगर एप्पल बनाना है अपेंड चेरी करेंगे तो इट विल अपेंड टू द लास्ट, लेकिन अगर हमें किसी स्पेसिफिक पोजीशन में करना है विल गिव द इंडेक्स, इंसर्ट 1 ऑरेंज। तो अब एप्पल बनाना चेरी में 1 पोजीशन में ऑरेंज आ गया, एप्पल ऑरेंज बनाना चेरी, इट हैज बिकम। नाउ अगर अब देखो ये जो एक्सटेंड का था ना, मैं ये बोल रही थी, अब जैसे ग्रेप फ्रूट्स का एक लिस्ट है, अब इस लिस्ट में हमें ये आइटम्स ऐड करने हैं, तो वी कैन राइट फ्रूट एक्सटेंड मोर फ्रूट्स। तो हमें एक कंटिन्यू लिस्ट मिल जाएगी। सो एक ही लिस्ट के अंदर वो ऐड हो जाएंगे, ठीक है। सो ये है। नाउ और देख लेते हैं, रिमूविंग के लिए रिमूव बनाना, रिमूव हम बनाना करेंगे तो रिमूव बाय वैल्यू, वैल्यू से हटा देगा। पॉप करेंगे तो पॉप इज बाय द इंडेक्स, तो ये लास्ट आइटम हटा देता है, ठीक है। और हम पॉप में इंडेक्स नंबर दे सकते हैं, तो दो रिमूविंग के लिए 2 है, रिमूव बाय वैल्यू एंड पॉप इज थ्रू इंडेक्स। ओके, नाउ लिस्ट इन्फॉर्मेशन, नंबर्स डॉट काउंट, अगर नंबर्स में हमें काउंटिंग करनी है तो नंबर्स डॉट काउंट, इसका सिंटेक्स ऐसे रहता है 5, तो 5 कितने बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है। नंबर्स डॉट इंडेक्स 8 का हमें इंडेक्स जानना है तो 0 1 2 3 थर्ड है इसका इंडेक्स। सॉर्टिंग एंड रिवर्सिंग हम डायरेक्ट कर सकते हैं, नंबर्स टू सॉर्ट, तो ये सॉर्ट कर देगा असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। रिवर्स के लिए हम रिवर्स कर सकते हैं तो ये रिवर्स कर देगा, ठीक है। अनसॉर्टेड लिस्ट, नाउ अनसॉर्टेड लिस्ट है, इसको सॉर्टेड करने के लिए सॉर्टेड ऑफ अनसॉर्टेड लिस्ट, सॉर्टेड इज अ फंक्शन, सॉर्ट फंक्शन था ना, व्हाट इज द सॉर्टेड कॉपी, एक मिनट एक बार देख लेते हैं। सॉर्ट था राइट, सॉर्ट इज यूज्ड टू रिवर्स, यहाँ पे सॉर्टेड क्यों लिखा हुआ है, एक मिनट देखते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं क्योंकि इतना सारा कोड लिखा हुआ है ना, तो इसको कॉपी करते हैं। एक मिनट, कोड में जाते हैं, पेस्ट करते हैं एंड लेट्स एग्जीक्यूट।
ये क्या कर रहा है, ओरिजिनल लिस्ट था 3142, सॉर्टेड ऑफ अनसॉर्टेड लिस्ट, ओरिजिनल सॉर्टेड कॉपी हो गया 1234। ओके, और इसको हम अगर सॉर्ट करके करें तो नेम एरर। ओके, नेम एरर क्या बता रहा है, नेम सॉर्ट इज नॉट डिफाइंड, नेम सॉर्ट इज नॉट डिफाइंड। यहाँ पे तो इसने सॉर्ट लिया था, सॉर्ट इज द फंक्शन नेम और सॉर्टेड इज द फंक्शन नेम। एक बार चेक कर लेते हैं। ओके 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 ओके, देयर इज टू वेज ऑफ कॉलिंग। ओके, तो आप या तो इसको ऐसे बुला सकते हो, सॉर्टेड ऑफ अनसॉर्टेड लिस्ट और sorted copy to, and you can call it as unsorted list डॉट सॉर्ट। तो दो तरीके से आप सॉर्ट फंक्शन बुला सकते हो, ठीक है। एंड यहाँ पे सॉर्टेड कॉपी है एंड इसको कॉपी करके सॉर्टेड कॉपी टू, सॉर्टेड कॉपी टू। लेट्स एग्जीक्यूट। सिंटैक्स एरर, यहाँ पे क्या सिंटैक्स एरर आ गया, अरे यार ये क्या हुआ, इसको क्लोज करो एंड इसको डबल कोट्स देके क्लोज करो, ठीक है ठीक है। सो ओके, इसने सॉर्ट नहीं किया, इसने क्यों नहीं सॉर्ट किया, अनसॉर्टेड लिस्ट, इसको हमने सॉर्ट कर दिया सॉर्टेड कॉपी में, तो ये तो आ रहा है सॉर्टेड कॉपी टू नन आ रहा है, सॉर्टेड कॉपी टू नन क्यों आ रहा है, यहाँ पे तो सॉर्ट आपने ऐसे ही किया है। लेट्स चेक, numbers to sort dot sort, sorts in place ascending। ओके 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 ओके, आप समझे ना, ये अनसॉर्टेड लिस्ट डॉट सॉर्ट जो है ये इन प्लेस सॉर्ट करता है, मतलब ये अनसॉर्टेड कॉपी में नहीं स्टोर करेगा। अभी अगर हम यहाँ पे ओरिजिनल लिस्ट फिर से प्रिंट करते हैं ना, now print the original list again, and print what's the original list ही था क्या, unsorted list, ठीक है। इसको अगर अब हम प्रिंट करते हैं सी, ओके अभी आपको समझ आया। ओरिजिनल लिस्ट जो था, अब देखो ओरिजिनल लिस्ट जो था क्या हो रहा है, ओरिजिनल लिस्ट ये जो सॉर्ट है ना ये इन प्लेस सॉर्ट करता है, मतलब ये लिस्ट को ही सॉर्ट कर देगा, ठीक है। तो ये जब हमने ये अनसॉर्टेड लिस्ट किया ना, तो हम जब ओरिजिनल लिस्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे भी हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है, राइट। इसको अगर हम कमेंट काउट करते हैं हैश करके, इसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो ओरिजिनल लिस्ट 1342 है, सॉर्टेड कॉपी आपका 1234 है, ये जो सॉर्टेड करके आपने कॉपी बनाया ये कॉपी बनता है, और ओरिजिनल लिस्ट यहाँ पे भी 3142 है। लेकिन अगर हम इसको यहाँ पे अनसॉर्टेड लिस्ट और सॉर्ट करते हैं ना, ये लिस्ट ही सॉर्ट हो जाती है, तो ये जब लिस्ट को आप जब भी प्रिंट करोगे ना ये आपको सॉर्टेड ही दिखाएगा 1234 1234। तो ये समझ आया ना, सॉर्टेड आपको सॉर्टेड कॉपी, आपको कॉपी बनाना है ना, आपको ओरिजिनल लिस्ट को नहीं मॉडिफाई करना है तो यूज सॉर्टेड, ओरिजिनल लिस्ट को मॉडिफाई करना है एज इट इज तो सॉर्ट, ठीक है। और वो ओरिजिनल लिस्ट ही मॉडिफाई होगी, अनसॉर्टेड लिस्ट और सॉर्ट करके इसको हम सॉर्टेड कॉपी 2 में डाल रहे हैं ना, तो ये नहीं हो रहा है, सॉर्टेड कॉपी 2 को नन बता रहा है, बट क्योंकि यहाँ पे ये इन प्लेस सॉर्टिंग कर रहा है, सॉर्ट करके वो असाइन नहीं करता है। लेकिन अगर हम इसको बाद में अनसॉर्टेड लिस्ट को सॉर्टेड कॉपी 2 में डाल के एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो सॉर्टेड कॉपी 2 देखो अब यहाँ पे कॉपी बन रही है 1234, इनिशियली नन बन रहा था, राइट, क्योंकि वो उस पॉइंट पे सिर्फ सॉर्ट कर रहा था, उस पॉइंट पे असाइन नहीं कर रहा था। असाइन करने के लिए हमें वापस से एक बार और लिखना पड़ा, ठीक है। तो ये क्लियर है। तो कई बार पता है आप जब देखते हो ना, तो ऐसे इसलिए एग्जाम्पल्स देखने से समझ आता है। अब मुझे भी ये याद नहीं था सॉर्टेड और सॉर्ट वाला। नाउ लिस्ट कॉन्कैटिनेशन, अब दो लिस्ट है 1 2 3 4, दोनों को ऐड कर रहे हैं, तो ये 1 2 3 4 एक लिस्ट बन गया, हम सिंपली ऐड कर सकते हैं, तो लिस्ट का आइटम्स कंबाइन हो जाएगा। दिस इज वन वे ऑफ कंबाइनिंग, और एक्सटेंड एक और वे था कंबाइनिंग। हम इसको ऐसे भी कर सकते थे, इसको कॉपी करके एक्सटेंड फंक्शन यूज करके भी देख लेते हैं, ठीक है। इसको कॉपी किया, एक तो ये तरीका है, अदरवाइज आप इसको लिख सकते हैं, सी लिस्ट बनाते हैं एक कंबाइंड लिस्ट, इसको कर सकते हैं लिस्ट ए डॉट एक्सटेंड फंक्शन देखा था ना हमने, एक्सटेंड फ्रॉम लिस्ट बी,
ठीक है, और इसको हम प्रिंट भी कर देते हैं। हम सिंपली प्रिंट करते हैं, सिंपली प्रिंट सी लिस्ट बनाई है हमने, ठीक है, इसको करते हैं। अरे यार, अच्छा ये इन प्लेस कर रहा है, लिस्ट ए डॉट एक्सटेंड लिस्ट बी, लिस्ट ए को लिस्ट बी से कर दिया है एक्सटेंड। अब इसको, अच्छा ये हमें याद ध्यान थोड़ा सा है कि उस पॉइंट पे ये सिर्फ एक्सटेंड हो रहा है, सेकंड बाद में लिस्ट ए जब एक्सटेंड हो गया तो ये उस पर अब असाइन हो गया, जैसे सॉर्ट पे हो रहा था, राइट। तो हम लिस्ट ए को लिस्ट बी से एक्सटेंड किए, बाद में उस लिस्ट ए को हम सी लिस्ट में डाल दिए, सी लिस्ट को प्रिंट कर रहे हैं, दैट इज 1 2 3 4। सो दिस इज वन वे, और सिंपली वी कैन डू लिस्ट ए प्लस लिस्ट बी, ठीक है। यहाँ पे जब हम एक्सटेंड कर रहे थे तो ये जो एग्जाम्पल था, कई बार हम जब पढ़ते हैं तो हमें ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान में नहीं आती, फिर हम कई बार उसको अलग से थोड़ा बारीकी से देखते तो समझ आता है। जैसे यहाँ पे हम कहीं पे एक्सटेंड कर रहे थे, राइट, वहाँ पे भी एक्सटेंड पहले हुआ होगा, प्रिंट बाद में हुआ होगा। एक्सेसिंग, स्लाइसिंग, मॉडिफाइंग, एडिंग, एडिंग में अपेंड इंसर्ट था, एक्सटेंड था। देखो यहाँ पे इसने सिर्फ यहाँ पे यही किया है, फ्रूट्स डॉट एक्सटेंड मोर फ्रूट किया, एंड देन इसने ओरिजिनल जो है उसी को फ्रूट्स को प्रिंट किया था, आफ्टर एक्सटेंड फ्रूट्स प्रिंट कर रहा है, ठीक है। नाउ चेकिंग फॉर मेंबरशिप, हाँ ये मेंबरशिप वाला हमने देखा था ना, इन वाला, इफ एप्पल इन फ्रूट्स, तो यू कैन जस्ट राइट यस एप्पल इज इन द फ्रूट्स, अदरवाइज यू कैन एप्पल इज नॉट इन द फ्रूट्स। सो जस्ट वी कैन चेक विद दिस सिंपल सिंटैक्स, एप्पल इन फ्रूट्स, तो एप्पल इज इन द फ्रूट्स लिस्ट, ओके। सो दिस इज अबाउट लिस्ट, ओके। तो अभी हमने लिस्ट देख लिया, एंड लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन, सिंपल शॉर्टकट, अच्छा इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग भी देख लिया हमने लिस्ट का, एंड हमने लिस्ट ऑपरेशंस भी देख लिया, हमने लिस्ट का इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग भी देख लिया, राइट। अब हम देखेंगे सेट टपल डिक्शनरी, सेट टपल डिक्शनरी के हम ऑपरेशंस, इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग देखेंगे बस, एंड इसके मेथड्स, ऑपरेशंस देखते हैं, एंड देन एक बार लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन भी देखेंगे, इसके बाद देखेंगे टाइप कास्टिंग और रेंज फंक्शन को एक बार और देख लेंगे, वैसे तो हमने कर लिया है बट स्टिल विल सी दिस। एरर हैंडलिंग भी हमने ट्राई एक्सेप्ट देख लिया था, सिंपल सिंटैक्स, बट इसको एक बार और देखेंगे, एंड देन हमको इंपोर्ट लाइब्रेरीज और बेसिक फाइल हैंडलिंग देखना है। थोड़े से ही बचे हैं, अब ज़्यादा बचा नहीं है, सो आई थिंक अनदर हाफ एन आवर में वी कैन कंप्लीट। ज़्यादा कुछ नहीं है मेजर, थोड़ा सा बस अभी सेट टपल डिक्शनरी में ही थोड़ा सा टाइम लगेगा, अदरवाइज तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सो आई एम टेकिंग अ पॉज हियर, मैं वीडियो बंद नहीं करती हूँ, आई विल जस्ट टेक अ पॉज, एंड थोड़ी देर बाद आई विल रिज्यूम। मेरा थोड़ा गला सूख रहा है, 2 घंटा हो गए, सो ओके लेट्स रिज्यूम। लेट्स सी व्हाट tuple and set is. So we saw list, right? Now let's proceed with tuple. Okay, next topic, tuple. Yeah, it's recording. Okay, so we saw list data type, right? Now this kind of this was the first data structure that we looked into. Now let's look into tuples. Okay, tuple is another fundamental data structure in Python which is used to store an ordered collection of items. Okay, now like list, tuples are ordered, okay, and can contain items of different data types. Good. So tuples are also heterogeneous and they are also ordered, right? Now however, key distinction is that tuples are immutable. So lists were mutable, we were able to modify the list, right? We saw it in the last few examples. Now tuples are mutable, meaning once tuple is created we cannot change its elements, add, remove or modify it. Okay, so the items in a tuple have a defined order, okay, that order will not change. You cannot modify a tuple after it's created. This includes adding new items, removing existing items, okay, so we cannot modify the tuple. Now tuples can contain item with same value. It allows duplicates like list, so we can have 1 1 2 1 like that, and it's also heterogeneous. It's also indexed, each item as index starting from 0, okay, same as list, and once created the number of items in a tuple cannot change. So it cannot change, it's immutable, therefore it has a fixed size as well. Okay, so tuples are typically used for collections of items that should not change, such as coordinates, database records. So you might be thinking why to use tuple, right? So what's its use case? The use case is thus that if we want to create some collection of items which we want does not change, right? So inherently we can use tuples so that there is a
less chance of any error in the past or modification in the future. Okay, so tuples we can use to store coordinates, maybe some database records, or returning multiple values from a function. Okay, so their immutability can also make them more efficient and safer to use in certain contexts. For example, as keys in dictionaries, as this cannot be changed, right? And keys in dictionaries has to be unique, so we can use them as a safer option in certain context. Okay, now let's see the syntaxes. When we create a tuple, we have to create them in this simple opening and closing brackets, round brackets, not angle brackets. Angle brackets are different. It's like this. Those are called angle brackets, pointed as arrow. These are simple round brackets. Now parenthesis, right? Parenthesis. Now for my tuple, see, we can create items like this, 1 2 3. We can have an empty tuple, we can have a single item tuple, but then note the comma for a single item tuple. Okay, we'll check this, we'll execute and this check this. If we don't give the comma, what happens? Let's proceed. Tuple without parenthesis, so also a tuple packing. Okay, if we are doing this without any parenthesis, that's also a tuple. It's called tuple packing. Then mixed type tuple, we can have different data types. Then accessing the elements, we can access them based on index, 0 apple, -1 cherry, negative indexing from end. We have seen this. Slicing tuples, we can slice same start end step, so 1:4 if we do, 0 120 30 and 40, right? And if you're not giving any starting index, it start from 0, right? So this we have seen. Immutability example will cause error, we cannot modify. Okay, we'll see from some examples, but some common tuple operations we can do which are non-modifying. Since tuples are immutable, they don't have like the size is fixed, right? So we cannot append, insert, remove or sort. Okay, but then we can find the length. What's the length? So it will return the number of items. We can count a number item, and that's so tuple.count. We can get the index, tuple.index. Now concatenation plus operator creates a new tuple by joining existing tuples. Okay, we'll check this. We can create a new tuple by joining two tuples. We can create a new tuple, that is allowed, but in the existing tuple we cannot make a changes. Okay, so hope this is clear, but then I'll show you the example. Then repetition star operator creates a new tuple by repeating the original tuple. Okay, so we can, okay, this is also interesting, we can check this. And then the in operator for membership. So let's accept and run. We'll see some examples. Now we have created tuples like this, empty tuple, single item tuple. Okay, single item tuple 10 this, and this is single item tuple, single item tuple. Let's see, where is the output? Okay, single item tuple is 10 comma. And what if I am doing a single item tuple without comma and I am executing it? What will I get? Single item tuple is 10. Okay, okay, so you got the difference, right? If you are not giving comma, it will just give you the value, but if you are giving the comma, then you can see it in a bracket like this. So if you want to have a feel of the tuple, right, so you need to have that comma. It's for that basically. Tuple packing without parenthesis 20 30 40. If we are writing like this and printing, then also we'll have the parenthesis when we are printing it. Okay, nice. Length of tuple we can get, accessing, slicing, these are all we have seen in list. It's simple. Now concatenation. Okay, see, this is one tuple, this is another tuple. We can create a new tuple by combining these two tuples. So this is allowed, this is right. Tuple repetition. If you are taking one tuple and doing it into 3, so that the same tuple will be multiplied 3 times and we are storing it in a new tuple. Okay, 1 2 1 2 1 2. So this is nice. Now we can count, we can have the index, we have seen, we can check the membership. This is nice. Now tuple unpacking. So we have coordinates as 10 20, but we want the values 10 in x and y in 20. So we can easily write x comma y and we can do coordinates, so it will match. 10 will go to x and y will go to 20. So this is one way.
of tuple unpacking. And what if we have, say suppose we have only one value x, and let's just don't print. Okay, let's see. uh, where is this? Coordinates 10 20, we did x equal to. Okay, so when we are doing x equal to, the whole tuple is getting assigned. Okay, you can see that, right? And y is 20. How y is coming 20? Let's see. Unpacked coordinates. I think y somewhere, is it defined up in the same file? Is it taking for somewhere up? uh, why let's okay, let me copy this, and let's have this code in a separate code box. Okay, and let's run this. Okay, unpacked coordinates. uh this is a mystery. I am not assigning y any value. How it's coming as 20? Maybe let me take another value as z, and let's run. Okay, so I think earlier y was 20, right? And uh, it got stored somewhere in the memory or something, and that's why it was showing. It was there in the memory. Even we removed, it was still there, so it was showing. Now we created a new variable, so z is not defined. So yeah, obviously, but then x coordinates, if we'll do 10 20 is coming here. And what if we do x comma y comma z, and we are printing x, and let's print y, and let's do y equal to this, put a comma, and let's execute. A value error, right? So expected 3 got 2, so we cannot have more here. We can have less. If we have less, it will obviously assign. Let's have x 10 20 30. So 10 20 30. And what if we have one more here? So in this case, what will happen? Let's see. Again, there's a mismatch. Okay, too many values. Okay, so if you got understood this one. Now uh, unpacking with a function written. What is this? Like, we have defined a function get user data, and we are returning Charlie 35 engineer. Now when we are calling this function as get user data, okay, this will be returning as a tuple, right? So when we are returning like this is simply a tuple. It comes with a parenthesis. We have seen this, right? So this is tuple packed. Now so we can just catch it in name, age, occupation, and then we can print it. It's pretty simple. And let's try to modify a tuple. Okay, so let's copy this, and let's have a new code bar, paste it. And what it's doing, it's trying, like, my tuple, there is 1 2 3, and what we are doing, we are changing the value at index 1 to 5, and then if there is any error, we are catching it as E, and it comes as a type error, right? And we are just naming it. Instead of the whole error, we are naming it as E, and then we are printing the error here. So what it's doing, attempting to modify a tuple caused an error. And what is the error? Tuple object does not support item assignment. Hope it's clear. If we are not doing this, it's just that the error, right? We are naming this error as E, and we are printing it. So we can do this also. Selecting this, pasting it here, and execute it. So we are getting a class type error. Okay, so we are getting the whole class, and then if we are simplifying it, we are getting a error in some readable format, like tuple object does not support item assignment. Okay, so we'll see this, try except how this works, what is the logic behind this in detail. It just in few minutes will come to this again, but now hope this tuple concept is clear. Let's move ahead with sets. Next topic, sets.
Okay, we covered everything in this, right? So we saw creation of tuple, single item tuple, okay, and concatenation, star, um, note the comma for a single item tuple. Okay, okay, let's go to set. एक बार set देख लेते हैं. I'll come to that again. I was also not quite convinced, but we'll read that again. Let's see what AI has to say, but let's check set first. Okay, let's see what it has to say about sets. Okay, so what is a set? A set is an unordered collection of unique and immutable items. Okay, so set is an unordered collection. List and tuple were ordered collection, but set is unordered of unique elements. Elements must be unique. Okay, elements will be unique, okay, in a set, and the items will be immutable. It's a collection of unique and immutable items. And like mathematical sets, what are the use case of this Python set? It is used to perform operations like union, intersection, difference, and symmetric difference. Okay, now they are useful for quickly checking if an item is present in a collection, removing duplicate elements from a sequence. Okay, so suppose if we have a list of duplicate elements, we can convert that list into a set, and automatically the duplicate elements will get removed, because set is a collection of unique elements, right? So this is one way of doing, a quick way of doing rather. Unordered sets are unordered. Okay, they will have unique elements. Okay, if you try to add an existing item, it will be ignored. It will simply get ignored. It's saying sets themselves are mutable, meaning you can add or remove items after creation. Okay, we can change the items in the set, but the elements within a set must be immutable. Okay, so see, it's saying that the set should contain immutable items, though the set can change. Set is mutable, but the items inside should be immutable, like numbers, strings, and tuples. List and dictionaries are mutable, so we cannot directly put that in a set. Now in list and tuple, it was heterogeneous, right? We can have anything inside list and tuple, but it's not with sets. Sets will only have immutable items, but the set itself is a mutable data type. Okay, so this is little tricky, but it's interesting. Now no indexing. Sets are unordered. Sets does not have a defined order, so we cannot access element using indexes or slicing. So we cannot perform slicing, or we cannot access the items through indexing. And it's heterogeneous. A single set can contain different immutable data types. It's heterogeneous because we can have immutable data types. No, okay. Now let's see how we have to create a set. For creating set, we have to use curly braces, not parenthesis, not square brackets, but curly brackets. Now we can have a set created like this. We can have an empty set from a list. We can create a set from a list. So if we are giving a list and we are doing set of this, then the result will be 1 2 3 like this. Okay, now see, don't get confused, right? See, it said earlier, right, key sets cannot have list or dictionaries as a direct member. So what does that mean? What does that mean? If we have a set like, let's have a set, my set, and 1 2 3, and if we are doing 1 comma 2 comma 3, so this is a mutable item. If we are doing this, then it will show an error. That is what it says. It should show an error. Let's print my set and check. If we are printing, it's saying a type error, unhashable type list. We cannot have a list inside a set data type. If we are removing the list and say suppose we are having a tuple, let's say 1 2 3, and we are printing, then we'll get an output because tuples are immutable. Correct? Now sets are mutable, right? So does that mean we can have a set inside a set? Let's check. 123 3, it's okay. We cannot have it because sets itself are mutable, right? It's interesting. Now, but what we can do, we can convert a list to a set. What I can do, let's take another variable. Let's say suppose x, and I do set of 1 2 3 3 4 2 1 1 1 1
1, and let's print x and let's run it. Will have unique items, right? So it will just give a unique items. It will convert this list basically into a set, and set will have unique items, so it will remove the duplicate items, right? So that is what it is. Now it can have a mixed type, right? But elements must be immutable. We saw this. Immutable items like a number, a string, a float, a boolean, right? Okay. Now adding elements, we can add the single item to the set. So for adding elements to a set, we are using add and update. We are not using what we used in list. We used append, right, for adding an item, and to update, like to add elements from an iterable, we used extend. Here we are using update. Okay, so there is some differences between the function names, right? For removing elements, there we had a pop, right? So yeah, there is a pop here too, removes and returns an arbitrary item from the set. Since sets are unordered, right, this you don't know which item will be removed. Okay, so what happens, sets are unordered, it's saying. So let's try to print it again and again. It's giving us 1 2 3 4 only. I have 1 2 3 4 7 89 11 45, and let's try to print my set, and let's run. It's giving okay. It's giving us the same output per se, but then we cannot access, like if we want to access now my set of 0, we cannot do that. It's a type error because it's not subscriptable, because it does not have a proper indexing, though it's coming in the same sequence. I think it's because of the console or so. Maybe every time if we are running now, so sets are not ordered, so I think every time the output will be unordered. It's because of the browser console or something. We can check this. Let's see. Let's move ahead, and we'll just rectify our doubts in just a few minutes once we complete this. Adding we saw, right? It's adding a single item to the set, adds item from an iterable. Okay, removes the specified item, like we can say remove this item, so it will remove. And if the item is not found, it raises a key error if item is not found. And there is a discard also, so it removes the specified item, it is present, and does not raise an error if that item is not found. Okay, so there is a subtle difference. If you are saying remove, if item is not there, it will give a key error, but then if you are doing a discard, item is not there, it will not raise an error. Okay, and pop will just remove and return any arbitrary item. Okay, any item can come out of that set. Like if we are doing my set dot pop, I think I'm writing the syntax correctly. It has given us 1. Next time if we are doing, it's given 1. It's this browser console only. If you use any different ID, I think definitely you get some different outputs, right? So okay, let's not worry about this. Now clear by remove all elements from the set. Now we can have some set operations like union, intersection, difference, and semantic difference. It's like mathematical set, right? So union is or returns a new set containing all unique elements from both sets, so it will combine. Intersection returns a new set containing only the elements common to both, so it will have a intersection common of both the sets, right? And difference returns a new set containing elements present in the first set but not in the second. So a minus we are doing, so it will subtract the elements which are present in B from A, and then it will return that set. Okay, and semantic difference, return a new set containing elements present in either set but not in both. Okay, semantic difference, it's basically opposite of intersection. So intersection is given as common, and semantic difference is giving us all the numbers except the common. Okay, so these are this. And then length gives the number of items, and items in my set will check with the membership. It's pretty simple. Now let's accept and run the examples. Now we saw this. So duplicate apple we will remove if we are printing set 3. If we have duplicate items, it will be removed. We saw this also. Now empty adding set. So my garden roses and tulip, we can add lilies. Okay,
and then we can add roses again. If we are doing roses, so it will have no. So after adding lilies, we got something like this. It's random, right? It can add it up in any position. There's no fixed position, right? And now coming to, after adding roses again, same. Now we can extend it, like we have a list, and my garden is the set, so we can extend a set with a list, so all the elements will be getting added to the set. Removing, pretty simple. We can remove banana, it will get removed. Will have apple, cherry and date. Discard, if grape is not there, there will be no error. Pop will remove any arbitrary item. Now set operations, we have to set a and b. Okay, so see, we can see this union, intersection, difference, symmetric. So let's see, 1 2 3 4 5 4 5 6 7 8. If we are taking a union, what it should be? Unique from both set, right? So it will be 1 2 3 4 5 6 7 8, right? Intersection, common of both is 4 5 here, 4 5 here, correct. Now difference, difference is a minus b, so b has 4 5, this is 4 5, so 4 5 will be removed, so that will be 1 2 3. And semantic difference, except common everything, 1 2 3 and 6 7 8. Okay, so we'll see the, okay, 1 2 3 4 5 and set b 4 5 union, we are getting complete. Intersection, common, a minus b, 4 5 will be removed. And symmetric difference, except unique everything, 1 2 3 6 7 8. Hope this is clear. Now membership testing is pretty straightforward, and clearing a set to clear what okay, clear, so everything will be wiped off and we'll have an empty set. Okay, now we had two questions in our mind, right? Okay, let us check it. Why in a single member tuple we add comma, like 2 comma, and what will happen if we don't? Let's see this first. Okay, when you write 2 comma, Python interprets this as an integer 2 with redundant parenthesis for grouping, similar to how 2 plus 3 is still an integer, does not create a tuple. Okay, so it treats it as an integer, right? Okay, I was wrong. So when you are just writing an element, it was giving you an output as 2, right? So just a 2 without a parenthesis means it's an integer, it's not a tuple. To explicitly tell Python that you intend to create a tuple containing a single element, you must include a trailing comma after the element. Okay, so if you are not putting a comma, then that is an integer, it's not a tuple. Okay, if you're not putting a comma, then that is a string, that's not a tuple. If you're putting a comma, it will the Python will know that you are intending to create it as a tuple and not as a string, sorry, not as an integer. Now this will also be a tuple, right? Because we have a comma. Okay, this makes sense. Now let us see one more thing we wanted to ask, like if a set is unordered, so every time if we print it, do we get the elements in same order as output? Let's see. This is not, but it's not coming here, so let's ask the AI and see what it's telling us. Okay, that's a great question that gets to the heart of what unordered means for a Python set. No, if a set is truly unordered, you are not guaranteed to get the elements in the same order every time you print it or iterate over it. Okay, that is why we are not using indexing. If it was to come in the same order every time if we are printing, then there must be indexing associated with it, right? So
it's has given us an example what it's telling. Let me show you an example that tries to illustrate this. Sometimes even in Colab, Google Colab, it might appear consistent due to interactive environment. Okay, so I told you, right, it must be because of this console environment. The key is to understand that the guarantee simply is not there. It might come, it might not come, so guarantee is not there. Okay, so let's skip this example. Let's not go through it. Now let's move it to dictionary. So we have seen list, tuple and set. Let's come to our last data structure in this next topic, dictionary. Okay, by the way, what was this example? What he was trying to demonstrate? He's creating some random integer in this range, and it's printing the same set multiple times, and it's saying order may vary. Okay, here's created some set of random integers, and it's printing every time, and we just needed to check. Let's see this printing the same set multiple times. See, it's coming in order may vary, but it's not varying. It's not varying. It's it varied, right? You saw this, right? I think it varied. Didn't this 035? It's varying. Oh, no, it's not varying. Basically it's random sets are getting generated in every time we are running it. A random set is getting created, and every time we are printing it's the same set. Basically the order is not varying. It's okay. If you want, you can test this if in another console if you have, so no problem. Let's proceed ahead to dictionary. Next topic, dictionary. Okay. Dictionary, as we saw, it's basically will give us a key value pair, and dictionaries are very important data structure to learn in programming when we are dealing with real projects and when we are dealing with APIs, right? So most common data type that is used in APIs in JSON, and JSON is in this key value pair. Okay, so we must know how dictionary works. So let's read it. Dictionary in Python is an unordered collection of data values. They don't have any order like set, and they are storing values as key store data as key value pairs. Unlike sequence type, which are indexed by range of numbers, dictionaries are indexed by keys. So they are not indexed by numbers, they are indexed by keys, which can be immutable type. Okay, keys has to be immutable. Keys again cannot be mutables. Keys have to be string, number, tuple. Okay, like that. And it's unordered, is mutable. The keys has to be immutable. Dictionaries itself is mutable, you can change it, same as set. Then each item in a dictionary consists of a key and its associated value. Keys must be unique. Okay, keys must be immutable, keys cannot be changed, right? And value can be of any type. Value can be of any data type, including dictionary, list, functions, anything. Okay, dictionaries are incredibly useful for mapping unique identifiers, keys to specific pieces of information, making data retrieval very efficient. Okay, when you know the key. Now we create dictionary like this, curly brackets, and then we have a key value. So key 1 associated with value 1, key 2 value through key 3, 1 2 3, anything. Okay, it's just a heterogeneous mix. Now empty dictionary we can have. Then dictionary from constructor. Okay, we can create a dictionary from constructor. So basically, okay, we'll see the example later. If we are doing this, so what we'll do, it will create curly braces at name colon Alice like this, and age colon 30, right, like that. So we can do this also, simple way of defining. Now accessing elements, whenever you access the element, you can access it from the key. So if you want to access Alice, you can do person square bracket name. Okay, so person name will give Alice, or person age will give 30. There is one more way, person dot get. Instead of writing the square bracket, we can give dot get and write age. So safer way, returns none if key not found. So this is a safer way to say if key is not there or some spelling mistake you're doing this, it will return none. Okay, but this will not return. We'll check this, we'll execute this. Now modifying
adding a new key value pair, we can simply write the dictionary name, the new key name, and then the new value, and we can change the existing value by assigning any new value to the existing key. Like age was already there, so we can do person age and we can write it, we can assign a new age, right? Then removing elements, we have del deletes the item with the specified key. So del dict key, so we'll give just the key. When by giving the key, it will delete the item, the key value both. Pop key, it will remove the item with the specified key, it return its value and raises an error. So if we are doing pop key, it will remove the item and it will give the value in that iteration. Okay, clear, we remove all item. We have seen this. Pop item removes and returns any arbitrary key value pair as a tuple. Okay, so pop key will remove item with a key, but if we are doing pop item and blank, it removes any arbitrary item. Now some common dictionary methods we have apart from this. Length, it's there, it will return the number of items. This is straight. This we have seen, it's a membership key in dictionary, we can check the membership. Now we have updates the dictionary with elements from another dictionary object. Oh, it's similar to extend, right? Extend we had for list. So update is here, updates the dictionary with elements from another dictionary object. For sets also we had something, right? For sets also we had update. Okay, for sets also we had update, and for dictionary we are having update. Okay, so it's adding a dictionary into another dictionary, the key value pairs. Then items, return a view object that displays the list of dictionary's key value tuple pairs. Okay, it will give all the items. Dot items will give a key value pairs. Value will view object displays a list of all values in dictionary. So this will give a list of all values, and keys give a list of all keys, and items give a list of dictionaries key value tuple pairs. Okay, so let's see the examples. Now we have a dictionary of a student. We can also create a dictionary by using a constructor dict like this. Now we can have an empty dictionary. We can print the dictionary student and car. We can print the empty dictionary. We can find the length. This is simple. Now we can access the name, student name. We can do car get model. Okay, let's accept and run. Now we can access a non-existing key with get, returns none, does not get. Okay, so in car we have brand, model, year, right? If we are doing okay, is student, we have name, age, major courses. If we are doing student dot get grade, now what it's saying, student dot get grade, somewhere here, student name Alice, student grade using get. Okay, so we got none, right? Here it is not giving error, Mustang Alice. Now it's saying if we would have done it directly like student and grade, it would have written an error because grade key is not present in that dictionary. Okay, let's run this, and yeah, we have an error here. In the output we have a key error, a non-existing key with get. Okay, so I think we are good with this example. Now let's okay, change this. Now modifying the elements, we can directly modify student age equal to 21. We can do this, and student GPA 3.8. okay, adding a new key value pair. So GPA was not there, but if we write student GPA 3.8, this GPA will get added to the student dictionary. Let's run it again, and student dictionary has GPA. Okay, now okay, removing elements, removing elements, yeah. So we can use delete, and we can give a specific key to delete that. So profile ID will get deleted. We can do pop email. Okay, this removes and get value. So when we are doing remove dot pop email, what was the value of the email? We added the email somewhere or not added the email. Okay, this is a new profile dictionary. So here email is user@example.com.
Now when we are doing profile.email, the removed email will have this value, so it is removing it and returning the value we can store it in a variable and we can print it. Okay, so that is that. And then profile pop item, remove any arbitrary item, we saw this. Now this is interesting. Okay, so student dot keys will give us a list of keys, student odd values will give us list of values, student add items will give us key value both. So we can have a list and then we can iterate and check in the student dictionary. This is example number 5. Membership, we are okay, we can check name, key in student, okay, name in student, directly address in student. So we can check the if we are doing this, so we are checking the key. If we want to check values, you can do alice in student dot values. Okay, so this is correct. And then updating with another dictionary, we have 2 dictionaries and we can do update, so it will get added. So yeah, so see, iterating through student dictionaries, these are the keys, these are the values, and these are the key values. Okay, and yep, these are the combined dictionary using update. So this is also simple, right? It's pretty simple and it's quite interesting. If you are here first time, then it might be a little overwhelming, but it's interesting. Now let's move ahead. Okay, now we completed the data structures, we finished functions, we are done with the list operations, we are done with indexing and slicing. Let's check list comprehension, simple shortcut to create list, and then we'll move to string operations. We'll once again see typecasting and range function, and then the last 3 topics. Okay, so let's see with the list comprehension. Next topic. Okay, list comprehension. Now list comprehension offers a concise way to create list. It consists of brackets containing an expression followed by a for clause, then 0 or more for or if clauses. The result will be a new list resulting from the evaluating expression. Let's not see the theory, let's see how it is getting created. The syntax is basically expression for item in iterable if condition. So if we have a blank new list for item in iterable if condition new list dot append. Okay, let's see the example. We have a number list. Okay, now what we are doing for number in numbers, so we are checking every number in numbers. We are directly doing num double star 2. This is exponential, this is exponential operator. So we are basically doing 1 square, then 2 square, 3 square, 4 square, 5 square, and this is in an iterable fashion, and whatever value we will be getting, that is basically getting appended to this new list squares. Okay, let's run this. So it's a very interesting and it's a simple way, right? So in one line we are doing this. We are fetching in a loop the items in a number, we are doing some operation on it, and in the same place we are creating a list. So see, we are getting 1 2 3 4 5 and squares of the number in one line. So it's a very nice way of creating a list. Okay, now see what it's doing for number in numbers. Okay, we are having the loop, we are just returning the number, but then here we have a condition. If the number is divisible by 2, it means if it's an even number, then return the number. So we have a iterable and then we have a if condition. We are filtering the even numbers and we are doing it in one line. Okay, so this is very interesting, and this you will, if you don't know, this way it can be written. So if we are working with real projects and if AI generates this kind of a code for you, so you will find it difficult to understand right at one place. So it's
always advisable to go through basics at least once, but you must know at least the basics for you to even work with the AI. Now let's see this example. Parity status, what it's doing, if a number is divisible by 0, if number is divisible by 0, even, we will return even if number is divisible by 0, else odd for number in numbers. Okay, what it's doing, list comprehension, what and if or condition, transforming based on condition. If you need an else, then if must come before the for part. Okay, so this is interesting. If you only have one if condition, then if will come after the for, but if you have if and else, then if else will come before for. So for num in numbers is at last, you have a if condition. If it is true, you will have the number even, but if it's false, you will have odd, right? So that is the parity status. Now okay, let's see one more example. Now for word in words we have, and we have the it condition here. If length of the word is greater than 5, what we are doing, we are doing word dot upper, means we are converting, if the word is greater than 5 letters, we are converting the word into uppercase letter. Okay, so see this, banana, cherry and elderberry. What is an elderberry? I have heard this for the first time. I don't know what is elderberry. Now parity status, odd even, odd even, odd, we saw this example also. Let's see another example. Form matrix. Okay, now this is a 2D list. Okay, so list inside a list, it's a 2D list, it's a matrix. Now we want a single flattened list. So what it is doing, for row in matrix, okay, for each row in a matrix, for number in row, for then each number in a row, we are having a double loop. Okay, so first loop will scan through every row one by one. In first pass it will scan the single row, first row. Now the second loop will scan each number in a row. So the second loop will scan 1, then scan 2, then scan 3, and we are returning numbers. So we'll have 1, 2, 3. Now in the second pass, the first loop will scan the second row, and then the second loop will again scan each number 4, 5, 6, and this will get appended to a single list, in a single list. So we'll be having, instead of having a 2D list, we'll having a single list. So this is a 2D list matrix, and this we got as a single list. Okay, so this is also nice, interesting. Now we have a, okay, now let's see another example. Nested list comprehension with conditions, get all even numbers from even rows. Okay, so we have for row index, row in enumerate matrix. Okay, we have a function here as enumerate, and we are using the same matrix. What will enumerate do? Let's keep this example on hold for now. Let's move ahead. Okay, creating list of tuples. Now we are creating a list of tuples. How? For x in range 3, it means it will run for 0, 1, 2, and for y in range 2, it means it will give 0, 1, and we are returning xy. So first we'll having 0 and then 0, second will having 0 and 1. Next what will have, second index here will be 1, and here it will again restart. So 1, 0, 1, 1. Again we'll having what, 2, 0, 2, 1. So we'll have a set of coordinates. It's like a list of tuples. Okay, so we have a list, and inside that we are creating a tuple of x comma y. So 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Okay, this is nice. Now list comprehension for type conversion. Now we have a string of numbers. What we are doing, for s in string numbers, for every string we are converting the string to integer, int of s. So instead of having 1, 2, 3, 4 as string, we'll having 1, 2, 3, 4 as integer numbers here, 1, 2, 3, 4. And the last example, what is doing, using a function in list comprehension. We can use a function as well in list comprehension. How? Let's check. We have a function is prime. Now this is the list comprehension. We are calling for num in range 1 to 11. It means it will run from 1 till 10. Right? If is prime num, what we are checking, if every number is prime, and is prime is what, a function. So we are calling a function is prime, and we are passing numbers from 1 to 10. If it is prime, if it will return true, we'll have the number here and we'll print the numbers here. So this is prime function. It's just checking whether number is prime or not. We have seen this function earlier. So this will just give us a number from 2, 3, 5, 7. This was nice. Now let's check this enumerate matrix example. Okay,
I also don't remember what exactly enumerate matrix is doing. So let's have this example here. Let's run this. So what it's doing, let's see, for row index comma row in enumerate matrix. Okay. If row index, okay, so from this name we can find out what row will have. For this matrix, row will have the first row, like for the first pass it will have the row and this will have the row index. So this will have 0 and this will have the first row. The rows are 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So this will having 1 2 3, this will be having 0. Now we are checking row index is even. Row index is even, first is 0, it is even. Now what we are doing for num in row, if num modulus for number in row. So now again we are having a loop for this row items 1 2 3. So first number is 1 and we are checking if number is also even. We are checking if the index is even, if we are checking the number is also even. Okay, even numbers from even rows, correct? This is interesting, even numbers from even rows. So the first is 1 2 3, but the row is not, let's see it here. This is 0 but the number is not even. This is 1, number not even. This is 2 but the number is not even. Now index even, the number is even, will have 4. Index odd, index even, so 0 1 2 0 1 2 0 1 2. So these definitely won't matter. We have to check 1 4 7 3 6 9, but then only 4 and 6 are even, 7 and 9 are again odd, so we'll have 4 6 at output. So even numbers from even rows. So what we are getting, we are returning num. Okay, so even numbers from even rows are 2 8, 2 and 8. Even numbers from even rows it is saying, or even indexes. This is row index, right? um, Even from even rows. Okay, this is 0, this is 1, this is 2. So by the naming 0 1 2 and 0 1 2, I am getting a little confused here. Okay, it's saying, okay, row index. Oh, understood. Row index means it's not the index of the element, basically it's index of the row. So this index is on 0 row, right? The index of this row will be 0. If you see this is a single, see this as a list, right? Inside this we have a list. So for this list the index is 0, for this entire list the index is 1, for this list the index is 2, right? So what are the even indexes? This is even index, this is even index, correct? Okay, now we are checking in each even index which number is even. This number is even 2 here, this number is even 8 here. Okay, so we'll be having 2 and 8. I was wrong. Okay, so this is fetching the row index and this is fetching the row. And let's check what enumerate is doing to a matrix. Okay, let's check here what enumerate matrix does. Okay, let's check this. Basically we are able to make it out what this is doing from the variable namings, right? So see how variable naming is important. If it would have been written here xy, it would have been difficult to figure it out what x and what y is, because of the way the names are written, variable names. It's at least we can figure it out, though we don't know what this is doing. So what enumerate is doing, enumerate is a built-in Python function that adds a counter to an iterable and returns it as a enumerate object. Okay, let's see an example. Suppose when you matrix is a list of lists, right? So it's correct, but when you are doing enumerate matrix, okay, it will generate a sequences. Okay, so enumerate is basically doing what? It's giving a index for every list. So it's doing 0 1 2 3 1 4 5 6 2 7 8, right? Nice. So when we are doing enumerate matrix, we have something like this. And when we are doing row index row, so row index will hold 0 and row will hold 1 2 3. So this makes sense now, right? Correct. Now we saw about list comprehension. Let's proceed ahead with string operations. Okay, probably this string operations, it's the नेक्स्ट टॉपिक. सो आई थिंक यही एक सबसे बड़ा टॉपिक है अभी जितने भी टॉपिक रिमेनिंग है. नेक्स्ट अदर टॉपिक्स विल नॉट टेक मच टाइम. सो string operations, there will be some
built-in functions for string. So थोड़े से ज़्यादा होंगे string functions. We'll see this quickly, but this will also be very easy. We have seen list, set, tuple, dictionary, right? So string समझना will not be tough for us. Come on, come on, come on. Give me the output. What happened? What, the memory is exhausted or what? Please explain. Demonstrate. Okay. We want to learn now about string methods. Okay. We have string methods now. String operations are basically string functions, string methods. So operations, I think operations is getting confused or what we are meaning by operations. Next we'll do typecasting and each function, and then we'll come back to this list again. Okay, so examples of string methods. So he has given us some string methods here. Okay, so we have seen this upper, right? Upper, what does it do? Upper kya karta hai? Upper will convert everything to uppercase. So hello Python world, if we are doing, let's run this. चलो यहाँ पे देख लेते हैं. हाँ, सो अपर केस ओरिजिनल हेलो पाइथन वर्ड है, अपर केस सबको अपर केस में कन्वर्ट कर दिया है. इट हैज turned everything into uppercase letter. Lower case will do the opposite. Title case will convert the first letter to uppercase of every word. Capitalize will convert the first letter of the sentence. Hello Python world. Okay, so this is these are the four uppercase, lowercase, title and capitalize. So the function names are, where are the function names? The function names are lower, upper, title and capitalize. Okay, now slicing strings. Okay, slicing strings का भी जो indexing is starts with 0. So if we have Python and we are doing 0 to 6, so basically 0 till 5, so pytho till 5, so we will get pytho. Okay, so this is similar to list and tuple. -1 will reverse the string as it reverses the list. And immutable strings are immutable, right? We have seen integer immutable, string immutable. So basically you cannot do, if the string is Python and if you are trying to change p to j, this will give us an error. This we cannot change it. Okay, it's similar to we have seen tuple, right? Tuple we cannot do. And sets we can do. Set is immutable, but then set we cannot sets are mutable, but then sets we cannot access through index. They are not ordered, right? So in set there is a different way of adding an element, but then we cannot change like this, right? So this is then string length we can find directly by len. We have seen this. Accessing the characters, character accessing through index. Strings are ordered. Now we can combine string through plus sign. So if we are doing string 1 plus string 2, it will just combine it. If we want to give a comma here, so we can put a comma and a space, we can put an exclamation. So if we just put concatenate everything, then we have seen this also, right? So if we are doing into 3, this will get repeated. String 1 hello hello hello. Now let's come to strip, l strip, r strip. So what does this do? Strip, so some text with spaces. So if we have a trailing spaces, right, before and after, like in the starting and at the end, so strip will remove this trailing spaces from here and the ends. And l strip will remove the left side, and right strip will remove the right side spaces. Okay, now let's see 7 wala dekh hi lo. So so some spaces, now some text with spaces, the spaces are removed. Left stripped means left will remove, right as it is. Right stripped means right remove, left as it is. Okay, now what we have again, we have replace also. I think we saw in some example. So if we do message dot replace apple, so wherever we have apple, that will be replaced by bananas. So I like bananas but apples are healthy. Okay, you see this example, I like apples but
apples are healthy. We have replaced apples with bananas. So we have, you saw, right? We have replaced A small here, A is capital here. So I like bananas, apples are healthy. We can change this. Now if we are doing, let's write this, apples are healthy, small case, and execute it. Now what should we get? See, I like bananas, bananas are healthy. Okay, so it should exactly match. Okay, the case of the string also matters. Now replace is easy. Split. Okay, what split does, if we have a string with some characters, we can use any character to split. Like we have a string with the comma, and if we do dot split with comma, so we'll have a list of all this elements, apple, banana, all the fruits, apple, banana, cherry, date. Okay, so let's check. We had the CSV data, split it into list, so we had this list, and sentence split by space. Okay, we had one more example here, and this is a sample sentence, sentence not split. If we are directly doing this, we are not giving anything, so it will by default take space. So we will have, this is a sample sentence in alag alag in a list. Okay, in a list as different elements. So now let us see some other operations. Join. What will do? Python is awesome. Okay, so if we have split, it's a join is reverse of split. So split is splitting it into list of different items. We can also join. So what we are doing, we are joining words to join. So we are taking this list, we're joining every element by the list, and we are joining it by space. So Python space is space awesome. We can put another hyphen also, like hyphen or a dash or a slash, any operator. You can put a string also. Okay, now let's see, find an index. See the output here. So Python is awesome, right? Now let's complete this fast. Find an index. The quick brown fox jumps over the lazy dog. Okay, it's a tongue twister. Now find fox. Okay, now this is a phrase, which is, the phrase is a string. Now in phrase we want to find fox, so this returns the starting index. Okay, now this will give us the starting index. So what will be the index? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. So F is in 16th index. Okay, now if you see fox is in 16th index. Okay, hope you got this one. Now if phrase dot find cat. Okay, if the whatever we are looking for is not there in the string, it will return -1, that is not found. Okay, and if what we are doing, phrase dot index cat, we are looking to find the index of the cat, it raises value error if not found. Okay, so it's a difference between index and find. Find will also give the starting index, index will also give the starting index, but the difference between find and index is that if find does not find that, it will give -1, but then index will raise us the value error, index will give the error. Okay, now count of O. If we are counting O, it will just count how many O's are there. So 1, 2, 3 and 4 will have 4 O's. And phrase dot lower dot count the. So we are checking, we are converting this entire phrase to lowercase, and then we are checking the count of the. So we'll be having 1 and 2. So we have output as 4 and 2. So count of 4 and 2. Okay, now what is next? Next it starts with and ends with. We can check whether the file name, if there is any file name or any string, we want to check whether it starts with some particular word or some particular set of letters. We can check that starts with, ends with. So if we are checking file name starts with rep, yep, it's starting with rep, it will return true. File name ends with pdf, .pdf, yes, it's ending with .pdf, return true. Now for checking the content, we have few other functions like is alpha. It's what's doing, it's checking whether it's in alphabet or whether it contains alphabets or not. So is alpha, I think is digit, is for checking digits. We'll check the example. Is alnum is alphanumeric, so it's alphanumeric, right? And is space, so it's space. All should return true. So
True. Okay, so it's just checking whether the string contains all alphabets, all digits, alphanumeric or space. Okay, and at last we have formatted string literals. Okay, so we have checked this output earlier. We have item, price, quantity. So we are printing quantity, item, price into quantity, and we are doing dot to f. So it's exact 2 decimal places it will give, and we are storing this in formatted output, and just we can show the formatted output here. Okay, so we have this now. I hope these are all clear, right? So it's pretty simple once you have seen this, right? Now if you are going to work with Python codes, right, you'll not find it difficult. You will going to understand it easily. Let's complete typecasting and range function. Next, typecasting. We have seen typecasting string to integer, right? Probably we'll have some few more examples here. Let's just see it quickly. Okay, what's typecasting is doing? Typecasting, also known as type conversion, is process of converting a variable or value from one data type to another. Okay, it's a common operation in programming when you need to perform operations that require a specific data type, or when you receive data in one format and you want to use that data in another format, you will probably use typecasting. Okay, so why use typecasting? Convert string numbers to integers or float. Okay, for arithmetic operations, user input is always in string. So if we have taken some integer float input for numerical processing, we'll do it. And then data manipulation, converting list to tuple set or vice versa. Okay, so if we have a list and we want to convert this list to a list of unique numbers, so we can do a typecasting with sets, right? We have seen this example. So that is data manipulation from list to tuple to set, all this. So this is also typecasting. Then string formatting, converting numbers or the data type to string. So we can convert numbers to string as well. Okay, important considerations: converting a float to integer will truncate the decimal part, or obviously if we are converting float to integer. Value error: attempting to convert an appropriate value like a non-numeric string like hello into an integer. We cannot convert like this example to integer. This will give us a value error. New object: typecasting typically creates a new object of the desired type. It does not modify the original object in place. So typecasting typically creates a new object of the desired type. Okay, this is important. So whenever we are doing a typecasting, right, so the original item will not get changed. It will create a new object, right? So we have seen this int of x, float of x, string of x. Will basically whatever data type we want to convert into, right, we'll just append that data type in front of that variable or that data type. So we'll have this tuple of x converts x to a tuple. X can be a list, set, string, other iterable, set of x, dictionary of x. S must be a sequence of key value pairs. Okay, so if we have a list of a tuple like this and we are doing dict of x, so this a dictionary of x, so that this will convert this into a dictionary key value pair. So this will probably have a colon 1, b colon 2, like that. Okay, let's not go through the examples, it's clear. Now we will proceed ahead with typecasting is done. We'll check the range function. Range function next, please. I like to be little polite with AI, so just try to be polite in real world with other person and to machines, to everyone around us in general. We have to. Let's try to be nice and kind. That's what I try to do. Okay, let's see range function. The range function is a built-in Python function that generates a sequence of numbers. We have seen this. So this is used in for loops to iterate a specific number or to iterate a specific number of times or over a sequence of index. Okay, so range observed does not store all numbers in a memory directly. They generate numbers on the fly, which makes them very efficient. So it will just generate numbers and we can iterate over them. So that's used in for loops. Basically we have seen this. Let's see some examples. Now range stop generates number from 0 up
2 but not including stop. So we have seen this, and step defaults to 1. So if we are doing range 5, so 0 1 2 3 4, we can do range 1 5, so it will give 1 2 3 4. We can even give step, right? So 0 to 10, we have seen all these examples, 0 2 4 6 8. Okay, and then we have some examples. I think we can it's clear. I think we can proceed ahead. Okay, nothing much in this, we have covered everything. Now let's importing libraries. Let's check this. This is important from next classes. Basically, when we are going to from the next video, basically next video will all be about the different libraries of Python. We'll be starting with NumPy, and then we'll be having Panda. Okay, so we'll be importing all the libraries. So what are libraries? Basically, like functions we saw, right? So these are predefined built-in huge library of built-in functions. Okay, so Python's strength comes from its vast ecosystem of libraries, modules, packages. So these are pre-written code that extends Python's capabilities. So apart from this, there are huge set of pre-written code, and that's why Python is very powerful. Okay, we'll see it in further coming classes what all we can do with Python. So to use all those predefined libraries, what we have to do, basically we have to import it within our file before we want to use them. So we have some libraries which will be used in data science and machine learning: NumPy, Pandas, Matplotlib, Seaborns, Skitlearn, TensorFlow, PyTorch. Okay, for web development we have Django, Flask. So there are different types of libraries: Flask, Request, Network API integrations, datetime, random. Okay, testing, PyTest we have. So to import all these libraries, we have to use all these libraries. Basically, we just have to write the import functions. Okay, so we'll see this from the next classes. So this is all about importing libraries using external tools. Now let's see error handling using try and except. We have seen few examples, but let's study it in detail. Try and okay, if you want to see just syntax of import statement, it's pretty straightforward. We'll just use import and the library name. So let's see it here only. Syntax of import statement, let's see it once and then we'll move ahead. Okay, okay, it's working. Okay, so import statement, basically import and module name. It's pretty straightforward. Okay, so print math, and then if math is a math library where we have all this we can use py functions and all the maths ka jitna bhi we have na powerful set of operations, we can do that. So we can directly call using math.py like this, and we can have an alias name as well. So if we are importing pandas, this is another library, we can import pandas as pd, and whenever we want to use we want to put a reference to pandas, like we did it here, like math.py, we can simply use pd dot and then we can use the function name from that library. Okay, so this is all about. So from math import py, we can directly import that function here and no need to write math.py. So we can do this also straightforward. And we can import multiple items like square root function. So we can import square root also directly, then square root of 16, and what we have further. And from module import start, we can import everything also, right? So we can use start, we can import specific functions, we can import everything. But this is generally discouraged in production code because it can lead to name conflicts if multiple modules have items with same name. Okay, if we are having multiple modules and some names are getting redundant, so it can create an error. So this will work, but then whatever you need, it's better to import that from that library. Like if you want a py function, sine function, so you can use it directly. Instead of creating your own function to perform a square root of this number, we can use this predefined
square root function, we can just write square root of 16 and it will give us the result. Okay, so this is the use of libraries. Okay, and where to place the import statement, these are practically or typically placed at the top of the Python file after any module level comments and doc strings and before global variables. So this basically placed at the top of the file. Now let's proceed ahead with try and except. Some programming languages like JavaScript, you will find try and catch. Okay, so we say that try and catch. Here we have try and except. The logic is same, the syntax might differ, the names might differ, the logic remains same. So after doing this Python, any programming language you will go and you'll check, the logic will remain same. Okay, now let's delve into try and except blocks, okay, which are fundamental for handling errors and making your Python programs more robust. Okay, let's read it out. Okay, in programming, errors can occur due to various reasons such as invalid user input, we check this, file not found, network issues, incorrect logic. Okay, there can be a plenty of reasons for which error can generate. Now Python provides a mechanism to gracefully handle these errors, or as we say, exceptions. Okay, we can use try and except blocks. This prevents a program from crashing and allows you to implement alternative actions. Okay, so this will not crash the program. We can specify alternative actions in the except block, or we can provide an informative feedback to the user as we were doing earlier. Okay, now what are exceptions? Exception is an event that disrupts the normal flow of the program. When an error occurs during the execution of a program, Python raises an exception. So if any error is coming, Python will raise an exception. If exception is not handled, the program will terminate and display a traceback error message. Okay, so that is why we need to have the try and except block. Try blocks contains the code that might raise an exception. If you feel something might raise an exception, you will put that in a try block, and then Python will attempt to execute this code. If this code executes, then it's well and fine. If by any chance it raises an error, then we will have the except block. If exception occurs within the try block, the execution of the try block will be stopped immediately and Python will look for matching except block. Okay, this is important. Python will look for a matching except block. We'll see this. Now if a matching except block is found, the code inside the block is executed. It will look for a matching block, and if it finds that, it will execute that block. If no matching except block is found, the exception is re-raised and program terminates. If there is, okay, even if you are giving a try except block and there is no matching except block, you can still get an exception. Okay, the exception will again rise and the program will terminate. Okay, so why use this? So it will prevent crash, it will gracefully handle error, for robustness, for alternative actions. Okay, so now we have some kind of exceptions. We have different kinds of exceptions, so that is why we're having a matching block. So this block catches a specific type of exception. You can get multiple types by listing them in a tuple. So we have different types of exception. We saw, right? We saw type error, we saw value error. So there might be a error related to some values. If it is there, we'll have a value error. If it's related to type, we'll have a type error. Okay, if we are writing except exception type as E, the E part is optional, but if we are doing it, it assigns the exception object to variable E, which can be useful for printing error details. So this E gives us the error detail. We saw in one example, right? So it will give the error detail. If we are not writing, if we are writing except bare except, this catches any exception. If we are not giving the exception type, this will catch any exception. While convenient, it can mask unexpected errors, making debugging harder. Okay, so if we can do like this only, it will catch any type of exception, but it will mask unexpected errors. Like if we specify the type, right, so we'll be knowing exactly this is a type error, this is a value error, like that. Okay, the syntax here is try except except except. We can write multiple except blocks. We can have an else, and then we can have a finally. Okay, let's see what is else and finally. The code in the else block is executed only if the try block completes successfully without raising an exception. Okay, so what is happening here? If no errors is raised, so try will execute, then this will be skipped, and then this will go to the else part. Executed, it
try block completes without an exception. Okay, so this else part gets executed, and then finally code in finally block is always executed regardless of whether an exception occurred in the try block or was caught in the except block. It's often used for cleanup operations. Finally it's an optional, else is also optional. This will execute when there is no exception. This will execute whether or not we have an exception. This will always execute if you are writing finally. And except, how you can write? Except you can write exception type as E. If you are writing this as E, E contains the exception object. It will explain the error. You can have multiple exception types, one exception, another exception as error. So this will catch multiple exception types, and we can have simple except also without any exception type. So catch any other exception. Generally discouraged unless necessary. This is generally discouraged. Okay, so this is the syntax, and let's see an example. Let's accept this and run. And what it's doing, basic try except for division by 0. We are trying to divide a number by 0. Okay, we are asking for a numerator, we are asking for a denominator. We are in the try block, we are doing this. Okay, so we are asking for numerator, denominator. We are taking an input, it will come in string, so we are typecasting. See this. Okay, now we have both integers, we'll divide that, and we are printing the result. Okay, this is a happy case. If we both have a numerator and denominator as an integer, it's a happy case, right? But suppose if we have 0 here in denominator, then that will not be a happy case. Then a 0 division error. If we have a 0 division error, it says error cannot divide by 0. Okay, this is an error type, 0 division error. Now value error. Suppose if you error a string here, that is an invalid value, right? So a value error will come. So we'll get this error in invalid input, please try enter numbers only. Okay, and then program continues after division example. So we'll have the print. Now try except with else block. There is another enter a number, will use else if valid. So we are just taking a number and then we are multiplying it with 2. Invalid input will have a value error. Else if this is executed, there is no error, this will execute successfully, double the number, program continues. Okay, and then we have one more example with finally. Let's try example 1 and 2. Division by 0, numerator, let's say 255, and denominator, let's say 56. Okay, we by mistake entered this. Okay, string, so it's showing invalid input, please enters number only. Okay, single quote we entered here, so we had a invalid input. Now else block, enter a number. If we give a valid number, let's suppose 5, so we have 5, so successfully double the number to 10. This was an else block, right? Now finally block for cleanup. What it's doing, my file.txt, it's trying to open the file for writing. We'll see this text last module. We are doing some changes in the file, and if there is some error, it will type error will come as E, exception as E, and finally what it's doing, if file in locus and not file closed, it's performing some cleanup actions here. Okay, so this we can do with the finally block, and catching multiple exceptions in one except block, we can do that. So we have a data, we have an index, enter an index, we are entering any index for this, and we are trying to access that value through this data of index. So and we are just printing it. So suppose if we enter suppose a string, will have a value error. If we suppose enter a index which is not there in the list, will have a index error. So we can catch both. Let's test it individually one by one. Enter, not enter, let's execute. Okay, let's execute. Why taking time? It's buffering, some problem with network. Can we check it here? Index, so suppose I am giving 5 index, 5
5 index, and where is the error? Caught an error. See, value error, index error, list out of range error, list index out of range. So we had an index error. Okay, and let's execute it again. Okay, so let's give a string, say in quote r, and enter. We have a value error, invalid literal for integer with base 10. Okay, now we'll again continue. If we giving an index, it has index 0 1 2. If we give an index 3, and it's a list index out of range, programs continues. If we give as index -1, what we'll get? We'll get a. -1 is for this last number, hope you remember, right? So we are getting a, and program contains the last print statement. Hope this is clear now. Try and accept. Now final is file handling, last topic in Python basics. We have file handling is our last topic. Let's see file handling. Okay, file handling is basically trying to access some external file. Okay, sorry, instead of file handling I wrote final handling. What's happening? File handling, next topic. Okay, so file handling is basically if you want to access the contents of any external file in our code, so we can use some external file and its content. So there are some ways of doing that, so we'll see it. So okay, file handling is crucial part of any application that needs to interact with some external data. In Python you can easily read from files, and we can also write into the files. This allows your programs to store information persistently beyond the lifespan of the program itself. So we can store the data in some external files. Python treats files in two main modes: text mode and binary mode. So text mode is used for text files. When reading, it interprets a file content as string, perform encoding decoding. When writing, it expects strings. Okay, text mode is for text files, and it will expect strings, and binary mode is for non-text files like image, audio, executable programs. So data is read and written as bytes without any encoding or decoding. Okay, so why use file handling? Store data permanently. Okay, share data between different program or systems, so we can use it for data exchange. Configuration, reading the setting and configuration for some file from some files if we want to do it, and if we want to record the program activity, errors or events to refer it in future for later reference, we can use it for logging. Okay, now key steps for file handling is opening. To open the app, we'll use the open function. This creates a file object. It will create an internal file object, and then we'll perform some read and write operations on that file object, and then at last close the file to free up the system resources. We need to close the file and ensure the changes are saved. Okay, so it's crucial always to close file even if an error occurs. Okay, so the with open statement is recommended way to handle files, or automatically ensures the file is closed. Okay, now there are two ways. So it's saying we can use an open statement and we can use a with open statement as well. So open statement is used to open the file. Now file name, access mode and encoding. So we have the file name or the path to the file where which you want to open. Okay, relative or absolute, anything. Now the access modes. Access mode is optional, but default is in read mode. This is a string indication how the file you want to be opened, how you want the file to be opened. Okay, read, if it's R, opens a file for reading. Okay, it will only be able to read the contents of the file. Write opens a file for writing. It creates a new file if it does not exist, or truncates the file if it does not exist. Creates a new file, it does not exist, or truncates the file if it exists. The file pointer is at the beginning of the file. Okay, see what happens. If we are trying to open some file in the write mode, and if the file is not there, it will create a new file in that location, and that will be in write mode. Okay, so that is that, and the file pointer will be the beginning of the file. Okay, and the file pointer here in read mode is also in the beginning, and if the file here is not present, it will raise a file not found error. Okay, append mode opens a file for appending. So file pointer is at the end of the file, so you can append some new data at the end of it.
X is an exclusive creation mode, opens a file for exclusive creation. If the file already exists, the operation fails. With file exists error. Okay, so it's exclusive creation mode. If file already exists, it will not create, otherwise it will create a new file. Now T, text mode. If we are if we want to, if this is a default mode, if we are not writing RT, WT, AT, by default it means we are opening it in text mode. If we want to open it binary mode, we have to specify explicitly RB, WB, AB. Okay, and opens a file for updating. Reading, writing can be combined with other modes. Plus is for update, R plus, W plus. So these are different modes, right? So you will give the file name, access mode, and then the encoding. What's in encoding? What's in encoding? What's in encoding? It has not mentioned. Has it mentioned here? Okay. Okay, not very important. Let's move ahead. Then reading, reads at most size byte characters from the file. If size is omitted or negative, it reads the entire content of the file. Okay, if we are saying read and we are specifying the size, it will read that many bytes of characters. But if we are not giving the size, it will read the entire file. Read line reads a single line from the file. So if the file has ended, it returns an empty string. Okay, so it will read line by line. Read lines read all the lines into a list of string. Read lines will give all the lines into a list of strings. Now for writing, what functions we have? Write string writes the string to the file. If we are doing write string, it will do this. Write lines write a list of strings to the file. So it does not add new lines automatically. So it will just write list of strings to the file. We have close. Close is the opened file. This is crucial for saving and releasing the resources. Then seek, offset whence, change the current file position. Whence can be 0, beginning, 1 or 2. Okay, so this is changing the file position. Can be 0, beginning, 1, current position, or 2 and the end. So whatever position you are at, you can change the position, and returns the file current position. Tell will tell the current position. And if we are doing with open, this is a preferred way to open file because it ensures file is automatically closed. So if we are doing with open, you don't have to explicitly close the file. Okay, so you will be mentioning the file name and the mode as file, and you are doing file.read. So all the content of the file you will get it here, and then you can modify the content as needed. Okay, so this is how file handling is done. Let's quickly see if we have some file name example.txt, then with open, we are just opening the file in write mode. Then in write mode, if file is not there, there will be a new file. Otherwise, the same file will open, and we are writing this. So this gets appended. Hello Python world, and then new line, second line, third line for good measure. So we are just writing this in the files. Opening the file in read mode, we are reading the content, then printing the content. We are opening the file in A mode, file name A mode, and we are writing the content at the end of the file. Okay, now verify append. To verify the append, we'll just open the file again in read mode, and we are again reading the file content and printing it, reading it line by line. So we have the lines here, and we can write the lines, or we can use read line or read lines. Okay, so these are all the functions. See, read line, read line. So you got an understanding, right? If we have some binary file, some image file or something, so if this is a binary file name, we have to write the mode as WB or RB. It's and we have to handle the file in terms of bytes. Okay, so we have to do that. And then for cleanup, we can use remove or close. Remove is also a function, and I think close was also one function for closing the file. Close, and for remove, okay, close was there and remove is also there. Okay, so this was all about Python basics, right? So what we did here, we have seen variables, how to store data, we have seen data types. It can be string, numbers, booleans, list, tuple, dictionary. These are also all the data types that are also called data structures, right? So
Now we saw about the comments, print function, taking input, formatted print function, how input is taking in string format. Then we saw the Boolean logic, true, false. We saw the different types of operators, arithmetic, conditional, logical, bitwise. Okay, if else, elif. We saw loops, for loop, while loop. Now we saw the functions, reusable block of logic. We saw different string operations, right? And we saw list, set, tuple, dictionary, all the operations of this data structures, data types. And then we had indexing and slicing on each one, not on each one of them, on the mutable objects only. And then we saw list comprehension, simple shortcut to create list. We saw typecasting, range function in loops. We saw how we can import third-party libraries using external tools, error handling using try except, and basic file handling, reading data from files. Okay, so this was all about basic Python. Okay, let's try to work on some projects now. Okay, so what we'll do, दो तीन मिनी प्रोजेक्ट्स करते हैं एंड विल सी कि हम वो कोड समझ पा रहे हैं कि नहीं, बेस्ड ऑन वॉट एवर बेसिक्स वी हैव लर्न, राइट. तो दैट वाज द गोल, राइट, कि अब हम कुछ प्रोग्राम लिखते हैं एंड देन विल सी कि हम उसको कितना समझ पा रहे हैं. ठीक है, सो आई हैव सम आइडियाज, प्रोग्राम आइडियाज, सम प्रोजेक्ट आइडियाज. सो हमारा जो फर्स्ट प्रोजेक्ट होगा, लेट्स बिल्ड अ स्टूडेंट मार्क्स एनालाइजर. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, स्टूडेंट मार्क्स को एक लिस्ट में रखते हैं, कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स को, उनका एवरेज कैलकुलेट करेंगे, हाईएस्ट मार्क्स निकालेंगे, लोएस्ट मार्क्स निकालेंगे, विल काउंट हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव पास्ड एंड विल प्रिंट द रिजल्ट्स क्लियरली. सो दिस इज अ fairly simple project. Let's ask Gemini to create this for us. Let's create small projects based on what we learned. Now project 1, we have given this prompt and let's wait for the program. Okay, see, we got student marks analyzer. तो earlier what was happening before AI, हमें खुद प्रोग्राम लिखना पड़ता था, राइट. और now you see within fraction of seconds हमें AI ने हमारा जो प्रॉब्लम था उसके अगेंस्ट हमें पूरा कोड लिख के दे दिया प्रॉपरली, राइट. सो now what you don't need to write the code, now you need to understand the code. You need to understand code structure, कहाँ पे क्या हुआ है, कहाँ पे क्या गलती है, what you need to change based on the problem you have on hand, right. So that skill is now required. So let's see कि we are going to कितना हम इसको समझ पा रहे हैं. So this program demonstrate how to use basic Python concepts. Okay, so now what has happening, running the program. Step 1, what we are doing, storing the student marks in a list. अच्छा, अभी पहले क्या होता है, जैसे आपको प्रोग्राम मिला, आप पूरा प्रोग्राम पहले स्कैन कर लो. पहले क्या हो रहा है, define analyze marks. तो it has created a function where he is analyzing the marks. तो ये पूरा फंक्शन का डेफिनेशन है. नाउ वंस द फंक्शन डेफिनेशन इज कंप्लीटेड, वी आर डिफाइनिंग द स्कोर्स. तो अभी हम वी आर स्टोरिंग द स्टूडेंट मार्क्स इन अ लिस्ट. सो हाउ मेनी स्टूडेंट्स वी हैव, 3 3 6 3 9, 10 स्टूडेंट्स का मार्क्स we are storing in scores, and this is a list data type, right. And what we are doing, we are analyzing, calling the analyzing function, analyze marks function, to see the result. So we are just calling this function, passing the scores, this list. Now coming to the score, what this function is doing, coming to this function, it's initializing variables for our calculation. So some variables he has defined, total, highest marks 0, lowest marks 0, past count it has taken 0. So what he has done, he has assumed कि जो highest और lowest marks है, that is the first marks what we have in the list, that mark 0 first marks देगा. तो highest mark को भी 85 कर दिया, lowest mark को भी 85 कर दिया. And we, हमारा problem statement क्या था, we also need to find कि how many students have passed. So he has assumed कि 0 students, अभी किसी students ने pass नहीं किया. Now what he is doing, he has created a for loop to go through each mark in the list. Now for m in marks, we have this marks list, right. So for each marks in the marks list, what he is doing, adding the current mark to total average calculation later. So we have to find the total to the average calculation. That was our first use case, right.
we need to calculate the average marks, see, so and find the highest marks, lowest marks, and how many student pass. So we are doing the total. Now what we are checking, if the marks is greater than highest, we are replacing highest is equal to m. what we are simply checking कि जो लूप में जो हमारा मार्क्स है, एक एक मार्क्स को हम हमारे जो फर्स्ट मार्क्स को हमने अज्यूम किया था हाईएस्ट, उससे चेक कर रहे हैं. इफ इट इज ग्रेटर वी आर स्टोरिंग इट इन हाईएस्ट. सिमिलरली फॉर लोएस्ट व्हाट वी आर डूइंग, हम मार्क्स को चेक कर रहे हैं वो लोएस्ट से कम है क्या. इफ इट इज लोएस्ट वी आर स्टोरिंग इट इन लोएस्ट, राइट. एंड वी नीड टू चेक हाउ मेनी स्टूडेंट पास द एग्जाम, एंड फॉर दैट वी हैव द बेंचमार्क एज मार्क्स शुड be greater than equal to 40. So we are simply checking if marks is greater than equal to 40, pass count we are increasing. हमने 0 रखा था उसको हम 1 कर रहे हैं. Then we are calculating the average. Average is equal to total by length of marks. Okay. ये for loop के बाद for loop will ये for loop पूरा 10 ये पूरे 10 स्टूडेंट्स के लिए काम करेगा, मतलब इट विल रन फॉर 10 टाइम्स. एंड देन आफ्टर दिस इज कंप्लीटेड वी आर डूइंग टोटल. तो टोटल हमारे पास आ गया बाय द लेंथ ऑफ मार्क्स. लेंथ ऑफ मार्क्स इज दिस इज 10, सो दिस इज 10. तो हम यहाँ पे टोटल कर रहे हैं एंड देन वी आर प्रिंटिंग द रिजल्ट्स. वी आर फाइंडिंग द एवरेज, हाईएस्ट, लोएस्ट, पास काउंट, लेंथ ऑफ मार्क्स माइनस पास काउंट. सो हाउ मेनी स्टूडेंट्स पास्ड? आई थिंक 1 failed, 38 and 2 failed. So 8 students passed, right? The 8 student passed, 2 failed, and lowest marks is here 30 and highest marks is here 95, right? So I hope you got this, right? अभी आपको समझ आ रहा है what is this written. तो वी आर गोइंग, मतलब इसका हम इसको एक अंडरस्टैंडिंग हम डेवलप कर पा रहे हैं. एज वी हैव सीन फंक्शन क्या होता है, फॉर लूप कैसे काम करता है, लिस्ट कैसे काम करता है, प्रिंट फंक्शंस कैसे लिखा जाता है. सो वी हैव नाउ डेवलप्ड एन अंडरस्टैंडिंग कि हाउ दिस वर्क्स. इसमें अगर हमें कुछ चेंजेस करने हैं तो दैट ऑल्सो वी कैन डू. लाइक सी, हमने क्या किया है, मार्क्स 0, हमने फर्स्ट मार्क्स तो हमने 85 स्टोर कर लिया है, ठीक है. एंड 85 इज द पास्ट काउंट, राइट. एंड मतलब चलो इफ वी हैव सीन दिस लिस्ट सो वी आर अज्यूमिंग फर्स्ट इज, ठीक है. सो दिस इज फेयरली ओके. अगर हमें पास्ट काउंट नहीं निकालना रहता, ओके, एंड इसी लिस्ट से ही हमें निकालना रहता कि हाईएस्ट एंड लोएस्ट मार्क्स निकालो. सो आई थिंक फॉर एम, चलो ठीक है. सो दिस इज गुड. मतलब हम फर्स्ट को, आई वॉज मीनिंग टू से कि अगर हमने फर्स्ट को अज्यूम कर लिया है कि फर्स्ट हाईएस्ट है और फर्स्ट ही लोएस्ट है, तो व्हेन वी आर कंपेयरिंग वी कैन आइटरेट द फॉर लूप फ्रॉम 92 to 70. अगर हमारे पास कुछ ऐसा यूज केस है तो अगर हम फर्स्ट नंबर को रख रहे हैं तो वी कैन जस्ट रिड्यूस 1 आइटरेशन, वी कैन स्टार्ट फ्रॉम 92, बट उससे उतना कुछ मैटर नहीं होगा. बट जस्ट मतलब अगर आपके पास अब कोडेड हैंड है तो आप इसमें अपने हिसाब से यू कैन डू वेरिएशंस, राइट. दैट वाज that I meant to say. Now ठीक है, let's move to project number 2. Project number 2, let's build an expense tracker. What we are going to do, we write a program wherein we will store expenses in a dictionary. We'll have multiple categories of expenses and we'll calculate the total expense, find which is the highest expense category, and we'll print a summary. Okay, so let's build a expense tracker. If we want to track what are the expenses we are having, so we have given it project 2, it's working. Let's see. ठीक है. So expense tracker, and we told कि we want to use dictionary. Okay, so because हम category wise expenses find करना चाहते हैं, so dictionary is a smart choice. In dictionary we can have category name and the expense. So we had given him 4 categories: food, travel, shopping, bills. तो इसने एक expenses की list बना दी. So food में 150, travel में 80, shopping में 200, bills में 120, and he has created a function analyze expenses and pass this dictionary my expenses. What is this analyzer is doing? It's finding the total expense. It will find the highest amount and the highest category. These are the 3 use cases which we gave, which we wanted to find out. So what we are doing for category, amount in expenses,
expenses underscore dict, this is our variable name dot items. So dot items हमने डिक्शनरी में देखा था, right? We have three functions, dot keys, dot values, dot items. Items will give key value pair. So what is the key value pair? We have category amount. So instead of writing key value, he has written category and amount. Okay, and what he is doing, total expense for every amount. We need to find for every category whatever is the expense, and we need to add the total. So it's doing total expense plus equal to amount. So this is shorthand notation, remember, right? So total expense equal to total expense per amount, and initial amount he has taken as 0. So highest amount taken as 0. So he is checking if the amount which we have currently is greater than highest amount. We are replacing the highest amount with the amount. तो initial जो हमारा amount है, हमारा amount initial क्या है? Amount 150 है for the first pair. So और highest amount तो हमने 0 लिया है, तो initial amount will obviously be highest. तो highest amount हमारा क्या हो गया? 150 हो गया, ठीक है. And highest category हमारी क्या हो गई? Food हो गई. Now as the loop will continue, it will check for every category. So जब हम shopping पे आएंगे, shopping का amount, highest amount हमारा क्या रहेगा? 150. जब travel पे आएंगे तो highest amount obviously 150 रहेगा, replace नहीं होगा. shopping में आएंगे तो 200 हो जाएगा. तो amount 200 is greater than highest amount. तो highest amount will change to 200, highest category will change to shopping, right? So this is simple, and he has just printed it. So let's run it. I'll do accept and run from here. So see, total spending is 550, just added this all, and highest spending category is shopping and value is 200. Okay, so you understood now. Abhi it's very easy now. Once we know how to read, we know Python syntaxes, different function, about function, loops, everything. So we can now understand the code, right? Now let's move to project 3. Project 3 we have to build a simple rule based chatbot. एक chatbot बनाते हैं, ठीक है? And it is a rule based chatbot. It's not बाद में जाके when we'll proceed ahead we'll try to make a chatbot through machine learning. Now अब एक simple rule based बनाते हैं. अगर chatbot should respond to things like hello, how are you, what is your name, bye. Okay, so अगर हम इस chatbot को इस 4 में से कुछ भी पूछेंगे, he'll give us a reply. And okay, let's see project 3. So we are writing a rule based chatbot, and we will be using simple if-else logic, and input function will take our inputs. So we have a chatbot. We are just calling the start chatbot function. Start chatbot function is doing what? Chatbot started, type by to exit. Okay, it's saying type by to exit. Now what it's doing, start a loop to keep the conversation going. So this loop has started, and this will keep the conversation going. This is while true. While true means this is unless and until we are explicitly coming out, it will always run. This loop will keep on running. Now what is happening inside this loop, get input from the user and convert to lowercase for easier matching. Okay, so user can give input in uppercase, lowercase, everything. So user input we are asking you, and will enter something. It is taking it in user input, and it's checking rule based logic, right? So what user is writing? User is writing user input, hello chatbot, hi there, how can I help you today? If we will say how are you, so it will reply I'm a collection of code. Okay, if we are giving what is your name, so he'll just reply. If we are giving bye, he'll just reply. So this is if elif conditions. And if what it's mentioned here, if we want to exit it, so we have to type bye. So when we type bye, it wrote goodbye, have a great day. It will break the loop. So break was used, right, to come out of the loop, right? So this is where we can take the control out of the loop. Else, if whatever conditions we have, if else, if we are not giving any of these things, so chatbot will simply reply, sorry, I don't understand that, try saying hello or how are you. See, so
So how intelligently it has written this code. We simply gave 4 conditions. Now simply he has written the logic, right? If user input is hello, we have just given this 4 inputs. Other than this, whatever we will write, he'll not understand it, right? Because our chatbot is made to understand only these 4 statements. So let's run and run this and say chatbot you. I'll write hi. So I'm sorry, I don't understand. Right? Try saying hello. I wrote hello. Hi there. How can you help? How can I help you today? I'll write how are and let's write in you. How are you? So he is able to understand it. How? Because it's converted into lowercase letters and matching it, right? अगर इसको lowercase में नहीं करते, so there could have been multiple variations of how are you. So see how programs are written in real world scenarios. So you have to keep a lot of things in mind. So chatbot has said I'm just a collection of code, but I am functioning perfectly, right? So let us write it. What is your name? It's saying I'm simple rule based chatbot, right? Okay, so can I ask you anything else? We have not given that, so I'm sorry, I don't understand that. Try saying hello or how are you. So every time when we say hello, hello spelling is wrong, so hello, so it will just say hi there, how can I help you today? Okay, just so simple chatbot. And if we say bye, it has come out of the loop. Goodbye, have a great day. It has ended, right? So what we have done here, we have written lower and strip. So we are stripping, we have just given strip. Okay, so let's run this again. If I am writing say hello, hello, and I'm giving spaces, I'm giving enter, so this is reading. If I give a lot of space and if I say hello again, this will again take, because we have written here strip. अगर हम यहाँ पे strip नहीं डालते, so this would have not matched. अगर हम इसको फिर से रन करें, accept and run again, and if now if I try to say एक बार normal लिखते हैं hello, so hi there, how can you? But if I write hello and I'm giving spaces and write I am sorry, I don't understand that, right? So जब आप in real world scenario you can accidentally type some spaces, right, here and there, so that is why strip was used. So you can get now, right, कि जो string के functions थे उसका क्या use case था. So हर problem में this various functions will help us. So सब logic will change, right? Problem के हिसाब से हमारा logic will change. Now let's see, this is interesting, right? Let's see a password strength checker. Okay, so अच्छा ठीक है, एक password strength checker का project करते हैं, and let's not give some rules. Let's see if we simply write to AI project 4. Help me build a password strength checker by using just basics of Python. Let's see, let's not give rules and see what rules AI is defining. Okay, Gemini क्या rules define कर रहा है, let's see that. What how I it's ठीक है, let's wait. Okay, so this is a program. This program checks the strength of a password based on its length and whether it contains number and uppercase. So it has made a password strength checker for us, and what it's doing, let's see, get input from the user, enter a password to test, and it's passing that input to this check password strength function. Let's check the password strength function. What is doing? Initialize variables to track requirements. Okay, now it's checking the length of password. Length should be its written length is greater than, idhar hi it's checking directly here. Length of password, say if we are typing 4, so 4 is greater than equal to 8, no, false, so it will be having false. So length okay, it will
come false. अगर हमारा length is greater than equal to 8, length okay will be true. So length okay it's calculating here. Then has digit, has upper, it has assumed it is false. It has no digit, it has no upper. Now it's checking loop through each character to check for digit and uppercase. Now it is checking for digit and uppercase in the password. Okay. So for character in password, for every character dot is digit and is upper. We saw these two functions, right? So it's checking if character is digit. If this is true, then it is changing has digit to true, and if character is upper, it's changing has upper to true. Now determine check based on conditions. So checking password, if length okay and has digit and has upper. So it has just added three checks. It is checking for the length, digit and uppercase letters. So it is checking if the password has all the three. If it has length greater than 8, it has digit, and if it has uppercase letters, then it is saying it is a strong password. Else what it is checking, if it is checking it has length greater than 8, but either of these two it has, if either it has a digit or and has a uppercase, so it's saying it's a medium strength password, add some variety. Otherwise it's saying the password is weak. Okay, and it is printing the details. It is giving 8 plus characters, yes or no, or it contains number, yes or no, contains uppercase, yes or no. Let's just run this. We will give a password something like this and we'll enter. And it's saying checking password, strength is weak, details 8 plus characters, yes, contains number, no, contains uppercase, no. So there was no number, no uppercase, so it's a weak password, right? So what was the condition here? Condition was either to become a strong password सारा true होना चाहिए था, and to become a medium strength password at least we needed to have a digit or an uppercase. So let's execute it again, and let's have one uppercase, and I'll write my name Apurva. Okay, so now what has happened? It is again weak because the characters are 6, right? So no and yes. Now let's try again. I'll write Apurva 1 2 3 4 and I type this. Now it's saying it's strong. So 8 plus characters, contains numbers, yes, contains uppercase, yes. Okay, so now it has added. We have not told anything to it. We just told कि we want to build a password strength checker, and it has matlab given conditions. These 3 conditions given on its own. But let us say we want to add more conditions. So let us ask him to add 2 more conditions. Please add 2 more conditions in the password checker. So we want total 5 conditions. Okay, let's see what we'll get as output. Okay, so now what he has done, he has added 2 more conditions. He has also added, apart from the length, digit and upper, we need to have a lowercase character and we need to add a special case character, and he has defined what special characters we will accept. We can अगर हम इसमें से कोई भी एक character डाल रहे हैं ना, so that will be मतलब that we will accept. इसके अलावा कुछ और आएगा, so the password will become invalid. So now it's checking everything. See, is digit is upper check कर रहे थे, अभी is lower और character in special character. So special characters का list हमने define किया कि इसमें से एक special character होना चाहिए. And conditions हम criteria count how many criterias are met. So now we have 5 criteria: length, has digit, has upper, has lower, has special. So what he is doing, criteria met में he is writing here, इसने ये जो हमारा 5 था ना टोटल, तो यहाँ पे ये एक लिस्ट बना लिया क्राइटेरिया मेट का. एंड क्राइटेरिया मेट इट्स चेकिंग इज इक्वल टू 5. अगर 5 है तो इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग, इट्स 4 देन स्ट्रॉन्ग, मतलब 5 में से 5 क्राइटेरिया मीट हो रहा है, कोई भी 4 मीट हो रहा है तो स्ट्रॉन्ग है. एंड देन 3 क्राइटेरिया मीट हो रहा है तो मीडियम है, जो प्रीवियस था उसको इट्स रिप्लेसिंग. तो लेट्स एक्सेप्ट एंड रन एंड लेट्स चेक व्हाट ही हैज डन. सो 5 क्राइटेरिया, 4 3, अदरवाइज इट्स टोल्ड दिस as weak. And
ओके सो चलो 3 क्राइटेरिया से करते हैं. अपूर्वा 1 2 3. So we have 3 criteria, right? Uppercase, lowercase, and a digit. So 8 plus characters, yes. Contains number, yes. Uppercase, yes. Lowercase, yes. Okay. So 4 criteria were met, right? So it's a strong strength password. Now let's run it again. And 1 2 3 A B 7 8 and dollar and execute. And it's a very strong password. See, okay. So इसको आप we can modify if we want कि password एक letter से start होगा, we can do that also कि the passwords will start with a letter, so it will check it and invalid, otherwise वो invalid बता देगा. and अगर हम इसके अलावा कुछ डालते हैं ना, so there will be an error. so अभी हमने इसमें try except नहीं डाला, जैसे it's taking all these characters, I think it's taking almost all characters. ऐसा कुछ character हम डाल सकते हैं क्या जो इसमें okay, but anything will enter ना, that will be a string and string is accepted. तो हम वो नहीं check कर रहे हैं कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए. so anything will enter that it will accept. तो इसमें अगर हम और भी कुछ changes करना चाहते हैं we can do it. so you are getting it right. so real projects में we have to write this kind of logics. ठीक है. so these are just one logic. this मतलब just एक यूज केस है कि हमें एक पासवर्ड का स्ट्रिंग चेक करना है. लेकिन आप जब बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बिल्ड करते हो ना, व्हेन यू आर डीलिंग विथ फुल फॉर्म, सो यू हैव मल्टीपल फील्ड्स, यू हैव नेम, पासवर्ड, यू विल हैव फोन नंबर, यू विल हैव एड्रेस. सो आपके मल्टीपल चेक्स हो जाते हैं. सो आई होप नाउ यू आर आपको एक आइडिया लग गया कि हाउ व्हाट इज Python का basics. now you are able to understand. now I think you will be able to write codes through with the help of AI, any AI, and then you will get to understand the code, make changes in the code, right? agar you need to do any changes, right? so you can ask the AI ki change this line, change this. if we want we can ask it to remove only जैसे if I want na, it's the strength is very strong, medium, weak. I can ask him let's keep only 3 strengths in the checker, remove very strong. okay, and let's see, we'll do that. so we'll have just strong, medium, weak. Refactor the logic to map 3 criteria to low, medium, high. Okay, let's do it. okay, and accept and run. and what he has done, he has just refactored to 3 criteria, so 4 3 and low. so instead of high, medium, and low, we can change it to strong, medium, and low. so instead of high, medium, and low, you can write it as strong, medium, and low. so he has done the changes, right? so if, elif, else, only 3 conditions. so this was it. okay, so let's wrap up this video now. Thank you for joining and staying till the end. and if you have come this far, do let me know what you felt about this. I think this is ये मेरा सबसे पहला और इतना बड़ा वीडियो है that I am putting it in YouTube, and I'll definitely appreciate your comments, whatever you felt. okay, thank you so much.